So we will start our technical session 1. Our first team is Samriddhi Gadravara. Team members are Priyank Verma, DGM C&I, Kunal Chandra, Assistant Manager C&I. Hello. In case, hello. Hello. Totally. After Samriddhi of Gadravara, next team is Carbon Khargon, then Horizon Korba, Gadravara Ki Omega, Gadravara Samarth, Lara Platinum, Lara Ideation Crew. ये 7 टीम्स बिफोर लंच प्रेजेंट करेंगे. Hello. Hello. स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं चला ना. ऐसा ही हाथ कर देना. ऐसा कर देना. हाथ ऐसा कर देना. फर्स्ट नंबर है समृद्धि गाडरवारा समृद्धि फर्स्ट नंबर. सेकंड है खरगोन कार्बन. थर्ड है होराइजन. फोर्थ ओमेगा. फिफ्थ समर्थ. सिक्स्थ प्लेटिनम. सेवंथ आइडिएशन क्रू. एट्थ एलाइट्स. नाइन्थ सृजन. 10th संकल्प. 11th ब्लैक डायमंड. 12th टेक्नॉइड. 13th निर्माण. 14th ब्लैक पर्ल. एंड लास्ट टीम 15th डेल्टा. हेलो. ठीक है. Okay. Shall we start? Team Samriddhi Gadravara. Yes. So we will start. Good morning, respected judges and my seniors. Team Samriddhi
Myself, Priyank Verma, Myself, Kunal Chandra. welcomes you. Our topic is uh, human resources management in NTPC perspective. Very good morning to all of you. As we know, power is the most critical and fundamental things for inclusive growth of our nation. And NTPC is leading in this perspective. And with this year, we are celebrating 50th year of NTPC. So in the 50th year, we are going to outline the what are the human resource perspectives of NTPC. Our presentation outline is introduction, present scenario, SWOT analysis, issues and challenges, alternate pathways, and summary and conclusion. CP Jain sir, CMD NTPC quotation is I firmly believe in the idea that the basic difference between a winning company and a losing company is difference among their employees. Coming to present scenario, total employees 18 to 89, including FTs, and 16,648 excluding FTs and trainees. NTPC installed capacity is 77,393 megawatt. Coming to main megawatt ratio, it is coming to 0.236, including FTs and trainees, and it is coming to 0.21 excluding FTs and trainees. If we categorize in the higher management, middle and lower management, it is coming to 9.45 for higher management side. Middle management is 28.65, 28% employee. Grade wise, if we come 23.93% is workmen, and that 75 around 75% is the executive. The source is NTPC online directory. Power plant only, if we consider only power plant, then manpower is coming to 18,289. Total employees in the station is 14,807. Office and mines is 3,482. Installed capacity is 77,393. Main megawatt ratio is coming to 0.236 if we include corporate office and mines, and 0.191 excluding of corporate office and mines. If we compare with the major power players in the field, NTPC main megawatt ratio is coming to 0.236. Another major power player, Adani Power, main megawatt ratio is coming to 0.217, and Tata Power main megawatt ratio is coming to 1.608. Sources are various online directory and their reports. Ministry of Power has constituted a team for the forming the norms for manpower requirement thermal power sector. The CEA, Central Electricity Authority, the committee has given these norms for 3 different phases. That is survey investigation, under construction, and operation phases of power plants. The manpower requirement are different for all these 3 phases, and they have given a formula for manpower requirement, which is coming as product of size installed capacity into multiplication factor into complexity factor for the project. Multiplication factor is vary for different unit sizes. If we consider Gadarwara, 2 units, 800 megawatt, then it is coming to 0.315. If we compare various NTPC projects, that is, we have compared 7 NTPC projects, then the manpower position is formulated in this table. Gadarwara, the main megawatt ratio is 0.164, Farakka 0.273, Talchar having best among these 7, 0.287, Kudgi is having lowest 0.115. So we can see in the last column, the shortage is 241 manpower, and the highest shortage in Kudgi, and lowest shortage in excess in Talchar Kanhiya power plant. Yes, sir. Pointer. Yes, sir. चलो Next, if we employee cost in rupees per kilowatt hour of unit generated, this is the response from government Ministry of Power. It is questioned in Rajya Sabha.
This coming as NTPC having employee cost rupees per kilowatt hour 0.16 rupees, DVC Damodar Valley Corporation having 0.35, and NHPC is having 0.48, and NIPCO is having 0.61. So from this we can conclude that NTPC has the lowest employee cost per unit generated. NTPC has the lowest employee cost per unit generated in rupees among its peers. If we SWOT analyze the human resource at NTPC, we coming to strengths, we having very experienced workforce, and we are having very skilled workforce. Robust talent development programs are there. Competitive compensation and benefits are also there for NTPC manpower. Coming to weaknesses, shortage of manpower is filling in every station. Potential knowledge gaps are there. Limited flexibility and adaptability we are seeing. Opportunities we can opportunity in leverage digital technology. If we can adopt digital technology, then we can upskill and reskill the employees. And diversity in promotion and inclusion, we can then threats. Implementing these, the threats are the competition for talent and the low motivation levels and the skill gaps and talent shortage. These are the threats. This is a famous quote from Sir Richard Branson: train people well enough so they can live, but treat them well enough so they don't want to. Issue and challenges faced in human resource management in NTPC. The first issue and challenge is the low man-megawatt ratio but high contractual manpower. Continuous decline in shortage of experienced manpower, distorted manpower structure, and frequent unscheduled transfer and induction of FTEs giving short-term and temporary solution. From next, Priyank sir will continue. Thank you, Kunal. Sir. So we will Point of discuss one by one all these issues. Low main megawatt ratio but high contractual main megawatt. At present, we have low main megawatt ratio, and it has been offset on heavy reliance on contractual output source manpower, which is affecting safety, important thing, and also increasing cost also. Because contract manpower is what he is doing, he is doing on job, and if you have to do repetitive job, then O&M cost will increase. Low main megawatt ratio proportion contract workers raises questions about workforce stability. Means our workforce stability also affects this issue, and we can't rely kept the knowledge retention is also affected, and accountability also affects. Shortage of experienced manpower. Shortage of experienced manpower is due to, as all of us know, NTPC it is 50 years, and when projects come in services, so now most of the senior workforce at all levels are retiring at a very fast rate. So, distorted manpower structure. All of us know that we have it is preferred for any organization there should be a pyramid structure. Higher level it should be less and lower level should be more. But we have to look upon the challenge, and NTPC is looking after, and I will discuss it in later also in detail. Frequent unscheduled transfers due to new policy, lack of planning, lack of manpower. Frequent unscheduled transfer increase stress level, reduce employees motivation, and reduce sense of ownership, lesser time to transfer knowledge, and work life also disturbance and disturb knowledge continuity also at specific sites. This is happening. And developing more structured, predictable transparency policies resolve this challenge. Induction of FTEs giving short-term or temporary solution. While FTE helps address manpower shortage, the quality and their involvement are the major concerns, negatively impacting overall operational quality and productivity. Next. Now we will discuss our alternate pathways: delayed promotion, no transfer, more risk, more pay, vacancy. We will discuss one by one all these
4 solutions. Delay, this is already implemented in some PSUs and like LICs also. If HR will decide this, if someone wants no transfer, so it will be eligibility, he will be promoted for, he will give declaration and he will promoted twice the time, after time. Because of giving family responsibility. So for say 4 years for promotion is there, he will be eligible after 8 years on his capabilities. And if in this we are also suggesting that if he is taking undue undue advantage, then he can be transferred by management. This provision also kept in this scheme. And it will be a win-win situation for organization and employee both, because knowledge retention will also be there. More risk, more pay. Up to 2007, before DP guideline, there was a rule that O&M is getting 100 PR, which we now call PRP. At that time it was incentive. So we want to introduce that in PRP mode also, and in PRP mode risk responsibility factor may be included. So it will motivate for employees to work in O&M more. Vacancy based promotion. Each station there should be specified manpower according to main megawatt ratio and our committee's report suggestion and NTPC individual knowledge, its vast experience कि हर प्लांट में आपका एक स्पेसिफिक हर डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक लोग रहेंगे और उसका एक ग्रेड बैंड का रहेगा. उसमें हमने गाड़ावारा के लिए प्लीज वी हैव क्रिएटेड ए मॉडल फॉर गाड़ावारा. In this manpower requirement, at present we have shortage of 9 executives. FT को हटा दिया हमने, इसमें FT की जगह हम परमानेंट को प्रेफर कर रहे हैं. तो 9 एग्जीक्यूटिव चाहिए और एग्जीक्यूटिव्स जो है एडिशनल आपको 20-40 चाहिए. तो टोटल आपका मेन पावर हो जाएगा 20-20-30 और इसका जो मेन मेगावाट रेशो रहेगा 0.27 रहेगा, जो आपका CA के नॉर्म्स के हिसाब से कम है. CN में 0.315 बोला है 2 यूनिट्स का. सो वी आर गोइंग लेस देन दैट. एंड it is we have considered on our experience and talking to our plants colleagues and according to need. इसको हटा दो. Next. Preference to hometown posting. This will create your understanding. It will help in dealing IR issues, because IR issues if इन साउथ प्रोजेक्ट से कई बार बातों में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रहते हैं उनसे बात करने में प्रॉब्लम आता है. तो अगर आपका वहीं के लोग रहेंगे तो बहुत IR issues can be deal very easily. So this is our suggestion कि some amount of employees should be posted at their hometown, and their emergency response time is also there. If say I am posted at 3,000 kilometers from my home, and if I went to my home, and if I went to my home and it takes 48 hours time, then it will affect when if emergency in plant comes, I cannot come because it will require on my personal leave, and I am totally unavailable. But if I am within the vicinity from my hometown, if some emergency occurs within overnight train or overnight journey, I will come, and it will not affect the plant also, and it will be a win-win situation for both employee and plant. So this is our summary. We should focus and emphasis on importance of employees and company success, and we should implement CA norms according to our vast experience. Focus on mitigating issues, challenges such as recruiting FT, low megawatt main megawatt issue, and frequent unscheduled
It should not be scheduled, unscheduled transfer should not be there, should be scheduled. एंड डिस्टॉर्टेड मैन पावर स्ट्रक्चर का भी अपने को ध्यान रखना है. और ये ऑल दिस कैन बी अटेंड बाय implementing alternate suggestion and pathways. Thank you. Here I find that some of the analysis, they are contrary to each other. Like you say that there is robust talent development program, competitive compensation and benefits. But when it comes to, what is that? Potential knowledge gap. It is contrary to the talent development program. Similarly, here in the opportunities, second one, upskill and reskill the employees. You say there is an opportunity, but on the other hand, you say that it is our strength. So it is strength and opportunity both. So I find that there is some amount of overlapping. Yes, sir. Has it been done? Yes, you are very correct. There are already, we are experienced work and skill manpower, but they are not now retiring, and we have to opportunity to upskill and reskill the lower manpower. That The is new one, the new recruitees. Yes, they by imparting our senior जो senior manpower हैं वो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. और दूसरा पोटेंशियल नॉलेज गैप वही है कि अभी आप एकदम से बिल्कुल नया बीच में गैप जो है मिडिल मैनेजमेंट बहुत कम हो गया अभी. और वर्कफोर्स सुपरवाइजर लेवल गैप तो अभी हमने जैसे देखा तो, और सीए के नॉर्म्स के हिसाब से आपका 20 to 80 होना चाहिए एग्जीक्यूटिव मैन पावर, 20-80 होना चाहिए आइडियली. और पीएसयू का उन्होंने सजेशन दिया है, बोला है 40-60 चलेगा, 40-60 शुड बी सजेस्टेड और 50-50 भी एक्सेप्टेबल. At present 50% नहीं है अभी नॉन एग्जीक्यूटिव वो. Okay, I got it. Second is you said about the vacancy based promotion. I Yes. think the vacancy position is notified before promotion in NTPC. No, has it been stopped? नो सर अभी तो नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है सर. वैकेंसी का सर ये है कि हम मेरा ये बोलना है जैसे प्लांट में यूर Vacancy used to be notified earlier. I don't know. ये इन दिस सर if you permit I show you some. Yes, at present as a employees, as a O&M person, we don't aware that there is a vacancies. No sir. Okay, I will ask a small thing. Yes, sir. How does NTPC measure the effectiveness of its HR practices in terms of workforce productivity, engagement, and retention? Could you get the question? Should I repeat? Sorry sir. How does NTPC measure the effectiveness of its HR practices in terms of workforce productivity, engagement, and retention? कोई तरीका है आपका, मेथोडोलॉजी है? Sir, they take the timely surveys of our NTPC जो सर्वे करता है उसके अलावा हमको सर कोई आइडिया नहीं है. सर्वे टाइमली सर्वे होता है और एक्सटर्नल एजेंसी से सर्वे करवाते हैं. कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज भी हैं? यस सर. तो उसके बारे में पूछना चाहूँगा. व्हाट आर द मेन इशू एनटीपीसी फेसेस ड्यू टू ए हाई रिलायंस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर, जो कि सेल में भी है, एंड हाउ डज दिस अफेक्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन? सर कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर मीन्स सर फर्स्ट मेन प्रॉब्लम होता है सर जैसे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है तो एज ए गवर्नमेंट सेक्टर वी हैव टू रिलाई ऑन L1. तो आपका एक्सपीरियंस मैन पावर दे ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर दे यूज एज लॉन्च पैड फॉर NTPC स्टेशन. नॉलेज गेन किया यहाँ पे सीखे और फिर प्राइवेट प्लांट में वो कॉन्ट्रैक्ट में स्विच कर लेते हैं. आप शायद एब्जॉर्ब नहीं करते होंगे तब जाते होंगे. यस सर. और आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं? नहीं, कुछ एब्जॉर्ब हो पाते हैं वो एज पर अगर निकलता है तो सम लेटरल एंट्री हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है. और वर्क पे लेवल पे तो एट प्रेजेंट
We have data कि retired तो in next years as per my knowledge उससे 50 उससे जब आपने काम लिया है तो इनडायरेक्टली आपने उसे पैसे देते हुए साथ में ट्रेन भी किया है, yes sir. तो ऐसे आदमी को जो ऑलरेडी ट्रेंड है आप अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं? Sir, as per our policy, selection of all employees, contractual manpower within contract limit, we can kept, but our contract is based on work, not on manpower. That's why we can't. यानी आपके पास आदमी की कमी थी इसलिए आपने कॉन्ट्रेक्चुअल रखा था, और रखा था तो आगे भी जरूरत होगी तो रख लेना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ. एनीवे ये प्रेजेंटेशन नहीं वो समझ रहा हूँ सर मैं, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे हमने कोई काम करवाया तो हमको काम करवाने के लिए उसका वो करना है, लेकिन नहीं काम की जरूरत है. अब आप काम एक्सपीरियंस से करवा रहे हो, टैलेंटेड से करवा रहे हो या कम एक्सपीरियंस से करवा रहे हो, हम वी हैव टू डू द वर्क ओनली. इट इज वर्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली, नॉट मैन बेस्ड. From what he says, maybe this could be converted into some sort of policy. Yes sir, can be Good definitely. suggestion. ये प्रेजेंटेशन आपने और कहाँ कहाँ दिया है, तो डिटेल बताइए इसका. Sorry sir. ये प्रेजेंटेशन आपने और कहाँ कहाँ दिया है, इसके अलावा इससे पहले इससे पहले हमारा पीसी में दिया था. तो उसका है आपके पास कोई डिस्प्ले है? कहाँ कहाँ प्रेजेंटेशन किया, ये सेम प्रेजेंटेशन आपने और कहाँ कहाँ किया है हाँ. इससे पहले? इसके पहले एक पीसी में किया था. अरे आपका जो गाडरवाड़ा में. हाँ गाड़ावाड़ा में. ओके. और टोटल नंबर ऑफ नहीं इससे पहले अभी एक इनहांसिंग मैनेजमेंट स्किल प्रोग्राम में भी मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था सर. नहीं, नॉट सिमिलर प्रेजेंटेशन. हाँ. हैव यू प्रेजेंटेड मोर? इसके पहले और दूसरे प्रेजेंटेशन हाँ, हाउ मेनी? सर 6 प्रेजेंटेशन वी हैव गिवन. Out of 6, how many has been implemented? इम्प्लीमेंटेशन वन इम्प्लीमेंटेशन इज अंडर प्रोग्रेस. सोलर पावर का जो था वो कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग में गया हुआ है अभी. सोलर पावर से एफिशिएंसी इंक्रीजिंग करने का वो मैंने 2022 में दिया था. और उसके पहले आपका ई मोबिलिटी पे दिया था, तो ई मोबिलिटी ऑलरेडी चल रहा है सर. डिटेल कहीं है आपके पास सर? एट प्रेजेंट आई डोंट हैव सर. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू सर. Our next team is Khargon Carbon. Members are Chennuju Satish, Manish Babu Soni. Display at चालू है क्या अभी? Hello, all the participants. Hello. Just I want to refresh your memory when Rajkumar was presenting what are the evaluation criteria. One item was there number of topics presented in calendar year. So there will be questions, as the judges asked, there will be questions. What are the presentations you are given? And out of the 10 marks, they will assign you the marks depending on your quality of presentation topics that you have taken earlier, and what you call the capability of answering to the judges' questions on those topics. I think everybody is prepared in that respect. What I found actually, the first team probably seemed slightly confused in that regard. So I request you all to refresh your memory, whatever topics you have presented earlier,
And suppose one team has presented 2 topics, another team has presented 10 topics earlier. It will all depend on the judges' criteria, depending on the answers that you are giving to the questions they are putting. Is it clear, I think? Yeah, please. अभी नहीं, अच्छा स्लाइड नहीं करेगा, Thank you, sir, for once again clearing स्लाइड the पीछे आगे पीछे कर number of topics presented in a calendar year for the नहीं, participants. उसमें भी हो गया पॉइंटर, पॉइंटर तो यही है, यूज करेंगे ना. अच्छा अधिक लायर, इसको लगा लो उसमें. पॉइंटर की जरूरत नहीं है ना. हाँ ठीक है. हाँ सर ये वाला कार्बन टेक. नहीं उसको लगाना है ना. अच्छा ठीक, आगे पीछे करो. इधर करना है क्या? फोकस देना? नहीं, इधर करना उधर करना? ये बैक, ये नेक्स्ट नहीं, इधर करना है. फोकस ये वाला. अच्छा, ये क्या है? ठीक, चलो उधर चलो. ये दोनों रख लो. हाँ ठीक, मेरे को दे दो. हाथ ये रख. This team is नहीं रखो. carbon of NTPC Khargone. Okay. So we shall start. Honorable judges, dignitaries, and all the participants. Honorable judges and all the dignitaries and participants, welcome to the presentation of Team Carbon titled Smart Alert for Emergency Safe Pass. The theme of our presentation is enhancement of safety and process improvement through IoT, Internet of Things. My team comprises myself, Chennoju Satish, and Manish Babu Soni from Chemistry Department, Khargone. So these are the activities we have implemented in our station, which has improved the operation, maintenance, and safety practices. Few of them are sulfuric acid unloading header draining arrangement to avoid the manual acid handling, and the derator sample cooler arrangement at local, which has avoided the delay in the startup giving clearance. This is our presentation outline. So we are all aware of our company's vision to be the world's leading power company, energizing our country's growth and energy transition. And we are in the right path by maintaining the PLF and safety of man and machine and robust maintenance and PTW system. So present scenario in our Khargone, approximately around 2,000 workers will enter into the plant in a day, and the in and out punch of these workers is being ensured by the CSF person, and the entry and exit of workers is being monitored by EIC through CLIMS, Contract Labor Information Management System. So exact number of workers inside the plant cannot be determined perfectly, and also head count of the persons working in the specified area is also not known. And there is no restriction on the movement of workers in hazardous and other areas inside the plant. And there is a lack of real-time communication of workers with the EIC or area supervisor. And there is no differentiation of workers according to the departments. There are some case studies we have studied. In one of the station, a fatal incident has occurred in the CHP department where one worker is involved in the job of cutting and removing the accumulated belt strip. But there is some miscommunication, and there is miscommunication regarding the completion of work, and the permit was returned by the maintenance person. And the shift person, without the knowledge of the worker present at the specified area, he has taken the belt into the service without the knowledge of the person. So it has led to the unfortunate incident of death of the worker. And in the second case, workers are freely roaming in different areas of plant without any restriction. The worker from the CHP department has moved to the operation, and he has committed the suicide at the TG area.
And there are some medical incidents are also taking place at various stations due to the health issues of the workers. So we have captured all these case studies and we have done research. So how can we avoid these cases such that safety of the workers can be improved at our station? So I hand over the presentation to Manish Babu Soni to explain the technical parameters of our proposed project. Thank you, Satish. After having the case study session, we applied this interrelationship diagram to our problem. It is a new QC tool for solving the complex solution. So after applying our all problems in the interrelationship diagram, surprisingly we came to know that the lack of supervision is the main cause of our problem, unsafe incident taking in the plants. So our aim is to avoid any accident in the workplace, zero accident at workplace. So at the time of brainstorming, we are having these points in our mind that we should have a device or any technology to respond in emergency for the supervision and real-time location also supervised, 24/7 supervision and integration with technology for active type of supervision needed and also increase productivity of the workers. So after having these points in our mind, we have come across the three solutions, that one worker and one supervisor. We dropped that idea because if we applied one worker for one supervisor, company will flood it with manpower. So we dropped that idea. After next one is a CCTV surveillance in every location. CCTV surveillance is a supervision, but it's a type of one-way supervision, not a both-way supervision. So we choose this idea, surveillance with any technology or Internet of Things type solution. We search in the market for a similar device. Some of the companies like Tata's and Adani's using some sort of type technology. So we contacted with the masters in that technology, Amstead India, Tata Communication and Crisis Control India. So after contacting them, all these three suppliers, they agreed and interested to modify their devices according to our need. So basically this project plans comprises of three devices. First one is smart ID card, second one is location beacon, and third one is LoRaWAN network. The smart ID card having a SOS press button whenever any worker or card holder person feels SOS situation or any emergency situation, simply he just press SOS button and an emergency alarm goes to control room, AIC and all his reporting officers. So card will come into two categories, that is rechargeable or single battery use. Single battery use can be last up to 2 years, and Beacom is a low powered device. It can be last into 4 years also. So next one is a LoRaWAN network. It is a wide range network that connects this beacon to internet. And LoRaWAN is internationally used. It is an end-to-end security encrypted device, and it connects these type of devices to internet, and all the information come in our dashboard in a single click. So this is the project plan. Whenever a card holder enters to the plant area and moves to the area of the plants like canteen, here is the beacon. We defined this beacon as a canteen, CHP, AHP, chemistry, and all so on. So as the card holder passes from this area, this beacon detects the location of the cards and tell to LoRaWAN network, and LoRaWAN get this is its location and also information at which time the person passes from the area. So we can also map, suppose we can also map this dice as a hazardous area. We can place beacon here, here, and 4 beacons are placed in area, and when we authorized 2 or 3 persons to enter this hazardous area, if a fourth person come into area, an emergency alarm is generated that the someone is unauthorized entry in that area. And also we can categorize workers to CHP, HP, maintenance and TG area. So
So any worker cannot move to different area. If they do an alarm or a notification, go to his EIC that your worker is going to another area. So this is also is it also applicable in multi-storage building like boiler. We can exactly define that which floor or which location our card holder is present. If any worker in 13th floor and having SOS situation, we exactly know that the person is in 13th floor. So this is the dashboard view of if we apply this device in. So this is executive dashboard, how many people enter, exited, and this is a zone view that suppose we mapped this area to like AHP. So they showed that these workers working in this area actively. So this is the employee entry and exit report. At the end of the day, when card holder exits from the gate, card automatically deactivated, and a summary report generated that the employee 4 is enters in that time, exits that time. So let's have a video. Tata Communications shared that how they apply this device. You can keep your employees secure at all times. Simple to use, this wearable device has the power to save lives. While on site, workers keep their safe pass in a dedicated slot or on a lanyard. As they enter site, the card automatically activates and stays on until they leave. So it is by their side wherever they go. SafePass comes with various features including geofencing and emergency signaling to make managing employee safety seamless. If workers face an emergency situation, their supervisor will be alerted immediately. If they need assistance, employees can use an SOS button to reach out. And help will soon be on its way. While always-on location monitoring will alert employees and supervisors if they are entering a hazardous area. Now, Mr. Satish will tell the pros and cons of that technology. Thank you, Manish. So there are some, we will discuss the benefits of implementing this project. So some of them are minimized emergency response time. As we know the location of the workers and we are real-time head count of the workers is also available. We can act immediately and we can avoid any mishappening of the incident or mishappening of workers. Easy evacuation. If any major incidents like fire breakout can be happened in any area or confined space, at that time also we are aware of the workers present in that area, so we can evacuate the workers within the specified time. And idle or injured manpower also can also be tracked. Sometimes the worker may fall and he may not be able to operate the button. Then also we can identify where the idle car is present and we can go immediately and we can act accordingly. Tracking of manpower, as Manish explained, the tracking of manpower can be easier in this case. The worker is present in which floor, we can be identified very easily. And real-time tracking of manpower in hazardous and unauthorized area. So we can geofence the areas as hazardous and other unauthorized areas. So who are entering to those areas can be easily accessible. And if any unauthorized person enters the particular area, then alerts will be sent to the area in charge regarding the unauthorized entry. Prompt medical services. If any health emergency happens to the worker, like sudden heart stroke or any other case, in that case, the worker immediately presses the SOS button. So we can immediately go to the person and we can act accordingly, and ambulance services can also be provided within the stipulated time. And what are the limitations of this project? Approval is required for the implementation of SafePass, and there is some capital expenditure. And worker training is also required, training of workers for the use of these cards. And there can be the misusing of these safe cards inside the plant. So does this have potential for replications? Definitely yes. Chemistry is full of the hazardous areas. We can easily implement this technology around acid unloading areas, chlorine area, and in other departments where it is necessary like CHP, AHP, and operations. And obviously yes, in all the NTPC stations.
So what are the cost and benefits of this project? The total cost of the project will be around 3.6 crores, and the benefit means we are saving the lives of human, which is intangible in nature. And payback period is also immediate as we have when we implement this project. So the package actually, when we discuss with the vendors, this cost coming around 3.6 crore, and this package includes the installation of the beacons and complete network requirements, and they are agreed to issue the 2000 safe pass cards, and training of workers can also be provided by the vendor, and the complete maintenance required is provided for 3 years. So at present, we are in the negotiation stage with the vendors for demo at our station, like pilot project. So we are contacting with the 2 vendors, Amstrad India and Tata Communications. The project, they have given the quotation around 15 lakhs. So we are negotiating with these 2 vendors. Whenever it is approved, then we can implement the pilot project at our station. Thank you. Very good. This Yes, sir. 6 crores. Yes, sir. Yes. would be required if you want to cover entire plant. Sir, approximately 2000. 2000 is sufficient. Because the workers were coming in the shift wise, sir. So if we cover all the workers in the day, so 2000. That means same pass can be used by different people? No, sir. Actually, It is person specific. Yes, sir. We can simply register the safe pass to any specific person for his term period like 6 months or 3 months. Okay. And is it working anywhere in India yes, or sir. abroad? Yes, sir. Yes, Where? sir. It is working in Tata Steel and Adani Power Plant. And when we are represented this project, so we came to know that it is implemented. And what by is the feedback you have got from them? Have you gone there, studied? Sir, Yeah, I have asked one of my friends in Tata Steel. It is working in very smoothly. They are quite and, very satisfied with the hassle-free. performance? Yes, sir. Yes, sir. They don't have any issue. आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था. thank you, sir. आपने एक जगह उसका मिसयूज बोला, वर्ड यूज किया था. व्हाट वाज दैट मिसयूज पॉसिबल? सर मिसयूज ये हो सकता है कि सपोज किसी दूसरे का कार्ड किसी दूसरे ने ले लिया और वो जाके अनऑथराइज्ड एरिया में चला गया, तो अलर्ट चला जाएगा किसी और के नाम से कि ये पर्सन आपके एरिया में गया है, तो ये मिसयूज हो सकता है सर. तो मिसयूज कहाँ हुआ? ये तो गुड यूज हुआ. मतलब सर, मतलब सर सपोज ए पर्सन के कार्ड को बी पर्सन ने ले लिया और उसने वायलेशंस कर दिए प्लांट में कुछ अनऑथराइज्ड एरिया में जाके, तो पर्सन ए विल बी इन ट्रबल दैट यू हैव एंटर्ड यू वर देयर. यस सर. तो उसके लिए तो ये होगा ना, बायोमेट्रिक्स होगा ना उसके लिए. तो यस सर, बायोमेट्रिक्स होगा ना, तो ऐसा कोई कर नहीं पाएगा मेरे ख्याल से. पहली बात. दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि what is the expected life cycle of the hardware and software component of the safe pass system? सर क्योंकि आपने पे बैक पीरियड के बारे में बात किया था. यस सर. उतने दिन तक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो सिस्टम? LoRaWAN network can last up. Its single LoRaWAN network's battery can last up to 12 years, sir. And also beacons can be last for 5 to 6 years, sir. So after 6 years, we can just need to replace their batteries, not the overall system, sir. And can this system allow to track ideal or injured or missing worker during any emergency? 100%, sir. If any person press that SOS button or not press that SOS button, we can simply track that in particular area how many cards are roaming or present at the site. In case of any emergency, for example, कुछ छोटा सा एक्सप्लोजन हो गया, Yes, sir. तब ये सिस्टम काम करेगा? 100%, sir.
If system cannot be damaged by fire or this, if beacon burn in a fire, व्हाट आई then मीन टू से कि उसका इंस्टॉलेशन, मेरा क्वेश्चन को मैं अपने लैंग्वेज में पूछ लेता हूँ. हाउ कैन द ऑपरेशन ऑफ सेफ पास बी इंश्योर्ड टू बी अनअफेक्टेड ड्यूरिंग ए हैजार्डस इमरजेंसी सिचुएशन? yes sir, it can be placed in outside of the premises or any type of structure that cannot be get caught fire easily, so it can work 100% in emergency situation sir. कार्ड को कोई ना कोई सेंसर रीड कर रहा होगा. Yes, sir. वो सेंसर तो बेचारा अंदर ही बैठा होगा और वो तो ऐसी सिचुएशन में शहीद हो जाएगा. सर सेंसर्स की जो कैपेसिटी है, इट कैन पास द वॉल और एनी स्ट्रक्चर आल्सो, ग्लास, ये सबको वो Yes, क्रॉस some कर सकता range, है. sir. We can define the range of the beacons. दूर से झांक सकता है. Yes, Yes, sir. sir. हाँ वो ठीक है, ओके, थैंक यू. that extent, there would be some limitation. Yes, sir. Some limitation. Like you are saying, if it gets burned, Then it will not sense. yes. ओके स्टडी दिखाइए जरा. Case study. ये नंबर वन आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? आपका सिस्टम जब इम्प्लीमेंट होगा तो ये इंसिडेंट्स कैसे प्रिवेंट होगा? सर इसमें हम ऐसा कर सकता है, कहीं भी whenever the worker is working in a particular area, so if we have said that in control room we can easily identify the workers present in that area. So we can take the example of this case when the shift person is already present in that area. Before the shift person, which he has to take the service, he has to take the belt into service. Before that, he can look the picture where who are present in the specified area. So if that if it easily identifiable, then he will not take the belt into service and immediately inform the area supervisor or concerned person to check the presence of that person. ये तो एक सिस्टम फेलियर है ना, सिस्टम फेलियर नहीं, सिस्टम फॉलो नहीं करने का फेलियर है, ठीक है ना, जो पहला केस है. आपके इसमें इसको मॉनिटर करने के लिए आप एक सिस्टम और लगा रहे हो जिसका कम्युनिकेशन वो ऑपरेशन से करेगा या मेंटेनेंस से करेगा. Yes. है कि नहीं? तो वो इसको कैसे प्रिवेंट कर एक सकता है? सर एक इसमें ये पोजीशन है कि सपोज उसने जब वो ऑपरेशन में लेने वाले उस डिवाइस को या कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, तो पहले अपना एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में वो व्यू कर लेंगे कि वहाँ कोई मैन पावर रोम तो नहीं कर रहा है. आफ्टर इंश्योरिंग दैट परमिट सिस्टम, इट्स अ वायलेशन ऑफ परमिट सिस्टम, बट वो परमिट सिस्टम को इंश्योर करने के बाद एक रिकन्फर्मेशन करेंगे उस डैशबोर्ड के पास कोई आदमी वहाँ मूव तो नहीं कर रहा है. आफ्टर दैट ही विल टेक दैट डिवाइस इनटू सर्विस. वो मॉनिटरिंग ऑपरेशन में नहीं है ना, वो मॉनिटरिंग आपका सेपरेट एक कंट्रोल रूम है जो ये Sir, लोकेशन मॉनिटर कर रहा है. दिस डैशबोर्ड कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड इन Control कंट्रोल rooms, रूम्स sir. एंड डिफरेंट लोकेशन सर. Though whatever the software is there, no sir, that software can be provided at all the locations whenever we are required. So we can easily traceable the manpower. ठीक है ना, एक और मतलब ऑपरेशन पे मॉनिटरिंग एक और करना पड़ेगा उसको. ये सर एक्स्ट्रा बैरियर हो गया सर, तो सेफ्टी ठीक है. का. सेकेंडली ये जो फ्रीली रोमिंग वाला एरिया है, अब जो यूनिट साइड में बंकर कन्वेयर्स हैं, हाँ वो सीएचपी वर्कर तो टीजे हॉल में आके उसका कैंटीन यूज़ करता ही है या लिफ्ट यूज़ करता है, तो हर बार वायलेशन वाला सर, उसका ये कैसे प्रिवेंट करें? सर उसमें ऐसा कर सकते हैं जैसा कोई एरिया आपका डीएम प्लांट का ही जो yes sir is जाके our sampling case also करता है. same thing. Whenever our workers are going to boiler area also to collect the samples and is coming to the chemistry lab also, so we can authorize some few of the workers to enter and exit through different areas. We can give the authorization. Whenever that person is particularly entering there, then there is no problem, we can easily identify. Out of authorization any extra person is coming, then we can identify sir. ठीक है. एक छोटा पॉइंट और है मेरा कि जिसको हार्ट अटैक आता है या फेटल होता है, हाँ सर, उसको ये टाइम नहीं रहेगा कि वो एसओएस बटन प्रेस करे. सर ये तो टाइम नहीं रहेगा सर, लेकिन हो सकता है अगर कुछ फील हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है या हाँ, कुछ हेल्थ हो रहा है, छोटे-मोटे तब इसमें ही वो काम आएगा. उनका कुछ हेल्प का जरूरत होगा तो तब प्रेस करेगा सर. इसका यूज सर फॉल फ्रॉम हाइट से भी हो सकता है. सपोज कोई फॉल फ्रॉम हाइट होता है तो वो सडन तो डेथ होती नहीं है, पहले ब्लीडिंग होगा फिर इंजर्ड, और अगर उसके पास कुछ समय है कि वो जस्ट एक बटन प्रेस कर सके, इसके बजाय कि कोई उसे आके देखे फिर रिस्पॉन्ड करे, तो वहाँ हम थोड़ा सा एज में रहेंगे सर. चल ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सर. इसमें अप्रूवल का क्या स्टेज है अभी? सर अप्रूवल का स्टेज ये कहाँ से कॉर्पोरेट सेक्टर से होगा कि लोकल होगा? नहीं, ये तो सर कॉर्पोरेट You सेक्टर can- से ही होगा बिकॉज हाई बजट प्रोजेक्ट है ये सर. स्टेशन में सर नेगोशिएबल विथ वेंडर फॉर पायलट प्रोजेक्ट सर. पायलट प्रोजेक्ट में वो दिखाने के लिए भी वो 15 लाख मांग रहा है, तो उसके लिए अप्रूवल लेके सब करना है सर. अगर वो हो गए तो वी कैन इम्प्लीमेंट इन द स्टेशन.
Sir, we are presenting every year we are presenting the topics in the station, sir. It is also our third time in the regional level, and we have also implemented process improvement projects. Uh, oh. You can say. Mm. Current year 4, sir. Current year 4, eh? Yes, sir. All of these are from year 24. Implemented at the station. So these are all the activities. Yes, sir. So some examples which I mentioned, sulfuric acid unloading बता दिया सर. और दूसरा जो डिरेटर सैंपल है, सैंपल उसको श्वास में आने में लिए टाइम लगता है और उसको डीवो चेक करके फिर क्लियरेंस देने में बहुत टाइम हो जाता है. तो फिर लोकल में ही हमने क्या किया है, सैंपल अरेंजमेंट करवा दिया है, सैंपल कूलर. So immediately whenever the steam packing is started, the person will enter, will go to that area and immediately will check the sample and no original sir. It is implemented in our station at the first time. Then it has कर रहा है सर, अभी धीरे धीरे कर रहा है. Okay, thank you sir. Thank you, team Carbon of Khargon. Our next team is Horizon Korba. Members are P. Bhanu Pradeep, DC Yaswant, Team Horizon NTPC Korba. Invest help. Hello. Good morning, judges. Good morning, my dear seniors and colleagues. So we team Horizon going to give a presentation on mobile crane deployment for cooling tower fans maintenance. So coming to team members. Myself, Bhanu Pradeep, Mechanical Maintenance Offset, Korba. I myself, Chandrasekhar Ashwan from Field Quality Assurance Department, Korba. This is the roadmap of our presentation. First, we are going to give a short introduction regarding cooling towers of Korba Super Thermal Power Station and the problem definition there. So since there is a problem, we need solution. So in alternate solutions, we are going to give a based on our experience on our science guidance, few solutions we have prepared. And in order to tell which is the best solution, we did some economical analysis. And then at the end, based on comparison, we're going to give which is the best solution. So coming to Korba Super Thermal Power Station, in Korba, there are 3 stages. And coming to first stage, there are 3 units and 3 cooling towers. In each cooling tower, there are 16 cells and 16 fans. So total, there are 48 fans. And coming to stage 2, there are 6 cooling towers. And each cooling tower, there are 12 cells. Total, there are 72 cooling towers. And in stage 3, there are 2 cooling towers, and in each cooling tower, there are 10 cells. Total, there are 20 fans. Total MM offset maintenance, this 140 fans. This is the power consumption of this cooling tower fans. On an average, it's around 7.5 megawatts. So, coming to stage 2 cooling towers, and then why this stage 2? Why not stage 1 and stage 3? So there is some issue in stage 2 cooling towers. Let us find out what is that issue.
So here in stage 2, this mechanical maintenance offsite maintains 72 number of cooling towers. So since commission in stage 2, this roof canopy is used for maintenance of gearbox and motors of these cooling towers. There is no stock door available in stage 2. In stage 1 and stage 3, there is some stack door with monowire. So this is gantry. So coming to stage 2, fine. Next. So this is how it is. Coming to stage 1, stage 3, there is a stack door with monowire. Coming to stage, there is no stack door. Since there is no stack door, they are using this roof gantry. So what is the issue with roof gantry? Okay, this is a comment given by the safety committee. It has been noticed that roof gantry arrangement of stage 2 CT fans got destabilized during heavy winds, condition on previous occasions. Alternate arrangements of CT gearbox maintenance may be explored to provide usage of gantry crane. Actually, whenever there was heavy winds or heavy storms or winds, this roof gantry got destabilized, and many times it fell down from that CT tower to ground. And there were instances where in 2020 there was fatal incident as well because of this roof gantry. This is the major issue, that instability in roof gantry. And then one of the issues is that since commission, Korba is very old plant, almost like 40 years. After the commission, since commission they are using roof gantry. Because of that, there was corrosion as well. So to repair that gantry, it's very highly risky. Okay, then you might have aware that in stage 2 we don't have any roof gantry crane, and you also might have aware that Korba recently in IPS conference has received for best station heat rate award. So cooling towers is the one of the crucial part which will maintain the best heat rate. So for doing that one, now stage 2 we have 72 fans. For doing that maintenance we don't have roof gantry. Why it is not available? Because continuous CT vapor flume is touching the CT gantry structure and it got corroded. And at the same time, now gantry is not available. So what are the other options? Manually, they had to carry the scaffolding pipes from ground to 25-meter level, and they have to install the scaffolding inside the cell, and they have to remove each one by one part gearbox for overhauling or maintenance. So it is taking more than 2 weeks time. So, and also at the same time, it is a safety concern because workers has to work in the confined area inside the cell, that too on the scaffoldings. So then what are the other viable options, what we have to do for gearbox maintenance? So one is the use of mobile crane, and another is the providing monorail and stack door on the existing cell, and third one is arrangement of mini gantry crane of 3-ton capacity. So in the first case, it is the mobile crane, it is a tire mounted crane. So by using it, so whichever cooling tower gearbox we have to do maintenance, it can easily shift, and we can lift the gearbox from ground level to the 25-meter level. This is how normally we are doing the gearbox maintenance and servicing. The center BOT will bring the repaired one or new gearbox, and we will lift the crane. And second option is, this is the existing cell. On the top of the cell, we have to provide the monorail, and we have to make the access door with 2 meter by 1 meter, 1.5 meter dimension. And third one is, you can see in the top set, that is the existing gantry crane. Currently it is not in service. At the bottom, you can clearly see the mini gantry. So its height is 7 meter compared to earlier 12 meter. So that toppling will be reduced. But there is a problem with the mini gantry, because in between the cells there is a cable tray, so space constraint is there for laying the monorail and the track as well. Now we'll go to economic analysis of these 3 options. For using the mobile crane, currently we have deployed 1 crane. Let us assume we have 72 fans, and we will take 1/3 of the population for overhauling. In that one, we'll consider only 75% is we have to completely replace the gearbox instead of regular maintenance. Then
And for deploying the crane for single time, it is around 65,000. So the cost estimated annual cost is 11.7 lakhs. Whereas for second case, that is providing the monorail on top of the cell and making the access door, that cost estimate is initial capital cost will be around 500 lakhs and annual maintenance is 7.2 lakhs for complete stage 2, 72 towers. And third option is mini portable gantry crane. It is of 3-ton capacity. Its estimated cost is capital initial cost is 180 lakhs and annual maintenance is 6 lakhs per year. And we'll compare these three cases by using net present value. Then if you see in case 1, there is no initial capital cost, but using net present, in first year it is around 10.83 lakhs, and we have compared this for 15 years at interest rate of 8%. So first case 1, that is mobile crane, is around 100 lakhs for 15 years, whereas for second case, that is monorail hoist with providing access door, it is coming around 562 lakhs, and third case is providing mini gantry crane, that is comes around 232 lakhs. And now we'll come to know that we have estimated that this is 11.7 lakhs for mobile crane, but actual cost is less than that one, that is just 6.7 lakhs. Why it is 6.7 lakhs? Because we are deploying one crane at a time, but we thought that we'll replace one gearbox at a time. But what we are doing, we are consolidating all the gearboxes which are in the defective or which has to do overhauling. So at a time we are doing the, with using single time deployment, we are replacing the 4 gearbox at a time. So in that way, the actual cost is less than estimated. And we have seen that in the 15 years life cycle span, with the interest rate of 8%, CT grand mobile crane deployment is very much less compared to other two options, because other two options are 562 lakhs and 232 lakhs. So on the economic analysis, and at the same time, mainly why we are discussing this one is because of the safety concern, because CT guarantee is toppled 2 to 3 times, and safety incidents are happening, and it is hazardous to the workers who are working there. So by using this mobile crane, we may avoid such kind of things. Only concern will be the regular activity of CT gearbox maintenance. That is regular work what they are doing. And as Korba is industrial area, and already we have placed one purchase order also, and this is in implementation from the last 1 year, and the results, economic analysis also shows that it is viable options. So whichever the NTPC having the old NTPC stations, whichever roof gantry cranes are not available and they are not in service due to any other reasons, they might have used this option because it is safe and economical and viable. And only concern may be there, maybe whenever we might have required, that crane may not be available. But we might have known that in all the existing fans, 10% standby will be there. So at a time, all it won't fail, and all also at a time we cannot able to replace. That is the only concern this one. So we have faced the challenge, and we learn from it, and we keep moving forward for future. Thank you. As of now, No, I guess. You have not tried to find out. Yes. But you are using it regularly. Yes, sir. From the last 1 year. What is the problem? Is that exactly what problem is there? Sir, from the I starting, didn't get it. Huh? ours is 40 years old plant, sir. Huh. So initially there is a roof gantry crane. Hmm. And you can see that is the Ah, top. that is there. Okay. That is got corroded and it is not in service because it is 40 years old and it's very much height. So for doing the gearbox servicing and for repairing the structure, whichever the parts got corroded, we have to replace that one for using that. So that proves to be very expensive as far as NPV is concerned. Yes, sir. Place earlier, many times it fell down whenever there are heavy winds. Okay. Have you shared this practice with other stations in some forum? No, sir. Then how will they come to know that you are adopting this practice? So that's why this actually we have shared with our BE team, sir. So they will. और वो भी बताया नहीं आपने कितने presentation किए?
Yes, sir. In the current year, we have given 5 presentations, sir. In that one, 4 are implemented. One is under discussions. Those are related to city operation, effectiveness improvement by changing the nozzles and fields. And another one is improving the effective vertical turbine CW pump. For that one, doing the overhauling checks and other things. And third one, another one is attending the water leaks in online system. Yes, sir. Sir, one such thing is professional, sir. Another one is we'll share this with the corporate team. So corporate OS team, it will share across the total all the stations. So they will also share what are the good practice, such as for example, in one station recently they have faced the CW due to leakage of CW discharge below, the entire station got blocked out. So then they told that. ये जो आपका गियर बॉक्स का मेंटेनेंस, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं? Sir, we'll do preventive maintenance for 24 weeks. For every 24 weeks, we'll do the preventive maintenance. प्रिवेंटिव, कभी ब्रेकडाउन नहीं होने देते, है ना? Yes, sir. But even though if preventive maintenance we'll do, but sometimes what we'll do due to material quality, or if the fan might have run with overcurrent or whatever it may be the reason, so it may break down. And one gearbox lifespan is around 15 years only. आपने कंपेयर किया अभी, एक आपका ये कौन सा है? नहीं, जो जिसमें 100 करोड़ आ रहा है, उसका नाम क्या है? मिनी, उसका नाम जो सेलेक्ट किया क्या था? फर्स्ट वन इज मोबाइल क्रेन, मिनी पोर्टेबल मोनो, यही है ना? इसी को सेलेक्ट किया ना 100 करोड़ के लिए? वो का नाम क्या है? हाँ, फर्स्ट वन इज मोबाइल क्रेन सर, दैट कम्स अराउंड 100 मोबाइल क्रेन, है ना? यस, फॉर 15 इयर्स. ये इसका 100 करोड़ आया और बाकी का 5 टाइम्स ज़्यादा आया. इट्स लैक्स. 100 lakhs. 100 lakh, ओके, नो प्रॉब्लम. और उसका 562 लैक्स आया, ओके. मेन सबसे बड़ा राक्षस कौन है जो उसका दाम बढ़ा रहा है? मेन कल्प्रिट, मेन रीजन. Could you get my question? Yes, sir. Main reason may be the design fault, sir. Because in stage 2 we don't have any stack door provided. They have given only, because in stage 1 and 3 we have stack door and as well as monorail. So with help of chain block, they can bring the gearbox from outside to inside. Whereas in stage 2, they have not provided the stack door because gearbox dimension is around 1.1 by 1.1 meter. That much opening is required to bring the new gearbox to inside, or else bring out the old gearbox to out. That's why we have to lift and we have to keep inside only. इसमें ब्लेड एंगल चेंज करने के लिए एक्सेस कहाँ से होता है फिर? सर, सो वो जहाँ पे मोटर पे है ना सर, मोटर शॉप, वहाँ पे एक छोटा सा मैनुअल है, एक आदमी जाने के लिए, वहाँ से अंदर जाके ब्लेड एंगल चेंज. अच्छा. और ये जो करोडेड गैंट्री क्रेन है, इसको डिसमेंटल करके हटाने का प्रोग्राम है कुछ? यस सर, उसका भी ऑलरेडी वर्क अंडर प्रोग्रेस. एक टावर का निकाल दिया. तीनों टावर में क्रेन मूवमेंट सेफ है? Yes, sir. We have a lot of space between all the towers, and recently they have done the paving also with concrete. Okay. Sir, their motor, you can see that the small access door, from there persons will go inside and they will chase the blade. ओवरऑलिंग में जब सारे गियर बॉक्स निकाल के करते हैं तो उसका कॉस्ट भी कंसिडर किया है क्या इसमें? जब कोई यूनिट शटडाउन में है तो सारा टावर शटडाउन में जाता है? नहीं सर, एक्चुअली सारे गियर बॉक्स में काम होता है उस समय. Whichever gearbox is actually we are maintaining the records, sir, including the oil levels. Every Saturday we'll do the oil top up also. So we'll check the frequency also. Whichever gearbox is having the more frequent oil level, or else whichever having more vibrations and taking more current, and we'll physically check. And after that, accordingly, we'll plan the overhauling. At a time, we won't do, sir,
because at a time replace 72 gearbox are not possible. With manual condition, with scaffolding, it is taking 2 weeks time. With this using mobile crane, we are completing ओवरऑलिंग के 4 समय days. भी लिमिटेड गियरबॉक्स ही इसमें Yes, sir. रिप्लेस होते हैं. ओके. With using mobile crane, we are doing the overhauling activity in just 3 days. Earlier it is taking 2 weeks time. That is also safety issues. मोटर रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल है इससे? Yes, sir. Motor is outside only. We can replace. Yes, sir. 3 into 500. Sir, around 2 to 3.5. Sir. 2 to 3.5. Sorry, sir. Sir, design is 2215, I think. Now it is design is 2215 kilocalorie per kilowatt hour. I think 2215, 20 kilocalorie extra than design. Yes, because of aging effect. Okay, thank you. Thank you, Team Harijan Korba. Our next team is Omega of Gadravara. Team members are Satish Kumar Sikhakoli, Nikhil Anand Prabhakar, Prakash Singh Dhakar, Mrugesh Vasnik. Team Omega of Gadravara. Feeling comfort. Hello, hello. Only pointer. So this is Hello. Team Omega of Gadravara. So we shall start. Very good morning to respected judges, seniors, colleagues, and dear friends. We are Team Omega from Electrical Maintenance, Gadarwara, and our team members are Satish Kumar Sikakoli, Nikhil Anand Prabhakar, Prakash Singh Dhakar, and myself, Mrugesh Vasnik. Let me ask you a simple question. Are electrical installations risk-free? The obvious answer is no. But can we reduce the risk? I believe that we can reduce the risks. So we are making an attempt towards this. In the last few years, electrical forced outages data shows us that ST systems and LT systems are one of the major contributors to forced outages. And the predominant reason for them is the faults in ST and LT switchgears. But what causes faults in ST and LT switchgears? The causes of faults can be categorized into three, as here shown here. One is human error, that is like incorrect operation, equipment failure, like insulation breakdown, and environmental factors like moisture ingress. All these causes can lead to arc flashes in the system. An arc flash is pretty dangerous. But what is an arc flash? An arc flash is a sudden release of heat and light energy from a current flowing through air. During an arc flash, the temperature rise is so large and so sudden that the metal expands 67,000 times, and it causes it to vaporize directly from the solid form. It also releases pressure waves, sound waves, and also a blast of sharpnels. The temperature in the electric arc can reach to such a level that it is almost equal to 4 times the surface temperature of the sun.
So all in all, arc flashes are pretty dangerous, and they pose a very great risk to the operating personnel, as well as they can cause primary and secondary damage to the equipment. Let me show what kind of a havoc an arc flash can cause. Sir, factors affecting the impact of arc flash, we already knows very well. Arc flash energy is proportional to voltage, current, and time. Sir, voltage and current controlling are not easy and feasible, but time is in our hands. Reduce time to clear fault, feasible and easiest option of the implementation. Sir, as you seen in the picture, sir, if we are able to reduce device operating time from, so incident energy will be reduced. In this case, if we are using category 3 or 4 category equipment for the safety, if we are able to reduce the operating time, then we are able to use class 1 PP equipment. Next, sir. Sir, in our mostly power station, typical protection philosophy, number of feeders, breakers, number of feeders, and bus coupler and incomers is available. Nowadays, all equipment are equipped with numerical protection relays. So, numerical protection feeders mostly, we are current-based numerical protection relays are used. With the coordination with upstream and downstream feeder का जो टाइम का कोऑर्डिनेशन करके हम लोग 800 से 100 से 800 मिली सेकेंड का कोऑर्डिनेशन के साथ है, प्लस इसके साथ में वी हैव सम रिलेज हैव सम डिबाउंस टाइम, इनबिल्ट डिले टाइम फॉर ऑपरेशन दैट इज 20 मिली सेकेंड्स. नेक्स्ट सर. Sir, how to detect arc flash? Arc flash release energy in the form of light, sound, thermal, and explosive force. Sir, sound is slow to capture and affect by noise also, and thermal is easy to capture, but light is not fast enough. Explosive force also slow. So light is the fastest speed and easy to capture using optical sensors. Sir, sensing the intense light generated during arc flash is the fastest method. Circuit breaker can be tripped as soon as the sensor pick up lights. Next, may I request Nikhil sir to implement. So now we have seen what is an arc flash and how dangerous it can be, and what we can do to detect it much faster. So we have derived that sensing the light is the fastest way to capture whether an arc flash is actually occurring or not. So now we will see, introducing our topic, high-speed arc flash detection in switchgears. So our idea is to reduce the time delay for detecting the arc flash and trip the breaker in a fast way so that the energy released can be controlled. So in a typical switchgear, we have a numerical relay protecting the feeder. So if any fault happens in the downstream, presently overcurrent protection normally takes care of the protection and trips the breaker. So we have seen that we have to provide some delay in that. Relay will have its own delay of 20 to 50 milliseconds for calculation, and to maintain the protection grading, we have to give some delay to the feeder or the incomer, 100 to 800 milliseconds, depending upon how deep you are in the system. So without changing our existing protection philosophy, we are adding two elements. We are introducing a arc flash overcurrent protection along with a arc flash light sensor. So whenever there is an arc flash, light will be released, most obviously, and that light will be as an analog signal fed to the numerical relay. Along with that, if there is an overcurrent, so it will not wait for that 100 to 800 milliseconds. It will deduce that there is an arc flash, no need to wait and trip the breaker. So the algorithm will look like this. If the light sensor picks up and the current input is also there,
arc flash protection will trip the breaker. This uses two different types of protections. Ultra fast overcurrent, how it is different from the conventional overcurrent we'll see, and how we are using the light sensors. So normally an overcurrent protection will act when your RMS value of the current goes beyond a certain value which you have set in the relay, right? So for calculating the RMS, it needs at least 4 samples of a cycle. One cycle is 20 milliseconds. That's why we are saying that relay takes around 20 to 50 milliseconds for calculation. But in this case, our protection will act in 2 to 5 milliseconds. How? Because it will take 16 samples per cycle, and if consecutive two samples are beyond the set value, the peak value, not the RMS value, it will initiate the arc flash protection. So its advantage is that it is acting very fast. It will not wait for 20 milliseconds, and within 2 to 5 milliseconds, it will initiate a arc flash overcurrent protection. Along with that, we need a light sensor. So existing numerical relays can be modified to add these optical fiber inputs, and each relay can have either 4 or 8 inputs in the relay. And once there is a arc flash happening, this light sensor will pick up after if it reaches beyond a certain threshold of analog value along with the arc flash current. So we'll trip the breaker immediately. And even we can improve this by implementing inverse times characteristics, so that more the current, more the light, it will trip much faster. So this is a typical disturbance record of a arc flash. So at the time where the fault happens, you can see that current has reached around 28 kiloamperes. Okay, so if at this point there was no arc flash protection, so it will take around 100 milliseconds, minimum 100 milliseconds to trip. So the fault has been fed for so much time. But if we implement the arc flash protection and we have a light input, the light input is right now picking up at the orange cursor, which we can say that t equal to 0, and at the magenta line, the trip has been initiated, which is around 3.7 milliseconds from the initiation of the arc. So after this 3.7 milliseconds, only breaker time, whatever mechanical time breaker will take for tripping will be there. So by this way, we have almost eliminated around, if we say 100 milliseconds to 3 milliseconds, around 97% of your time has been reduced. So, but what will happen during in-rush conditions of charging, or when you are starting the motors or you are charging switchgear? So at that time, you won't have the light input. So your normal protections which were there for starting protections or locked rotor protections, whatever transformer in-rush conditions protections you are having, they will be remain intact, will not disturb those. Additional protection we will be introducing, which will be as a only for arc flash protection. So this is the DR. So how do we implement this? For this, we have two types of sensors. One will be a wide angle sensor. It's a simple fiber optic which you have in your homes for broadband. Fiber optic is there. So its end will be open with a translucent cap, and you can see there are two fibers going into it. So the second fiber is for the loop back test, because you have to make sure that this protection is active and healthy. So during its service, what it will do is, it will send a loop back signal every 10 minutes to check whether your sensors are healthy or not. So if any fiber optic is getting broken, you will get an alarm and protection will get blocked. So there are two types of sensors. This is one point sensor which will monitor the area in front of it. It will be connected to the analog card, as I said, in the numerical relay, existing numerical relay. Then second type of sensor is for monitoring the bus. So bus is a section where you have major flashovers and most dangerous. So here the fiber optic will be bare fiber. In our homes, it's a yellow color or orange color jacketed fiber. So this will be a open fiber. So it can sense the light from anywhere. If in that chamber, it's normally dark, pitch black chamber, because no openings are there. So it will sense the ambient arc flash light and it will trip the breaker. So this can range from 50 meters and 30 meters up to the relay. So typically all our switchgears can be covered using this. So this is a top view of the breaker compartment, where you can see on the left hand side breaker are racked out and racked in, and the right side is the outgoing compartment. So point sensors can be mounted on the breaker side and the outgoing side, whereas for the bus bar chamber, we'll use the bare fibers. And we have to take care that while racking in, racking out, track is not
affected by our mounting location. So we have to choose the location such that it avoids the breaker track. So this is a side view and the front view and the rear view of mounting locations. So once it is implemented, so typically it will look like this. The incomer will be supposed to monitor the bus chamber, whereas the outgoing feeders will have only point sensors. It will monitor the breaker chamber and the outgoing chamber. So this is a factory test of the protection in service. So without the arc flash protection, the energy release is 14.8 calorie per centimeter square, and with the arc flash protection, only it will look like a small Diwali cracker going off instead of a flash. So it is very quite evident that the arc flash detection is working phenomenally good. And what is the effect of this one? In the form of energy, arc flash energy, it almost reduced by 78%. And what about the arc length? That is what we call as the arc flash boundary. It is almost reduced by the 64%. Normally during the PPAs, what we have to be provided in the switchgear rooms, we have to be wear these things as per standards, as it is called as a category 3 safety. Now we have created our environment as a category 1, just normal with the goggles and the safety. Next. Now this is not only for applicable for the HT switchgear as I have already discussed. This can also applicable for the LT switchgear. Normally in LT switchgears, the small modules too, it will reach to the up to 150 kilowatt modules. But all the equipments of the LT switchgears are not equipped with the numerical relays, but the incomers are equipped with the numerical relays, which are main source of the flashover. If anything happens in the LT switchgear, that is also in the brayer fiber of the second method of this one. This will cover all the bus bar of the LT switchgear, and it is connected to the numerical relay of the incomer. Whenever it senses, it immediately isolates the main source of the energy of the arc is the incomer, that is immediately it is neglecting. Next, what is the cost? Initially, we are starting that the main generation loss will be affected of the HT switchgear. In the HT switchgear, we are having 3 types of the breakers like outgoing, incoming, and motor. And the cost of implementation of the equipments which are installed for the AFD is this one. If you connect with the major critical of the both unit 1, just like IDFD fans and all critical motors, it is coming around 79 lakhs. But if you know the single panel complete cost is around coming as 20 lakhs. So from the cost point of view, it is very cheap to cover all the 200 breakers of the both units. Now you come to the cost, SWOT analysis. The biggest strength is the human safety, and it is very accurate and speed, and minimize the secondary damage as small as possible, and it is inexpensive, and it is the main problem is that it is a continually monitor the healthiness of the fiber and immediately gives the alarms to this one. But for the implementation of this system, it requires a shutdown. It takes the time to 1 or 2 days, but that means during the overhauling in a planned way, this can be mitigated. And the opportunities, this is not only limited for the NTPC Gadarwara, it is all the coming projects as well as the POH projects is coming. And now the conclusion. As in the morning session, our chief chairman is also clear that we have to use the new new norms for the safe environment we have with the novel technologies. This, our technology exactly suits with what our expectation from the top management. These are the higher major advantages of this one. Next. These are the references what we have taken. Next. These are the last 1 year what we have taken the different presentations, and out of this one, only 2 are in the implementation, all are implemented. Thank you, sir. Nice, sir. This is already project has been approved. We are already trying to implement. PR is already created. It is under, sir. Already when the test was done in the Talcher Kanya, we have here. That is only for one breaker they have implemented. One breaker के लिए किया और alarm में रखा है अभी protection. They have not used in this one. But we are going for the total project in a rigorous way to complete all the switchgears, HT switchgears. We are having 6 boards of HT switchgears, and also some boards of the LT which are critical for the directly impacting, just like unit emergency and turbine MCC. This will directly impact the generation. Those are also we are considering this LT switchgears. Yeah.
No, this has been. Yes, sir. This will be useful for this one. This has to be. We have to be highlighted, sir. How much we are successful based on this one. KT मीट्स में सर दिखाया है. हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. OS Yes, में sir. KT मीट्स में दिखाया गया है ये, and they have जैसे अभी टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑलरेडी इंक्लूड हो गया स्पेक्स में. पहले नहीं था स्विच गियर का टेम्परेचर मॉनिटरिंग. अभी जितने नए प्लांट्स आ रहे हैं उसमें दे आर इंटीग्रेटिंग द टेम्परेचर सेंसर्स आल्सो. सो हाँ, बिल्ट इन डाल दिया पैकेज में. तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि ओएस अभी प्रूव कर लेगा कल्चर में, और हमारे यहाँ भी अभी लगा रहे हैं हम. So once it is proven, we hope that it will be implemented, sir. And the day by day, sir, previous. Downside है सर, फाइबर ऑप्टिक इज वेरी वीक. हमने दिखाया था वीकनेस में. एक तो वीक होता है ये, तो हम मेंटेनेंस करते वक्त थोड़ा अभी जो यूज टू है रफ एंड टफ होता है स्विच गियर, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइबर ऑप्टिक ज्यादा बेंड नहीं कर सकते हैं. That is our threat, But sir. the cost of the sensor is very cheap as compared to the relay. रिले भी हम एग्जिस्टिंग रिले यूज कर रहे हैं, सो देयर वी आर सेविंग द कॉस्ट. आपको एडिशनली कोई डिवाइस नहीं लगाना है. एग्जिस्टिंग रिले में बस कार्ड चेंज करना है और फाइबर ऑप्टिक लगा देना है. इंस्टॉलेशन में ब्रेकर ट्रॉली के पाथ में नहीं आना चाहिए. बस वही एक सबसे बड़ा रिस्क है कि जो, क्योंकि ऑपरेटर जो ब्रेकर रैक एंड रिकॉर्ड कर रहा है, हमको वो पाथ अवॉइड करना है, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगा सेंसर. स्पूरियस स्ट्रिपिंग का क्या चांस है इसमें, शॉर्टिंग से? स्पूरियस स्ट्रिपिंग का सर, इसमें जब कमिश्निंग होता है तो पहले टेस्टिंग करके एम्बिएंट लाइट कितना सेंस कर रहा है, वो कहीं पिनहोल्स होंगे चेंबर में, कहीं पिनहोल्स होंगे, या ब्रेकर रैक इन के लिए डोर खोल रहा है. सो एम्बिएंट लाइट का लेवल को हम उसमें थ्रेशोल्ड बना के उसके ऊपर सेट करेंगे, क्योंकि जब आर्क फ्लैश होगा तो इंटेंस लाइट आएगा. तो एंड जो वैल्यू हम सेट करेंगे ट्रिपिंग का वो हाई रखा. प्लस एट दैट टाइम करंट विल आल्सो बी देयर. तो एंड गेट है वो, मतलब करंट विल बी देयर एज वेल एज लाइट विल बी देयर. व्हेन बोथ आर देयर देन ओनली इट विल हैपन. सो इसमें स्पूरियस स्ट्रिपिंग टेक केयर हो जाता है. ये जो इसमें दिखाया आपने, ये सेम है जो तालचर में है या इसमें कुछ डिफरेंट? ये सेम थोड़ा सा चेंज किया हमने. तालचर में एक्चुअली उन्होंने इनकमर रिले में सिंपली कार्ड चेंज किया है. हम जो प्रपोज कर रहे हैं इवन आउटगोइंग फीडर्स में भी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक एडिशनल डिवाइस ला, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स कम पड़ रहे हैं, तो हम उसमें एडिशनल डिवाइस लगा रहे हैं. ये लास्ट में है सर, देखिए एसीएल मैनेजमेंट रिले लगाया है हमने 851. सो ये मोटर्स के केस में लगाया है, और जो बाकी में जिसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है वो 0.5 लाख में ही हो जाएगा आपका. Sir, the main thing is that वहाँ भी सेंसर यूज किया, आप भी सेंसर यूज कर रहे हैं. सेंसर सेम रहेगा, सेम रिले में ही हम इंटीग्रेट करने के लिए कॉस्ट सेव कर रहे हैं. वहाँ पे न्यूमेरिकल रिले में इंटीग्रेटेड नहीं है ये? नहीं सर, वहाँ पे किया है, बट उन्होंने एक ही इनकमर, एक ही आउटगोइंग, एक ही इनकमर में ट्रायल के लिए किया है. that is also, I have seen the PO and everything, that is also quite high as compared with what we have got the budget offer. This is the equipments directly they are providing. नहीं मतलब concept same है जो आप अभी बता रहे हैं. Concepts are, but they are just for the vendor, I think they have installed, but from this one we have implemented for the outgoing as well as incomer. We are safe zone, we are creating the safe zone of the history switchgear. बेसिकली फर्स्ट आप जो इनिशिएट में देखेंगे तो जो वीडियो में जो इनिशिएशन हुआ एक ही पैनल से, बट इट हैज़ बीन स्प्रेडेड ऑन सेकेंडरी डैमेज. इट्स अ ह्यूज हाई एंड इट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉस्टिंग मोर. If you compare with the 20 lakhs of the single panel, already our PO is there. We have recently purchased 7 panels as a capital spare. 20 lakhs it is coming for a cost single wise panel. okay, जो भी है अभी तो जैसा वैसे ही आएगा. Yes. ठीक है, thank you. And also LT also we are it is easy, sir. कूलिंग टावर्स और Ash handling where more जहाँ पे ज़्यादा flashers are going ahead. वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं LT फीडर्स. Okay, thank you. Yes. 25. Yeah. Next, before. Yes, sir. Can play it. It is a testing. मैं समझ गया. With and without है ना? Yes, sir. This is with. Just a test fault is. You should mention here in percentage how much kilocalorie per centimeter square you have saved. The next one. Yeah, that one next in the next slide we have converted. हाँ sir, next one. ये 10 किलो एम्पियर के लिए था सर. This is simple. Yeah, this is the incident energy of 23 to reduce हुआ तो 78% reduction आया. Reduction हो गया. And 4.7 the arc length it has been reduced around by 65%. Sir, only the things the exposure and sir, actually it is only one company is providing in the US based companies, not in the involved in the India. Last 4 years only it has been come to the India,
and also one or two only very limited OEMs are there. But one of the, we have consulted the OEM, he is given the best solution as a 3 milliseconds. And remaining other OEMs are giving 10 to 15 milliseconds. That means that is a quite high. That means this percentage may come to only 10 to 20% only that will come, because ARC is exponential. Cost, no sir, this is the best sir, even though from the, this is the best from this one. Main thing, sir, our main observation is that the environment, we have to create the environment so that many people will work not from the measurement purpose and some other purpose. The people who only maintenance purpose also will be there. If anything happens in the site, they will be get panic. Some people will may get, to provide the safe environment, we are coming on. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Team Yes, sir. Omega. Last slide is there, sir. Last slide. Last presentations. Yeah. These are the presentations we have provided. Yes, sir. Yes, sir. एक सर नेट जीरो एनर्जी का भी Already अवार्ड हो गया start हो गया, sir. सोलर का Net zero means टाउनशिप का एनर्जी फ्लो शुड बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इट शुड नॉट कंज्यूम what are the township consumption will be renewable energy solar panels what we are installing. With the, we are compensating the colony energy with this one. Already 1 megawatt is already there, and 1 more megawatt is going to implement. Maybe in the within 2 months, or awarded by the NVVN. Yes, sir. Solar panel in all the B type, C type, and even for the offices also we have installed. Rooftop. Yes, sir. Rooftop, and also floating is in the proposal stage only. Floating our reservoirs, floating solar on the reservoirs. That is also within a year, maybe that may be the complete. It is a proposal is given to the NVVN. Sir, ये PPEs जो है sir, use of PPEs means the quality of the PPEs, how to ensure the awareness. We are giving the some proper checking, sir, every week, and the JSC and also implemented. Sir. Yes, yes, sir. Sir, at the time of isolation normalization, as per standards, normally in the switchgear itself, we have to be where it is. आपको बिना आरप्लस के चलना अलाउड नहीं है बट हमारे यहाँ कैसे होता है इधर एक सेक्शन है इधर एक सेक्शन है आदमी हर समय आर्क प्लस पेन के रीडिंग लेने भी जा रहा है तो बिना आर्क प्लस के जाता है भाई ये इंप्लीमेंट करने से आपका वो एटलीस्ट वो सेफ हो जाएगा अभी क्या है सिर्फ आर्क आइसोलेशन रैकआउट के समय ही पहन रहा है वो आप नॉर्मल जा रहे हो रीडिंग लेने जा रहे हो उस समय कहीं बगल वाले में फ्लैश ओवर हो गया तो वो एक खतरा है जिससे ये टेक केयर होगा Thank you. Thank you, Team Omega. Our next team is Samarth of Gadarwara. Team members are Ravi Rituraj, Sanket Basu, Biju Singh, and Avinav Agarwal. Team Samarth, Gadarwara. Sample है, हाँ sample है sir, just for your reference. Second one sir, we have implemented a project at Gadarwara, just for your reference. बताइए सर, वो अभी आपने जो बताया था सॉफ्टवेयर वाला, ये सर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, अब दिखाइए, ये वाला है, इधर से, ये दिखा रहा है, माइक लगा जिसको मैंने बोला था फिंगर वाली बात pointer तुम्हारे पास हेलो है नहीं ऑप्शन कौन से वाला दिख रहा है ना आप वैसे करिएगा नहीं कुछ नहीं एक ट्राई कीजिए
Team Samarth, Gadravara. So we will start. Good morning. We are Team Samat from NTPC Gadravara representing at regional level PC 2024. Our topic is industrial communication and intelligent tracking. Basically, it's not a topic, it's a journey we have taken in Gadravara in the past year, and this is only a showcasing of the project that is a part of our journey. Our team members is Ravi Rituraj, Avinav Agarwal, Biju Singh and myself Sanket Basu. Now this is a basic evolution of Team Samat. We have represented multiple trophies in Vendam Conference PC. We are position holders in the PC in station level, in regional level also. And the best part is that every project is an implemented project and pilot projects are already proved in everything. Now we have taken a PDCA approach for our topic, that is Plan, Do, Check, Act. So the topic safety, the paramount in NTPC. Looking in the safety framework, there are two pillars basically that NTPC focuses. One is standardization, one is behavioral aspect. What comes under standardization? Administrative initiatives, that is B2W system, Suraksha app, 24/7 CCTV surveillance, mobile phone ban, etc. And within behavioral aspect, what comes? Safety, motivational gifts and all the pep talk training and all things come. So, but the major concern is why unfortunate incidents are still happening. हम लोग देखे टांडा में रिसेंटली, गादरवाड़ा में रिसेंटली मिसअप हुआ है, फैटल हुआ है, सब कुछ प्लेस में था तब भी हुआ है, तब की सिस्टम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंसिडेंट हुआ है, तो क्यों हो रहा है? सो देयर इज अ वीक लिंक प्रेजेंट दैट वी हैव टू थिंक ऑफ. So what is this weak link? That is technology. It's basically a gray area in our company. Our company is focusing, but we have to more involved in this technology portion. So जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है, पहला क्वेश्चन जब कमेटी कोई भी होता है पूछता है जो लड़का है, जो वर्कर है, वहाँ पे क्यों गया, कब गया, ये पहला क्वेश्चन रहता है सर. तो कुछ एनालिसिस किए हम लोग, जो आदमी है उसका कोई रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता सर. उसका जो कंट्रोल है, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जिसमें वो आदमी को जाना ही नहीं था, उसको भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है. नो कंट्रोल ऑन अनटाइमली एक्सेस. सपोज रात के टाइम उस आदमी को वहाँ पे जाना नहीं था, लेकिन वो गया, क्यों गया, कोई कंट्रोल नहीं उस पर. एंड द फोर्थ वन इज टू मच ह्यूमन डिपेंडेंस. सब कुछ बर्डन ह्यूमन डिपेंडेंसी में सेफ्टी रिलेटेड. नाउ विल वेलकम Abhinav. We are Team Samarth and we are committed towards providing a fail-safe solution. So as we have analyzed the problem, now we will approach the solution. The first thing is that we will know what are the requirements. So first, our first requirement is outdoor tracking. हमें एरिया जैसे स्टॉक यार्ड CHP में ऑफसेट एरिया, वैगन टिपलर जो कि ओपन एरिया है, GPS जहाँ पे चलता है वहाँ पे हमें ट्रैकिंग करना है. सेकेंड इज इंडोर लोकेशंस जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे प्लांट के अंदर, जिसमें GPS काम नहीं करता है. एग्जाम्पल हमारा बॉयलर स्ट्रक्चर, CHP TPs, MCCs एंड TG बिल्डिंग. थर्ड वन इज़ प्लांट एरिया बहुत बड़ा है हमारा, तो जो भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे सेंसर से उसको रिले करना है सर्वर में. तो बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि लंबे डिस्टेंस के लिए काम करे वो हमें चाहिए. नेक्स्ट इज़ हम चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम लो एनर्जी कंज्यूम करे, एनर्जी एफिशिएंट हो, ताकि फ्रीक्वेंट चार्जिंग रिक्वायरमेंट ना रहे. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हमारा जो भी हमारा ट्रैकिंग डिवाइस है अगर वो इनएक्टिव है बहुत टाइम से, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि अगर वर्कर को कुछ मिसहैपनिंग हो गया या फिर वो ट्रैकर कहीं पे रख के चला गया, इन दैट केस हमको इसमें अलर्ट आना चाहिए. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल जियो फेंसिंग. बेसिक आइडिया इज़ दैट कि अगर कोई वर्कर CHP के लिए ऑथोराइज्ड है, अगर वो मेन प्लांट जा रहा है जहाँ के लिए वो ऑथोराइज नहीं है, तो ये हमारा जियो फेंसिंग के अंदर ट्रिगर जनरेट होगा हमारा सर्वर के अंदर. लास्ट इज हमको एक ऐसा यूज़र इंटरफेस इजी बिल्ड करना है जिसमें दो चीज़ें होंगी मेनली. एक, हम लोकेशन ट्रैक करेंगे पर्टिकुलर वर्कर का. दूसरा, हम मॉनिटर करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशंस जिसमें हम ये पता कर पाएंगे कि उस लोकेशन में कितने वर्कर्स एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं. इसी के आगे बढ़ते हुए हम जब अवेलेबल मार्केट सॉल्यूशंस में जाते हैं तो हमने जो एनालाइज किया है, जो रिसर्च किया है इंटरनेट से, उसमें देखा है कि आउटडोर ट्रैकिंग है उसके लिए बेसिकली GPS इज द सोल्यूशन, जो बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं. एंड फॉर इंडोर ट्रैकिंग जो है मल्टीपल कंपनीज आर डूइंग विद मल्टीपल सॉल्यूशंस. सो सम सॉल्यूशंस आर ब्लूटूथ, BLE, वाईफाई, अल्ट्रा वाइड बैंड एंड RFID. And for long range communications, mostly all companies are using LoRaWAN, that is long range wide area network. So the hardware part that is manufactured by some of the companies, and in India also some companies are superimposing their software capabilities on these devices only. So what we have chosen, GPS because it is good for outdoor tracking, and BLE because it is a
low cost and very energy efficient. And third is LoRaWAN because its range is very high, approximately 10 kilometers. Okay, so now having gone through the concept, now I would take you through the components that we have used in our project. So first one is BLE beacons, Bluetooth Low Energy. Basically, it is a periodic address laying device for location identity, which usually have a battery life of around 3 to 4 years. Then comes with trackers. Trackers function is to continue scanning of available BLE beacons and GPS and send the location data to gateway. And then comes the gateway, which basically receives the information from trackers through LoRa communication networks, which operates in frequency band of around 865 megahertz, which is basically free in India, and and transmit the data to servers. Then comes our centralized data processing unit and storage, which relay data to HMI. Then comes dedicated HMI for visual depiction and monitoring of the events. And the beneficial aspect of all these devices, neither SIM or internet connectivity is required for functioning of these devices. Next. So now understanding the process flow. Let's say Bluetooth beacons are installed in a GPS denied environment, and the operator with trackers enters that particular area. Once the tracker operator enters, the trackers would sense the address of BLE beacons, and it would relay the information to gateway through LoRa communication networks. And then in turn, LoRa communication would send the data to server for processing and storage, and which would basically be reflected in dashboard on timely manners. And accordingly, the alerts and annunciation would be generated. So now I invite Ravi sir to continue. Okay, sir. Now having discussed the overall idea of the entire project, now how we approach this project, the first thing was about hardware procurement. In hardware procurement, what we did, sir, there are market players. What we have done, we have purchased few trackers and beacons from the market that is available, predominantly by Chinese players. Then we have set up a LoRaWAN gateway. The purpose is to send the beacons data. The beacons data is read by tracker and sent to the gateway. Then we have developed our own dashboard. So this is how the entire thing looks like. The tracker is having a panic button also that we have already been discussed. Next, the second thing after procuring the hardware was testing part. This is very important part because what we did, we have tested the beacons individually. Sir, हमने हर एक beacon का range test किया है कि हमें कितने beacons कहाँ लगाने पड़ेंगे एक overall mapping के लिए, इसके लिए range test हमने किया है. और not only that, हमने अपने trackers का सर जो GPS capability है outdoor locations के लिए, उसका आप ये देख सकते हैं सर गाडरवा टाउनशिप एंड प्लांट एरिया में हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ हम मूव कर रहे थे वो लोकेशंस हमें मिले हैं. आफ्टर दैट सर दिस हार्डवेयर टेस्टिंग पार्ट इज डन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज हार्डवेयर इंस्टॉलेशन पार्ट. यहाँ पे हमने एक्चुअल फील्ड पे जाके बीकन्स लगाए हैं अलग अलग लोकेशन पे. सर हमने वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग इन एज अ पायलट in unit 1 area. We have placed the beacons in almost all the switch gears like 12.5 meter, 3.5 meter. GT area we have covered. We have covered the porta cabins of operators. We have given the tags to the operators and we are monitoring their movement across the unit 1 locations. Boiler भी हमने cover किया हुआ है सर इसमें. Next part था सर इसमें कि local network setup. Because सर एक question जो हमेशा आता है NTPC का कि we don't want to share our data outside. तो हमारा जो मेन प्राइम कंसर्न था इसमें कि हमें अपना लोकल सर्वर खुद सेटअप करना था. तो यहाँ पे हमने सर ये एक्चुअल फोटोग्राफ है CCR रूम का, जहाँ पे ये जो सर आप देख रहे हैं ये गेटवे है हमारा. दिस इज माय गेटवे, द LoRaWAN गेटवे. एंड उसके बगल में जो रखा है रास्पबेरी पाई, दिस इज द सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जिस पे हमारा सर्वर रन कर रहा है सर. देन एक कस्टम डैशबोर्ड हमने ट्राई किया सर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को हमें प्रूव करना था, हमें देखना था कि हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये काइंड ऑफ डैशबोर्ड है सर जिसमें हम ऑपरेटर्स का लोकेशन स्टेटस यहाँ पे देख पा रहे हैं. फिर ब्लैकलिस्टेड एरियाज, हम कुछ एरियाज ब्लैकलिस्ट करके हमने चेक किया कि क्या ऑपरेटर वहाँ जाने से हमें पता चल रहा है क्या. और तीसरा था कुछ क्रिटिकल वर्क एरियाज के लिए लोकेशंस हम डिफाइन कर पा रहे थे. इसमें सर लास्ट जो था वो था कि डेटा की टेस्टिंग और विजुअलाइजेशन. दिस वाज एक्चुअल फील्ड वीडियो दैट वी आर गोइंग टू शो यू. सर ये एक वीडियो है जिसमें एक ऑपरेटर मेरा स्विच गियर में 12.5 मीटर पे है, देन ही गोज टू 3.5 और क्या स्टेटस आता है. फ्रॉम 12.5 मीटर स्विच गियर यूनिट 1. अभी हम लोग के साथ नीलेश है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर, जिनके पास ट्रैकर है और वो अभी यूनिट 1 की डीसी-डीवी का इनकम और 1 का वोल्टेज एंड आउटपुट ये सब चेक कर रहे हैं. तो आपको वहाँ पे लोकेशन दिख रहा है नीलेश का?
सर इन द साइड दिख रहा है नीलेश का हाँ नीलेश का लोकेशन मेरे पास आ रहा है यूनिट 1 12.5 स्विच गेयर कंफर्म कर दे रहे वीडियो के साथ। सर ठीक है सर, अभी हम लोग बॉटम यहाँ वन से इज नीलेश 12.5 मीटर से हम लोग यूनिट 1 के 3.5 मीटर स्विच गियर में जाएंगे और चेक करेंगे कि नीलेश का जो है लोकेशन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। नीलेश आप आ जाइए। So in the side pop-up window, you can see the raw data that we are visualizing from the trackers. अभी ऑपरेटर से जा रहा है इसमें ये लोकेशन चेंज करने पे हमें रियल टाइम स्टेटस मिल रहा है हमारे डैशबोर्ड पे, ये डिस्प्ले किया हमने। सर ये अब 12.5 से 3.5 मीटर पे जा रहा है हमारा ऑपरेटर। द मोमेंट ही एंटर्स हमें डेटा सर अभी मिलेगा। हम लोग यूनिट 1 के 3.5 मीटर यानी HT स्विच गियर में घुसने वाले हैं। तो हम लोग अभी आ गए, हम लोग के साथ नीलेश भी है। तो ये हम लोग का जो यहाँ पे बीकन लगा हुआ है, नीलेश आपका रीडिंग ले रहा है अभी सर यूनिट 1 की 3.5 मीटर की स्विच गियर में HT स्विच गियर में हम लोग सर। तो आपका लोकेशन नीलेश का क्या दिखा रहा है? So dashboard is showing now HT switch gear Nilesh Okay, sir. for Nilesh. Now in the second video what we have done that we have blacklisted area for operator कि वहाँ उसको नहीं जाना है and अगर वो वहाँ जाता है तब क्या होता है ये देखते हैं सर। संकेत फ्रॉम यूनिट 1 GT पे GT जनरेटर ट्रांसफार्मर में पे अभी जो कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन है राम सिंह जो कि हाउसकीपिंग से है, वो अभी इस एरिया पे एक्सेस करेंगे। तो आप देखिएगा आपके वहाँ पे उसका लोकेशन ट्रैक करके क्रिटिकल एरिया बोल रहा है कि नहीं। मैं क्रिटिकल एरिया डाल रहा हूँ जनरेटर। यस मेरे पास आ रहा है सर राम सिंह इज एट ब्लैक लिस्टेड एरिया। ये हमारे डैशबोर्ड एक अनाउंस कर रहा था। तो सर ये एक डेमो वीडियो था जो बता रहा था हमारी कैपेबिलिटीज़ को। नेक्स्ट सर ये एक जस्ट आउटडोर ट्रैकिंग का हमने देखा सर, नॉट ओनली प्लांट प्रोमाइसेस, हमने बहुत दूर तक भी हम गए हुए हैं एंड सरप्राइजिंगली सर एक लोरा वन गेटवे सर जो हमारे प्लांट में हमने लगाया था दैट इज कवरिंग गिविंग अस अ रेंज ऑफ अबाउट 15 किलोमीटर सर। एक गेटवे से हमारा काम हो जा रहा है। So now coming to the practical use case, we are happy that we have done the proof the pilot project। हम लोग 1 महीने से पूरा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यूनिट 1 में। नाउ द प्रैक्टिकल यूज केसेस है, कोई भी प्रोजेक्ट का कुछ यूएसपी होना चाहिए कि वो ग्राउंड रियलिटी में पॉसिबल है और क्या क्या पॉसिबल है। सो फर्स्ट टू थिंग इज क्रिटिकल एरिया एक्सेस, एग्जांपल स्विच गियर जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं वीडियो। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया मॉनिटरिंग जो कि हाइड्रोजन प्लांट स्विच यार्ड हो गया 765 की है, उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइम बेस्ड मैन पावर मूवमेंट मॉनिटरिंग जो हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेज में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ एरिया है सपोज रिजर्व है जिसमें आदमी को रात में जाना नहीं है, तो उस एरिया को हम लोग डिफाइन कर देंगे कि रात में कोई भी आदमी कोई भी ट्रैकर जो लेके जाएगा और तुरंत बोलेगा कि अनसेफ एरिया में रात में घुसा है और हम लोग को एनोसिएशन मिल जाएगा। ये हम लोग अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है पैनिक बटन फॉर इमरजेंसी, आपके टेबल में रखा है जो बीच वाला बटन है दैट इज पैनिक बटन। व्हेनेवर इज एन ऑपरेटर इन इमरजेंसी फ्लैश ओवर हो गया ही विल प्रेस द पैनिक बटन, विल गेट द एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे हुआ है। एंड अनदर थिंग जो है इसमें गाइरोस्कोपिक एक्शन है सर। अगर कोई आदमी जैसे क्वेश्चन आया था प्रीवियस में हार्ट अटैक होके वो इनएक्टिव हो गया है, अगर इसमें हम लोग टाइम सेटिंग अभी कर रहे हैं वो कैलिब्रेशन कितना टाइम देना भी डिस्कशन में, सपोज 2 मिनट तक वो ट्रैकर हिल नहीं रहा है तो इट विल सेंड एन अलार्म, नहीं ये ट्रैकर इनएक्टिव हो गया है आपका, तो समथिंग इज रॉन्ग। सपोज ऑपरेटर खोल के ही चला गया कुछ करने, सो वी शुड गेट, ये तो बेसिक पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और है कि हिस्टोरिकल डाटाबेस, जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है कि आदमी कब कहाँ गया था कैसे पता चलेगा। सीसीटीवी तो हर जगह है नहीं, बस इसमें टाइम स्टैंपिंग सर्वर में हर चीज़ लोड होता है और सब कुछ हमें टाइम स्टैंपिंग के साथ मिल सकता है जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखे। अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग कर रहे हैं मैन पावर मॉनिटरिंग बाय मेंटेनेंस, हम लोग अभी मेंटेनेंस के साथ टाई अप कर रहे हैं कि ओवरऑलिंग और नॉर्मल पीडब्ल्यू में वाया पोर्टेबल बीकन्स हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस सपोज पर्पस। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट महीने में करेंगे मिल की ओवरऑलिंग चल रही है। तो 2 चीज़ होता है कि ड्यूरिंग पीटीडब्ल्यू एंड आफ्टर पीटीडब्ल्यू। ड्यूरिंग पीटीडब्ल्यू अपना ईआईसी देख पाएगा जो ऑथराइज्ड एक्सेस जो ट्रैकर्स है वो रोटरी पार्ट्स का ही आदमी है कि नहीं, कोई प्रेशर पार्ट का आदमी नहीं चला गया है। आफ्टर पीटीडब्ल्यू परमिट कैंसिलेशन हो गया, उसमें कोई भी आदमी उसके पास है नहीं, वो पूरा चेक कर पाएगा। सो हम लोग मेंटेनेंस के साथ अभी टाई अप करके मेंटेनेंस के लिए भी यूजफुल करके प्रूव करेंगे सर। नेक्स्ट है एसेट ट्रैकिंग, सपोज मेरा शिफ्ट जीप है हेवी मशीनरी डोजर से कहाँ कहाँ प्लांट में घूम रहा है, इसको भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद मेंटेनेंस वाले में हम इस टॉपिक को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि मेरा शिफ्ट जीप मूवमेंट कहाँ पे मेरा शिफ्ट जीप रात को घूम रहा है हम लोग इजीली पता कर पाएंगे इससे सर। अभी हम लोग आते हैं सर फ्यूचर प्लानिंग में। अभी क्या है यूनिट 1 में हम लोग पूरा इंप्लीमेंट कर दिए, अभी हम लोग मैनेजमेंट हम लोग को अप्रिशिएट भी किया है एंड वी आर इंप्लीमेंटिंग गो फॉर अदर एरियाज। पहले हम यूनिट 2 में करेंगे, देन इन क्रिटिकल ऑफसेट एरियाज लाइक सीएचपी टीपी पॉइंट्स एंड देन इन द अदर एरियाज लाइक डीएम प्लान ऑल। सेकेंड जो है सर अभी जो हम लोग का है रियल टाइम लोकेशन मॉनिटरिंग है,
इसको हम शिफ्ट करके ग्रिड ऑफ ब्लूटूथ बनाएंगे, उसमें हम लोग का रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग होगा। बेसिकली हम लोग हर 2-3 मीटर प्रिसीजन में वी कैन ट्रैक एवरी वर्कर्स मूवमेंट बाय अ ग्रिड ऑफ ब्लूटूथ। ये हम लोग का नेक्स्ट लेवल रहेगा प्रोजेक्ट का। जो फोर्थ है सर कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग। सपोज मेरा आदमी चला गया गलत जगह पे, आदमी को तो पता नहीं चल रहा है, हमें पता चल रहा है गलत जगह में चला गया, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि वो गलत जगह में है? तो हुटर बजना चाहिए या पीएस सिस्टम से रिले होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको आगे के लिए सोचे कि पूरा लोकेशन ट्रैकिंग के तरह सीसीटीवी, आरएफआईडी, पीएस सबको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बना के हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। एंड लास्ट जो है, जो मेन पार्ट है, ये एकदम लास्ट में आता है क्लीम्स का इंप्लीमेंटेशन, जो कि ओनरशिप दिया जाएगा अपने इसको कि वो अपना क्लीम्स के साथ इंप्लीमेंट। ये अपना सर कॉस्ट एस्टिमेशन है हम लोग स्टेज 1 के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए, ये 2,20,000 5,000 है। तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगा तो हाइक होगा, लेकिन हम लोग को खुद प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग इसका कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए अप्रूवल बढ़ाए है सर। स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑलरेडी वन station has already discussed, so statement is common, problem statement. Scalability and replicability definitely and yes sir. Thank you sir. नहीं, इन अदर वर्ड्स मैं पूछता हूँ, जो सर पूछ रहे हैं कि एक कार्बन टीम थी ना खरगोन की, इन व्हाट मैनर योर दिस प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट देन दैट? तो इफ यू कैन हाईलाइट द डिफरेंसेस, देन सर के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। श्योर सर। दो तीन चीजें हैं सर इसमें। ऑडिबल सर इसमें क्या है कि बीकन्स और ट्रैकर्स ये अवेलेबल है मार्केट में सर, थर्ड पार्टी चाइनीज प्रेडोमिनेटली यही बना रहे हैं। बट सर ट्रैकर की जो जैसे प्रीवियस टीम ने बोला, वो हमने भी सर एक बार जो टाटा कम्युनिकेशन से बात किया था, दे हैव गिवन अस अ कोटेशन ऑफ अराउंड 15 लाख। 15 लाख इज अ बिग अमाउंट सर। हमें ये भी पता कि ये हमारे सिनेरियो में कैसे काम कर रहा है। तो हमने क्या किया सर, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम आईओटी रिलेटेड प्रोजेक्ट करके आए हैं पहले से, तो हमने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए और इनका एक्चुअल फील्ड टेस्ट किया है, डैशबोर्ड हमने खुद बनाया। इन्होंने जो रॉ डेटा है सर, जो ट्रैकर भेजता है, उसको हमने एनालाइज किया। तो इससे सर हमें एक दो चीजें समझ में आ गई है कि मोर सभी चीजें एक ही बेच रहे हैं, बट अंदर में क्या है सर, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल हम बना सकते हैं सर इस ट्रैकर्स को, कोई उतारता है तो हमें पता चल जाए, अलर्ट आ जाए हमारे पास। तो इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं सर। कुछ सेंसर्स हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से। तो इसमें पहला स्टेप ये था कि सर हम खुद करके देखिए एक बार, समझे उस चीज को लगाओ, देन फिर मार्केट में बहुत प्लेयर्स हैं, उनसे हम रीच आउट करें। कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट है सर। और इंडिया के बाहर काफी ज्यादा इंप्लीमेंट हो रहा है। इंडिया में भी कुछ जिंदल के प्रोजेक्ट्स और अदानी में इंप्लीमेंट हो रहा है। मेरा टेंशन ये है कि बार बार आप चाइना का नाम ले रहे हैं, तो चाइना आपके ऊपर अगर कुछ लटकाता है तो डाटा पूरा अपने पास रखता है, तो हमारा भारत उससे कैसे बचेगा? नहीं सर, जनरल क्वेश्चन है सर। हम सिर्फ सर हार्डवेयर पार्ट ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर हम उसका यूज नहीं कर रहे। हार्डवेयर में भी तो कुछ ना कुछ ऐसे डाल के देता है। वो नॉर्मल कंट्रोलर्स हैं जो ESP32 माइक्रोकंट्रोलर्स इंडिया में भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमने उससे भी ट्राई करके देखा है सर, हमने दिखाया नहीं। जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था सर, इसमें हमने एक मोबाइल डिवाइस बनाया था, इसमें वो कैपेबिलिटीज थी हमारी। और सरप्राइजिंगली सर हमारे इस प्रोजेक्ट के बाद वेंडर आया शीतल वायरलेस करके, सिमिलर प्रोडक्ट लेके आया। तो इसमें भी हमने वो कैपेबिलिटी लेके आए थे, हम इस प्रोडक्ट में भी था वो। मतलब मेरे कहने का मतलब है जल्दी से जल्दी चाइना से छुटकारा मिल सकता है कि नहीं? मिल जाएगा सर, मैंने पिंड छुड़ाना है उससे। मिल सकता है। ओके, दूसरा एक और ह्यूमन बिहेवियर की बात है। अब जैसे किसी के इसमें पट्टा बांध दिया आपने, वो अपने किसी फ्रेंड से भी मिलने गया तो वो चिल्लाने लगा, वो है ना। और बाद में थोड़े समय के बाद ये स्थिति आएगी कि जो आदमी पहना हुआ है उसको गुस्सा आएगा, उतार के फेंक देगा वो। उसको कैसे करोगे हैंडल? सर इसमें फॉर्म फैक्टर चेंज कर सकते हैं, हेलमेट्स पे माउंटेड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स में आ जाता है सर। आप आईडी कार्ड के फॉर्म में ले सकते हैं, आप हेलमेट माउंटेड ले सकते हैं। इसको सर हम लोग प्लान कर रहे थे, इसको RFID से इंटीग्रेट कर दें। और सर प्लांट एरिया में जब ऑपरेटर मूव कर रहा है हेलमेट पहन के, तो RFID से भी हम अलर्ट जनरेट कर सकते हैं, रूटर्स प्लेस कर सकते हैं। तो हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी सर, हम मेरा एक पॉइंट ऐड करना था। जैसे डिफरेंस क्या है, बेसिकली सर कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रूवल के लिए मैनेजमेंट मांगता है प्रूफ करके दिखाओ, नहीं तो पैसा क्यों इन्वेस्ट हो, जो कि ऑलरेडी ये बिजनेस का होगा। बॉटम लाइन टॉप लाइन इफेक्ट नहीं होना चाहिए यार। ये एक सर प्रोजेक्ट था जो हम लोग इसी साल किए थे, ये इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन था, उसी से आगे हम लोग आई कमिट पे आए। ये हम लोग एक सर इन हाउस मोबाइल डिवाइस, मोबाइल हम लोग का वॉकी टॉकी बैन हो गया था सर, सॉरी मोबाइल बैन हो गया था, वॉकी टॉकी यूज़ कर रहे थे। इतना प्रॉब्लम आ रहा था सर, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जो अपना बॉयलर की पिलर्स एंड स्विच गियर्स में इतना इंटरफेरेंस था। तो इसमें हम लोग एक डिवाइस जनरेट किए थे इन हाउस सर, सिम बेस्ड।
जो हम लोग डिज़ाइन करके खुद बना के मैनेजमेंट के सामने प्रूफ करके दिखाए थे एसएमसी में कि ये हो सकता है। तो इसमें सर मैं रवि सर को रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा वीडियो दिखाने के लिए। ये सर So हम now we लोग are calling from SIM 1, which is रेस्ट्रिक्टेड फ़ोन registered नंबर्स number. करके SC शिफ्ट इंचार्ज यूसी This बस number कॉल is कर registered सकता with है। the ये device. हम लोग ऑपरेटर को दिए थे, तो ये ऑपरेटर यूज़ करता था। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ जो वीडियो फोटो सब लोकल से शेयर करता था। So we तो have got the ये सब incoming call. जैसे कॉल जा रहा है सर, अभी मोबाइल फ़ोन से ही कर रहे हैं, Okay, SC now यूसी we फ़ोन will से ही, call तो from कॉल SIM जा 2, रहा है which सर। is not ठीक है registered सर, with तो the इसके device. बाद मैनेजमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया सर थर्ड पार्टी से। तो बेसिकली इज प्रूविंग सर, सो वी हैव प्रूव्ड इट सर। मेकअप वाटर पंप हाउस कवर्ड है क्या? सॉरी सर, मेकअप वाटर पंप हाउस। राइट सर। मेकअप वाटर पंप हाउस के लिए सर हमें गेटवे अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अराउंड 30 किलोमीटर प्लस है हमारा। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक गेटवे लगाने से काम हो जाएगा सर। ये LoRaWAN टेक्नोलॉजी यूज करके सर हम विदाउट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट ठीक है सर, इंटरनेट देना पड़ेगा। अगर हम सर जो प्लान कर रहे हैं हम लोग वो ये कर रहे हैं कि LoRaWAN गेटवे डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे लगा देंगे और इन सबको लैन से कनेक्ट करेंगे सर। और तब एक लोकल सर्वर रखेंगे फॉर काकराघाट सर। उस केस में हमारा ऑलरेडी वायरलेस लिंक है, उस वायरलेस लिंक के साथ LoRaWAN को भी कनेक्ट करने की बात। और इसका फाइनल ओनरशिप किसके पास रहेगा? यानी ऑपरेशन के पास, मेंटेनेंस के पास, CHP? डेफिनेटली सर हम ट्रांसफर ऑन करना चाहेंगे सेफ्टी पे, क्योंकि ये सेफ्टी सिस्टम को एनहांस कर रहा है। हाँ। और सेकेंडली जो अनऑथोराइज्ड एंट्री हो रही है, उसका अलार्म जनरेट हो रहा है जो मॉनिटर कर रहा है उसके पास। क्या कोई तरीका है कि वर्कर के पास वो अलार्म जनरेट हो कि वो वायलेट कर रहा है? सर बिल्कुल सर, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर। हम लोग वो जो हूटर्स का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं सर, हूटर्स नहीं, उसके कार्ड में कोई डिवाइस हो जो उसको कार्ड में बजर है सर हमारा। हाँ, जो अलर्ट करे कि तुम दूसरी जगह जा रहे हो। बाकी तो सिमिलर है तुम्हारा और ओके, थैंक यू। सर एक्चुअली प्लान डिफरेंट था, हमें तो आइडिया नहीं था। सर एक्चुअली आइडिया नहीं था, प्लान डिफरेंट था, लेकिन वही हम लोग आगे बढ़े। ये सर वही दिखा रहा था सर। पिछले हम लोग सर टोटल बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, लेकिन जो अपना आई कमिट का जर्नी था, एक तो सर अपना जो पिछला डिवाइस दिखाया, उसके पहले हम लोग एक इन हाउस ड्रोन बनाए थे जो रवि सर। लास्ट ईयर की बात अगर हम सारे कैलेंडर ईयर तो सर हमने 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। एक तो ड्रोन प्रोजेक्ट था जिसको हम मंडल कॉन्फ्रेंस में भी और पीसी में भी रीजनल लेवल पे और स्टार्ट लेवल पे थे। उसके बाद इस साल हमने जो आईकॉम वो डिवाइस दिखाया था सर आपको, वो और इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसकी प्रेजेंटेशन और पेपर सबमिशन ONW में भी हुआ था, एसएमसी और ORT और अपना जो DPMs वगैरह होते हैं। इन ऑल सर 8 प्रेजेंटेशंस हमने किया है इस कैलेंडर ईयर में और 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। तो जो प्रेजेंटेशन और जो भी कंसेप्ट था आपका या जो भी इनिशिएटिव है, वो इम्प्लीमेंटेशन का क्या पोजीशन है? सर जो ड्रोन वाला प्रोजेक्ट था सर हमारा, हाँ, वो उसमें अभी हम जो लैंडिंग पैड वाला है लास्ट ईयर लेके आए थे सर हम यहाँ पे बीसी, उस पर काम कर रहे हैं। वो इनिशियल स्टेज में इम्प्लीमेंटेड है सर। दूसरा जो आई कॉमेट जो मोबाइल डिवाइस वाला था सर, वो हमारा डिवाइस रेडी है सर, हम डेमो के लिए दिखा भी चुके हैं। बट अगेन वही वेंडर एक आ गया सर सीकर वायरलेस, तो उसका PO भी जा चुका है। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, Team Samarth Gadravara. Our next team is Team Platinum Lara, and after that there will be ideation crew Lara. So before going for lunch, we will finish these 2 presentations. Team Platinum Lara members are Prashant Sagar, Kakarla Bhanu Satya Vinay, Nagmani Kumar, Naman Bajaj. Team Platinum Lara. कैसे उधर रहेंगे इधर? एक मिनट, इसमें रुमाल निकाल।
कोई नहीं, हाथ में पकड़ लें इसको। ये तो जेब में सीधी हुई है, अच्छा ऐसे रख देते हैं इसको, ठीक है। This is team Platinum, Lara. So we shall start. Shall we start, sir? Yeah, Good morning, please. sir. Please. Good morning, sir. Myself Prashant Sagar. We are from NTPC Lara. सर हमारी टीम एक्चुअली ये इसमें विनय, नमन बजाज एंड एक्चुअली नागमनी है सर। हम लोगों ने ये नॉर्मली एनटीपीसी लारा में रहते हुए और एनटीपीसी में प्रोजेक्ट्स में सर रहते हुए ये ऑब्जर्व किया है सर कि लारा जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली बहुत जल्दी आते हैं और टाउनशिप जो होता है बहुत डिले रहता है और स्लो रहता है सर, जिसकी वजह से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में तो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टू एंड फ्रो करना पड़ता है 3 से 5 साल उसके बाद। और उसके बाद भी जब जो ब्राउन फील्ड्स में भी हमारे आ रहे हैं सर जो प्रोजेक्ट्स, उसमें भी एक्चुअली क्या बहुत स्लो रहता है कंस्ट्रक्शन का सर। मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे तो ऐसा भी फील होता है कि सर मतलब कमीशन हुए भी 4 साल 5 साल हो गए पर हमारे टॉवर्स अभी भी बन रहे हैं सर कई जगह। तो इसको सर इसमें भी ध्यान रखते हुए और हमारा एनटीपीसी स्विच कर गया सर हाई राइज पे, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप सर, हम लोग वी आर मूविंग एट हाई राइज। तो हम लोगों ने इन सबको ध्यान में रखते हुए सर एक्चुअली एक टॉपिक पे चूज़ किया है सर, दिस इज़ माइवेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सर। ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है सर जो आज के टाइम में सर एक्चुअली प्रूवन है और इट हैज़ बीन एक्चुअली काम इस पे हुआ है सर बहुत सारा, और एक्चुअली इसमें ये बहुत फास्ट है सर कन्वेंशनल मेथड के मुकाबले। और जो हम लोग अगर कंपेयर करेंगे सर तो 22 माले का बिल्डिंग जिसको सर पहले 7 से 8 साल लगता था सर, आज के टाइम में इट हैज़ बीन डिलीवर्ड इन 1.5 ईयर्स सर। ये इंडिया में सर एक्चुअली कई जगह सर मुंबई में और बाकी प्रूव हुआ है सर। तो इस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग सर आगे बढ़ेंगे सर। मैं विनय को सर हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। Good afternoon, dignitaries and all respected seniors. And coming to the introduction about the Mivan construction technology, it was introduced by the European company, sir. And the main thing in this present technology was use of the aluminum formwork for to streamline the construction. We can cast the walls, columns and beams monolithically, sir. And moreover, it is more advanced and efficient construction technology. And apart from that, it can give the more strength and durability of the structure through this technology is very high, sir, compared to the conventional methods. And it is slowly gaining popularity in India, sir. Major cities like in Mumbai and Pune and Bangalore, all the residential buildings and office buildings and high-rise buildings mainly, they are adopting this technology so that they can construction will be completed within very speed. And going to the construction methodology, sir, a brief preparation and planning after foundation work, and after that placing of the reinforcement, erection of the formwork, and pouring concrete and removal, sir, and after finishing. This is the generally conventional method. Mivan construction, the reinforcement is more or the same, sir. But in this we use reinforcement in walls also, so that the strength will be more. And after that, the erection of the from formwork, sir. It involves 3 stages, sir. In stage 1, there will be a checklist, sir, so that to ensure that all the openings and everything, the beam dimensions, everything is same. And in the stage 2, the selection of the formwork is main, sir, so that we can reuse the formwork nearly 200 to 300 times, sir, so that it will be cost effective. And after that, it is the pouring of the after the completion of the formwork erection, the monolithic pouring of concrete, it will like this type, sir. Second image, we get the monolithic full walls and beams and columns, we can cast monolithically. And this is the after the completion of the concreting and finishing, sir. It is we got this image from the Google. It is the finished after finishing resulting structure, sir. It has more accurate and smooth and finished, sir.
After that, I hand over this to my colleague Nagmani. Good morning to one and all. Coming to the advantages of MyVent technology, one of the major advantages is the speed of the technology. When we are using traditional conventional methods, we have brickwork, plaster, etc. But in this MyVent technology, there is no brickwork involved and plaster is also not there. This way, we can reduce the time of construction up to 30 to 40%. And if we have high-rise buildings of symmetrical structures, like if high-rise residential buildings where the one flat is superimposed to all the other floors, there the time can be reduced up to 50 to 60% also. And since there is no brickwork and plaster involved, the overall cost of the structure also comes down. In some research papers, it has been found that the overall construction cost has come down to 12 to 15%. Also, the reusability of this aluminum formwork is very high, up to 200 times we can use it. And also it is recyclable, so it is much more eco-friendly compared to the conventional. The whole construction technology involves monolithic construction. All the walls, columns, beams are cast at once, so there is no joints in the structure. This way, the structure has more strength and durability compared to the traditional one. Also, we have in this structure, the walls are cast of RCC, which is shear walls. So the seismic resistivity of the structure also goes up. Next, we have limitations of the MyVent technology. In limitations, one of the major limitation is that since we have a monolithic structure here, so in future, if we try to modify this structure, it is very difficult. Also, the aluminum is costly, so the initial cost of the construction is higher, but however, since it has higher usability, in the overall cost, it is always lower than the traditional one. Also, this is a new technology, so skilled laborers are required for this work, and we need to train our laborers for using this technology. Next. This is a rough comparison between MyVent technology and brickwork construction methodologies. If we see this, there are only 2 points of limitations in MyVent. One is the flexibility in design, that since we have monolithic structures of RCC, it is hard to modify it. And second one is the availability of skilled manpower. Other than that, if we see speed of the construction, durability, strength, maintenance, quality, no plaster work involved, all these are much more better than the conventional one. Thank you. Now I hand over to Naman for the slides. Thank you, Nagmani, and good morning, everyone. So now we come to cost analysis and time analysis of the MyVent technology compared to conventional technology. Sir, in MyVent and conventional technology, building foundation is same in both the technologies. So cost is same for both the technology, around 5 lakhs. If we compare for a G+7 floor building, which has the floor area around 771.92 square meter, then for MyVent technology, cost of construction come out to be 4 crore 22 lakhs, and for conventional technology, it's come around 4 crore 82 lakhs. Then total cost comes for MyVent technology 4 crore 27 lakhs and conventional 4 crore 87 lakhs. So in this, we are saving the cost of around 60 lakhs, which is around 12.5% of the total project cost. For time analysis of G7 floor building, in this we are mainly saving work in our brickwork and plastering, which is 0 times in MyVent construction, and conventional it takes around 20 days for every floor and 50 days for plastering for every floor. In foundation, both are the same, shuttering around same, but shuttering removal in MyVent technology is very fast. In conventional technology, shuttering removal takes around 14 days, but in MyVent we can do it in 2 days. So it is giving us a very fast speed. And after this, there is finishing and painting, which are same in both, and for electricians and plumbing works. In a whole building, it is around 30 days for both. So there is no much difference in this. Thus, we save the total amount of days around 378 days. For conventional method, we took around 573 days, and for MyVent, 195 days. Now I will hand over to sir. Thank you very much, Naman.
सर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली माइवन टेक्नोलॉजी से हम लोग जो हाई बिल्डिंग्स हैं और ऑफिसेज है सर, इनको बहुत फास्टली कर सकते हैं। इसमें सर एक्चुअली इनका जो साइकिल है सर पर कास्ट, इसमें सबसे अच्छी चीज़ माइवन टेक्नोलॉजी की ये है सर कि हम लोग वॉल को और उसके बाद सर अपनी फ्लोर को एक साथ कास्ट कर सकते हैं सर। और इनका साइकिल टाइम जो 11 डेज है सर, इट हैज़ बीन प्रूवन। 11 दिन में, 1 महीने में आप 3 स्लैब कास्ट कर सकते हो सर। 3 स्लैब जब आप कास्ट करते हो सर, 7 मंजिल की बिल्डिंग जो हम लोगों ने लगाया सर, इट हैज़ बीन कम डाउन टू 6.5 मंथ सर, हम लोग हैंड ओवर कर सकते हैं। और एनटीपीसी में रहते हुए सर हमने टाउनशिप में एक चीज़ देखी है, वो मेरे को लगता है सब रिलेट करेंगे सर, कि जैसे ही हम लोग मतलब बनता तो है मतलब बना दिया, उसके बाद फिर सीलन का दिक्कत, उसके बाद सर पेंट निकलता है सर, उसके बाद फसाड भी एक्चुअली अच्छा नहीं रहता है सर। हम लोग पेंट करते हैं 4-5 महीने बाद, वापस हमको ऐसा लगता है कि पेंट का जरूरत है। पर जब हम लोग माइवेंट टेक्नोलॉजी में सर एक्चुअली स्विच करते हैं, तो इसमें जब ये पूरा सर इसमें प्लास्टर नहीं होता सर, सब कुछ आरसीसी पे ही होता है। जब ये आरसीसी पे होता है सर, तो एक्चुअली जो पेंट होता है उसका लाइफ भी बढ़ जाता है सर। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे जो आगे मेंटेनेंस कॉस्ट भी जो एनटीपीसी को रहता है सर, वो भी बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में सर सेफ्टी को भी हम देखेंगे पेंटिंग में, और फैसाड को भी देखेंगे सर। तो ये हुआ सर, देखा गया है कि एक्चुअली 3 से 4 साल सर आराम से पेंट चलता है सर, नॉर्मली जो हमारा साइकिल है सर। तो इसको ध्यान में रखते हुए सर हम लोग एक्चुअली टाउनशिप्स में हम लोग एक्चुअली क्या है, ये प्रपोज हम लोग किया है सर। हम लोग एक्चुअली अपने लारा में भी सर हम लोग एक रेस्ट रूम्स के लिए प्रपोजल बना रहे हैं, जिसमें हम लोग पायलट प्रोजेक्ट्स में सर हम लोग इसको कोशिश करेंगे सर कि रखने के लिए सर। एचओपी सर का है सर हमारे वहाँ, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं सर इसको। और इसमें सर हम लोगों का एक्चुअली यही है कि ये बहुत टाइम बहुत कम लेता है सर, कॉस्ट बहुत कम है सर इसका, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है सर, सेफ्टी ज़्यादा है इसमें सर। और बेसिकली क्या है कि आप एक्चुअली 10 साल 20 साल का जब नज़रिया देखते हो सर, आप 10 साल के बाद जब टाउनशिप्स को देखते हो, तो उस टाइम ये वैसी ही टाउनशिप होगी जैसी आरसीसी की आपने स्टार्टिंग में आपने ली होगी। तो ये हम लोगों के लिए और एक्चुअली एक सपने घर के तरह है सर। एनटीपीसी के लिए भी विन विन सिचुएशन है सर, और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि ये सब क्या होता है सर, हर चीज़ एक्चुअली इंटरलेटेड होती है सर। एम्प्लॉयज़ इज हैप्पी देन एनटीपीसी इज ऑल्सो हैप्पी। तो इसमें है सर। और बाकी हम लोगों ने सर इसके अलावा भी सर अपने प्रोजेक्ट्स में सर कई प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने दिए हैं सर, और वो भी इम्प्लीमेंट हुए हैं सर। हम लोगों ने सर एनटीपीसी लारा में वी हैव कंस्ट्रक्टेड सर मॉडल बाथरूम सर। हम लोगों ने एक्चुअली जो बाथरूम का कंडीशन था सर हमारे लारा में, और ओवरऑल भी मैं प्लांट में देखता हूँ सर कि जो मतलब बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है, पर क्या बाथरूम्स को बहुत निगलेक्ट किया जाता है सर। हमारे एक्चुअली एचओपी सर के निर्देश में सर, गाइडेंस में हम लोगों ने सर मॉडल टॉयलेट वहाँ पे बनाया है सर, जो कि एयरपोर्ट की तर्ज पे है सर पूरा, और इट हैज़ बीन डेडिकेटेड, और हमने बना के सर वो इम्प्लीमेंट करके दिया है सर। और वो भी हम लोग रिकॉर्ड टाइम में 1.5 मंथ्स में सर हमने कंप्लीट करके दिया, जिसमें लेडीज़ वॉशरूम का जो डायमेंशन था 12x15 एंड जेंट्स का भी सेम था सर, अच्छा बड़ा बनाया था सर। दूसरा हम लोगों ने रीडेवलपमेंट ऑफ मेन प्लांट गेट का भी देखा सर, किया था। उसमें पहले क्या था, प्लांट गेट में सर गाड़ियाँ भी खड़ी होती थी, बाइक्स भी थी सर, बहुत हेफेजाइट मैनर में रहता था। तो एक्चुअली हम लोगों ने प्लानिंग करके सर, हम लोगों ने इसको सबको आइडेंटिफाई करके सेग्रीगेट करके 4 व्हीलर्स का पार्किंग अलग सर। फिर हम लोगों ने ये भी देखा सर, हम लोगों ने नज़र में आया कि एक्चुअली जो लोग आते हैं बाहर से, उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी सर। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग क्या होता था, वो खड़े रहते थे बेचारे, ट्रक खड़ा हो गया या ट्रैक्टर खड़ा हुआ तो खड़े रहते थे सर। तो ये प्लानिंग करके हम लोगों ने एनटीपीसी लारा में इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। और सर सबके लिए एक्चुअली एक छत है एटलीस्ट, जो बाहर से आते हैं सर उनके लिए भी। तो गर्मी होती है सर, क्या कुछ और होता है तो सर वो वहाँ बैठ सकते हैं। और बाकी 2 व्हीलर्स अलग करके सर सेफ्टी में एनहांस की। और तीसरा हम लोगों ने सर यूज़ ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस इन सिविल वर्क प्रोजेक्ट्स में सर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था सर लास्ट टाइम पीसी में। और ये सर हमारे यहाँ पे स्टेज 2 लारा में सर ये इंप्लीमेंट हुआ है सर। AI बेस्ड कैमरे लग गए हैं सर, और एक्चुअली ये डिटेक्ट करते हैं पीपीज अगर नहीं पहना है तो डिटेक्ट कि इसने पीपी नहीं पहना है। और उसके बाद सर एक्चुअली ड्रोन सर्वे भी सर स्टेज 2 हमारे लारा में हो रहा है सर। तो बस वो है सर। थैंक यू वेरी मच सर फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। सर माइवन मलेशियन टेक्नोलॉजी है सर। क्या नाम है? मलेशियन टेक्नोलॉजी। ये जो आपने आखिरी के 3 दिखाए, उसमें से ऊपर वाले 2 रूटीन टाइप के हैं, कौन से वाले? मतलब वो जो बाथरूम और मेन गेट है। नहीं सर, ये जो देयर इज इट हैज नथिंग टू डू विथ योर प्रोफेशनल सर्कल, मतलब जो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं बताया ना, मेन गेट। हाँ, मेन गेट और वो वाला सर। तो वो तो प्रोफेशनल सर्कल में, हाउ डू यू कनेक्ट विथ प्रोफेशनल सर्कल दिस टू एक्टिविटी? सर इसमें बेसिकली इसमें क्या था सर, बाथरूम जो थे सर वो उस स्टैंडर्ड में नहीं थे सर, और दूसरा क्या मेंटेनेंस भी नहीं तो मतलब इट्स रूटीन काइंड ऑफ थिंग ना, जस्ट रूटीन बस अब मतलब थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, मतलब अच्छा लेवल पे उसको लेके गए सर, बस वही था ये। और सिमिलरली मेन गेट में जो आपने मेन गेट बना दिया, शेड बना दिया, या पार्किंग अलग अलग कर दिया, तो दीज आर ऑल वेरी नॉर्मल थिंग। और ये भी डिजिटल सोल्यूशन में बेसिकली आप जो क्या बताया था सर, AI बेस्ड। यस सर। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे
अभी इंडिया में कहाँ कहाँ ये सर टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है? मुंबई, पुणे, बेंगलोर सर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस भी हैं सर। कोई कहीं का पिक्चर है क्या, बाहर का, अंदर का, कहीं सर से? एक्चुअली आज के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे सर, गूगल से ले सकते हैं सर। आज के टाइम में मुंबई में सर 90% ऑफ बिल्डर्स आर गोइंग फ्रॉम माइवन टेक्नोलॉजी ओनली सर। आज के टाइम में अगर मुंबई में कोई भी बिल्डिंग बनेगा सर, तो अगर अच्छा नाम है सर, आप लोढ़ा का ले लो, अजमेरा का ले लो सर, आप कोई भी आप ग्रुप लो सर, दे आर ऑल कंस्ट्रक्टिंग विद माइवन टेक्नोलॉजी सर। 22 माले की बिल्डिंग सर एक्चुअली आज के टाइम में सर 1.25 ईयर्स में सर हैंड ओवर कर रहे हैं वो लोग। तो कितना ओल्ड टेक्नोलॉजी, कब ये टेक्नोलॉजी कब डेवलप सर ये हुआ? 1990s के आसपास आया था। 1990 में टेक्नोलॉजी आया था, पर इंडिया में एक्चुअली अभी 3 से 4 साल में हुआ सर, पर ये अभी 2 साल से पेस पकड़ लिया सर। तो पहले क्यों नहीं हो रहा था? कुछ स्टडी किया आपने, जब टेक्नोलॉजी इतना पुराना है? हाँ सर, पुराना टेक्नोलॉजी है सर। हाँ बेसिकली सर। सर एक बार इसमें देखना पड़ेगा सर, एक बार इसको सर। पहली ये कि why it is called as my van, okay, there must be some full form or something else, why my van, okay? कंपनी का ही नाम सर ये कंपनी का नाम है? हाँ, एल्यूमिनियम मैंने किसी एक कंपनी की मिल्कियत है ये टेक्नोलॉजी? यस सर, मतलब नहीं उन्होंने सर एक्चुअली डेवलप किया था सर, तो उसी नाम पे माइवेन बना सर। उसके बाद फिर सर ये कहाँ की कंपनी है? ये मलेशियन कंपनी है सर। एक्चुअली दे मैन्युफैक्चर द एल्यूमिनियम सर मेनली, सो फ्रॉम दैट दे हैव नेम्ड एज द माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सर। Okay, if you are sure, then I don't have any problem. I was thinking that van में A stands for aluminium or something like that. Anyway, हमारा जो common हमारा जो कॉमन सेंस है वो ये कहता है, और दूसरा जो नॉलेज हमारे पास आज तक है जिसमें जो कंक्रीटिंग की जाती है उसकी स्ट्रेंथ क्यूरिंग पे डिपेंड करता है। आप ध्यान दीजिए, जब रूफ की ढलाई होती है तो उसकी क्यूरिंग करते हैं, और जो वॉल होता है उसकी क्यूरिंग वैसे नहीं करते हैं, 3 दिन कर दिया या 5 दिन कर दिए, लेकिन रूफ वाली को 21 डेज करते हैं नॉर्मली। अब आपने दीवार को भी रूफ कर दिया है, पहली बात रूफ के ऊपर क्यूरिंग में पानी जमा करके कर सकता हूँ, दीवार की कैसे करूँ? और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसका स्ट्रेंथ कैसे मजबूत होगा? आप समझ रहे हैं मेरी प्रॉब्लम? सर मैं समझ गया। इसमें सर बेसिकली क्या होता है सर, डिजाइन मिक्सेस होते हैं सर हमारे। डिजाइन मिक्स हम लोग इसमें क्या होता है सर, एक बकायदा डिजाइन मिक्स इसमें तैयार होता है सर, जिसमें क्या होता है कि हम लोग सर एक्चुअली एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्यूरिंग जो होती है हमको इंटरमीडिएट टाइम्स में हमको बीच में देनी होती है। और इसमें क्या है सर, सबसे अच्छी चीज़ है कि जो लोड हमारे कॉलम्स को लेना था, हम लोग क्या करते हैं सर, कॉलम्स बनाते हैं पहले, फिर बीम डालते हैं, उसका छत डालते हैं। तो जो हमारे कॉलम्स को लेना था, क्योंकि हम 14 डेज वेट करते हैं शटरिंग खुलने का, तो इसमें क्या होता है इंटरमीडिएटली वॉल्स भी उसका लोड ले लेता है सर, तो इसलिए वो मैं समझ गया। हाँ उसका क्यूरिंग नहीं हो रहा है तो उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। आप अगर उसमें एडिटिव डालेंगे, अगर उसका पैसा लगेगा, और अगर पैसा लगेगा तो वो इस बिल्डिंग से सस्ता कैसे होगा? आप समझ रहे हैं सर? आज के टाइम में सर एनटीपीसी में भी जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं सर, M25 M35 सब एडमिक्सचर के साथ ही हो रहा है सर। आज भी कन्वेंशनल मेथड्स में भी कर रहे हैं सर हम लोग यूज। नहीं ओवरऑल कॉस्ट वाइज भी हो गया सर। हाँ 200 to 300 यस यस। बहुत कम डाउन हो गया है सर अब। हाँ उसके लिए, हाँ उसके लिए इसीलिए हम लोग सर एनटीपीसी में टाउनशिप पूरा। हाँ सर सर एनटीपीसी में तो अभी नहीं इम्प्लीमेंट नहीं सर, नहीं हो रहा है सर। सर हम लोग अपने स्टेशन लेवल पे हम लोग एक्चुअली क्या है, रेस्ट रूम्स लेबर के लिए जो ओवरऑलिंग में आते हैं सर, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत था सर। हम लोग सर इन हाउस ही हम लोग एक्चुअली अभी कर रहे हैं। महंगा तो पड़ेगा डेफिनेटली, पर एक्चुअली क्या हम लोग जैसे फॉर्म भी आप खुद बनाओगे, फॉर्म कहाँ से लेते हो? नहीं फॉर्म तो हम लोग सर बाहर से ही कोशिश करेंगे। अभी तो सर हमारा प्रपोजल में है, वहाँ इंपोर्ट करना पड़ता है? नहीं सर, ये रेडीली अवेलेबल है सर, ये रेडीली अवेलेबल है। यस 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 हाँ बस वही डालना पड़ेगा। और इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी ये है सर कि ये
और इसका सबसे अच्छा ब्यूटी ये है सर, कन्वेंशनल और माइवैन में हमको क्यों चाहते हैं कि सर माइवैन में स्विच करना चाहिए एनटीपीसी को, क्योंकि सर 90% ऑफ द प्रोडक्ट 95 जो है वो शेड्यूल्ड आइटम्स है इसमें, जो हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं। बस एक्चुअली क्या है, हमको बस उनका मोड और आइटम चेंज करने हैं कि हम लोगों को ये ना करके हमको ये करना है, और बस एक हमारा नॉन शेड्यूल आइटम जो है एल्यूमिनियम का बनेगा, जो हमारे सिविल में नहीं होता है। उसके अलावा हमारा सर जो हम यूज कर रहे हैं वही करेंगे, पर हमारा टाइम जो है सर, जो 2 साल 2.5 साल हम एक बिल्डिंग बनाने में 7 मंजिल लगा रहे हैं, उसको 6 महीने में दे सकते हैं। एक ऐश ब्रिक हम लोग यूज़ करते हैं टाउनशिप कंस्ट्रक्शन में, वो इसमें यूज़ नहीं होगा कहीं भी। इसमें यूज नहीं होगा सर। वो एक मतलब कोई नॉर्म है ना कि हमको यूज़ करना चाहिए सर। वो ऐश ब्रिक के लिए भी सर हम लोगों ने इसमें क्या है सर, जितना ऐश हम ब्रिक्स यूज करते हैं सर, वो बिल्कुल सर बहुत छोटा परसेंटेज आता है अगर हम देखेंगे ओवरऑल में। तो हम लोगों ने सर ये सोचा ऐश ब्रिक को सर, जैसे हमारे ग्रास कटिंग के लिए हम लोग जो मतलब बहुत करोड़ों के हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं उसमें दिक्कत रहती है सर, तो हम लोग क्या सर ब्रिक पिचिंग उसमें भी कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन वैसे भी हो सकता है सर। प्लांट एरिया में आप देखेंगे सर, सबसे ज़्यादा फायर हजार्ड जो है सर वो ड्राई ग्रास का है सर आज के टाइम में सर। तो एक्चुअली क्या है, वो ब्रिक्स हमारा ऐश ब्रिक वहाँ भी यूज हो सकता है सर, इसमें नहीं होगा, इसमें यूज नहीं होगा सर। इसमें नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you, team Platinum. Yes, all of it. Thank. Our next team is ideation crew. Lara. Members are Sushil Gajanan Borkhade, Deep Kumar, Shivam Dwivedi. Deep Kumar and Shivam Dwivedi. Ideation crew, Lara. So pointer है सर? कहाँ? So we will start team ideation crew, Lara. We shall start. Good afternoon, respected jury members, respected seniors, listeners, audience, and my dear colleagues. From the team ideation crew, I am Deep Kumar, Senior Manager, Boiler Maintenance from NTPC Lara, and here is my colleague, Mr. Shivam Dwivedi. He is Deputy Manager from BMD, NTPC Lara. Today's our topic is roadmap to improve boiler availability and reliability. Presentation outline is like this. First we will discuss the brief description of the boiler at NTPC Lara. Then we will discuss BTL history of NTPC Lara, where there are a lot number of BTLs, on the basis of which we have identified 4 key areas where we were facing repetitive kind of failures. We will discuss that cases in exhibit 1, 2, 3, and 4. Then we will discuss about vertical water valve modification work, final reheater modification work, conclusion, major highlights of boiler, and financial benefits. So this is the boiler of NTPC Lara. It is Doosan make, and it is balanced draft once through supercritical single reheat dry bottom outdoor type. And these are the parameters. Rear pass is the unique feature in this type of boiler is rear pass is divided into 2 passes. Rear front pass, which includes primary reheater bank, all 3 banks, and 1 bank of economizer, and rear pass. Here it includes primary superheater and economizer 3 panels. This is boiler second pass. Unit 1 COD declared commercially on 1st October 2019, and Unit 2 COD declared on 7 November 2020. Now, this is the history of total number of BTLs, boiler tube leakages at NTPC Lara.
Total 30 numbers of BTL occurred at NTPC Lara since COD. There are 4 main areas where we were facing repetitive kind of failures. And these were in 4 areas. These 4 areas are slip tube area, S-panel area, cage wall, and platen superheater. The repetitive kind of failure was occurring in these areas, which represent that there are some design, erection, or operational issues. So detailed analysis was required for mitigating these problems. This is the analysis approach we have adopted. The challenges faced. The main challenge was to find out the root cause of the BTL, that why it is occurring again and again. And being a pithead station of NTPC Lara, the pressure is to bring the unit back at the earliest possible without compromising quality and safety. Next is evaluation approach, step-by-step evaluation, how to find out the root cause of these problems, conjecture and solutions. The solution should be implementable and should not affect the generation. And what can be done to mitigate these problems? The results. We have to monitor the results after the applied solutions, so that we can have that these problems have been mitigated or not, and to what extent. Now I will hand over to Shivam Dwivedi to continue further. Okay, thank you, sir. As discussed earlier, that our pain areas are 4 areas: link tube, S-panel, final superheater, and the cage ring header. So we have analyzed these 4 exhibits in our presentation. First one is short-term overheating issues. As discussed earlier, that our second pass is divided into primary reheater segment and primary superheater segment. Both pass flue gases is controlled by bias damper. So we face short-term overheating issues in primary reheater, third row of sling tubes, also known as the hanger tubes, in second pass area. Total 6 number of BTLs observed in this zone. So what were the challenges? These failures were frequent and repeated in nature, which clearly indicates some design or the operational philosophies needs to be studied. That may be due to the inadequate thermal management, poor material selection, or insufficient cooling. Now, for the evaluation, we have sent tube sample to the NTPC Netra, and the reason was found to be the short-term overheating issues. So boiler design philosophies was studied along with the multidisciplinary team, CCOS boiler groups, and the following solutions were coined out. First, since we observed that our flue gas temperature was falling below the saturation temperature in the second pass area of lower sling tube, so opening of the bias damper above 25% was coined out to allow more flue gases to pass through and to increase the temperature above saturation temperature. Second, we have installed the thermocouples in all the sling tube, in flue gas side as well as on the penthouse dead end area. Also, we have studied the flue gas temperature profile in second pass area. We have provided slope at the bottom banks. In BHEL type of boiler, 7 to 8 degree slope is already provided to avoid the blockage due to the condensation, but here it is a 90-degree bend in their zone, so we have provided a positive slope in that area, and material upgradation was done from T12 to T22 in the failed portion. After implementation of all these solutions, there has been no further BTL in this boiler, but the zone is thoroughly inspected in every overhauling or the opportunity by no-go gauge or slope checking. Second exhibited metallurgical issues. We have faced metallurgical issues in final superheater area in penthouse section, where near the DNW joint, the SS304 Super H material was failing. The opening was as depicted as follows. It is a thick longitudinal opening without thinning of parent material. Total 4 number of BTLs has taken place in this area of similar nature. Since it is a longitudinal crack without thinning of parent material, so it clearly indicates that a micro or the macro level analysis was required to study this kind of BTL. Since there is a complexity involved to study and as well as the material procurement, so we have we send the samples to the NTPC Netra, where following research being carried out. Microstructure clearly shows the intergranular crack initiating at an external surface close to the failure location. That was close to the failure location as well as away from the failure location. Second, the material shows the sensitized authentic steel structure with increased value of the hardness. So all the sensitized
tube needs to be replaced and this is subjected to the stress corrosion cracking in that zone. But this was not possible in one go. So for the short-term measure, we have done the NDT of all the 1010 joint. Out of 1010 joint, 251 joints identified to be for the immediate replacement, which we replaced in 2021. Then after this area is subjected to NDT for all the opportunities and defective tube were replaced. But during the overhauling 24, we have replaced all the DMW joint. So this issue considered to be the solved after replacing of all the DMW joint. Third exhibit is stress corrosion cracking. Since in second pass, near the cage wall, all 4 corners is subjected to stress concentration near the cage ring header, also known as C header or the bottom header of steam cooled valve. Total 4 failures has been observed in this location. So what were the challenges? That this is a repeated and frequent failure, so it clearly indicates the inherent design flaws. But the chances of damaging of cage wall header was also there because the failure location was close to the cage wall header. Also, the identification was not, early identification was not possible because the zone is closed with the seal box with refractory packed inside. So that was also an issue. Thorough inspection of location was done after removing the seal box, after removing the refractory, and then the location was found to be the fin attachment terminal in all boiler tube failures, which clearly indicate the stress concentration at a point where the fin terminal was happening. In this picture, we can say outside crack and inside crack at the location where the fin was terminating. So we have implemented the inverted U-shaped design for the fins. Why U-shape was selected? Because it helps to distribute stress more evenly across the location. Inverted U-shaped design has been implemented in all 10 tubes on each side of the corner. And after implementation of that design, U-shape successfully implemented, then design has significantly reduced the stress concentration at the welding point, as there has been no BTL of this type in that zone. But during every opportunity, we check this by the means of NDTs. Exhibit number 4 is corrosion due to the falling edge. This is a major failure where 6 failures have taken place due to the similar nature in the first pass of the area. Since the boiler is a Doosan manufactured spiral wall boiler, where corner 1 and corner 3 is steep slope boiler. So due to the steep slope nature, there is a high erosion in corner 1 and corner 3 due to the fly ash falling. As shared earlier, total 6 failures has taken place. So what are the challenges? That the replacement of these corner bands is very complex and time consuming in nature. Also, the refractory material which we applied to these corners proven to be the ineffective from protection against the erosion. Ready-made bands were not available at that time with us. So due to, and the side-made band was not matching due to the critical bending radius. For the evaluation, we have studied the boiler design. We observed that the spiral wall arrangement result in the steep slope in corner 1 and corner 3, and the elevated velocity of the fly ash giving the erosion rate, increased erosion rate in this area. So the challenges posed by the existing design and condition, the focus was on the enhancing protection from the erosion. So the increasing the robustness of the refractory was coined out. What we done? We have implemented large size anchors in conjunction with the chicken wire mesh, thick wire mesh, and the quarter shield in that zone. Why this design was selected? Because this composite structure will enhance the mechanical bonding between the refractory and the tubes. Also, the conventional plastic refractory which we were using was replaced with a better upgraded version of plastic refractory for enhancing the bonding. After replacement of these things, there has been no BTL of this type in this area, but the station is planning to procure the wear bar panel to eliminate the issue altogether in this gym. So for the further discussion, Deep sir, please. Next is vertical water wall boiler tubes modifications. Here we were facing repetitive BTS due to crack observed in vertical water wall inside penthouse near outlet header, which can be seen over here. Detailed analysis was done and it was observed that root cause was the restriction of thermal expansion. For this, the solution was to replace this straight tube with the bent tubes. These bent tubes were fabricated at site and we replaced these straight tubes inside penthouse. After these modifications, there was no crack observed till date in the penthouse. So the problem has been resolved.
Next is the problem was continuous reheater spray of approximately 120 ton per hour in both units. Actually, this issue was from since COD, and OEM was contacted regarding this. OEM was Doosan, and final reheater modification work suggested by OEM after engineering analysis is that you have to reduce the heating surface area of final reheater by 27.7%, means removal of 3 number of innermost loops of all 67 panels of final reheater. This is the final reheater panel. Here 11 tubes are there in this panel. We have to remove innermost 3 panels, 1, 2, 3. We have removed this in both the units to improve reheater spray, and the result is that reheater spray in both units has been reduced to 0. These are the pictures of this modification work. And now coming to the conclusion, implementation of key solutions like which my friend earlier, Mr. Shivam Devedi said, adoption of inverted U-shaped fin design, real-time temperature monitoring of sling tubes, providing positive slopes, replacement of sensitized materials, enhanced protective measures in high erosion areas, and replacing of straight tube with boiler bent tubes have mitigated previously failure modes. The result of all this exercise is that we have reduced number of BTS from 14, which was in 2020-21 to 1 in the current financial year, and forced outage, which is in percentage, has been reduced from 15.3, which was in 2021 again, has been reduced to 0.47, which is the best performance of NTPC Lara till date in the history. Now major boiler highlights. BTL free operation of Unit 1 boiler for 473 days, BTL free operation of Unit 2 boiler for 401 days, and it is still continuing service to achieve new records. Final reheater modification done in both units, which has resulted in heat rate improvement of 20 kilocalorie per kilowatt hour. And right side here you can see this is the screenshot taken from our NTPC CC boiler OS site, where NTPC Lara Unit 2 is amongst the top amongst the all NTPC boilers for longest running of 308 days. Today is the 309 date. Now coming to the financial benefits. So total savings by reheater modification work in Unit 1 and Unit 2 boiler is coming around 26.7 crore per annum for both the units. And coming to the boiler tube leakage, average cost of LDO per cold boiler light up is approximately 3.2 crore approximately, considering 400 KL consumption in case of cold light up. Average cost to attend 1 BTL boiler tube leakage is approximately 4 lakhs. Incentive for 1 boiler for 1 day is 15.75 lakhs. So loss of incentive for 1 BTL for approximately 4 days is around 63.4 lakhs. Total savings for avoiding 1 BTL is coming around 3.87 crore. Hence total financial saving as compared to last year for avoiding 3 BTLs is around 11.61 crore. So thank you, sir. So this is our identification crew at a glance. Date of formation is 1/4/23, and we have taken following project in year 24 and 25 till now. Out of these 11 projects, we have implemented many of them, and the few project is in knowledge sharing type things. So that is from our side. Thank you. No, some were implementable, sir, and some were knowledge sharing. Some has been implemented already. Yes, sir. 11, total 11 projects are there. Ji. Sir, apart from 2 and one in gate changes, 5 out of 18 done, all have been implemented in the overhauling. That why I have written that. Actually, जो भी हम डिफरेंट कर रहे हैं अदर प्लांट से, तो हम लोग किटी मीट में तो शेयर होता है सर। नहीं सर, ये नॉलेज शेयरिंग नॉर्मल है, मतलब इसी का। अच्छा, एक चीज यू हैव डन वंडरफुल जॉब, मतलब थैंक यू सर। यू ब्रॉट अबाउट लॉट ऑफ सेविंग्स टू एनटीपीसी, few how many crores? 12 crores or so, 26 crores. Anyway, 26.7 crore in case of reheater modifications, and 11.61 crores in case of BTL. Yeah. So अगर सर, one thing is not clear. What is the concept behind this entire presentation? What is the concept you are trying to bring out? ठीक है सर, मैं जो सर के जो
मेन जो की टेक अवे है हमारा प्रेजेंटेशन से, जो कि अदर प्लांट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, कि अगर इन सब मिटिगेशन मेजर से अगर हम एक BTL भी अवॉइड कर पाते हैं स्टेशन के लिए, तो अप्रोक्सीमेटली इतना जो अराउंड करोड्स में हम लोग सेविंग करते हैं। तो मतलब जिस प्लांट्स में ये इश्यूज अभी भी चल रहा है और ये है, तो But they may be, reason may be different. Everybody would need to examine, send their samples to Netra and get the report and then find out some solution. Right. So Yes, it's sir. basically a routine kind of thing, na? Like it's maintenance issue, typical maintenance issue, where some kind of research is also involved and you are coming up with a solution where you are making lot of savings to the organization. सर नेत्रा जो हमको बताता है सर, वो रूट कोज बताता है। हाँ, ठीक है, उसको मिटिगेट कैसे करना है और साइट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे वो सस्टेनेबल रहेगा। एक्चुअली देखिए, ऐसा इसमें ये है कि जितना भी मैं BTS डिस्कस किया हूँ, अभी भी अदर प्लांट्स में भी BTS हो रहा है। इसमें नया में क्या है, जो हम रिफैक्ट्री एस पैनल में जो रिफैक्ट्री लगाया है उसमें चिकन वायर मैश जो नॉर्मली सभी प्लांट लगाते हैं, लेकिन हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, लॉन्ग साइज एंकर वायर मैश लगा रहे हैं। इसके अलावा जो रिफैक्ट्री लगा रहे हैं उसको सीगमेंट वाइज किए हैं। इसलिए अदर प्लांट से हमको इसलिए फ़ोन आता है कि आप लोग के यहाँ रिफैक्ट्री कैसे होल्ड हो पा रहा है इन हाई स्टोरेज एरियाज। सर 800 मेगावाट जितने बोलर आ रहे हैं उनमें सब में ये कंसेप्ट है सर, स्पायर वाल डिज़ाइन का। कुडगी है सर, गडरवारा है, हमारा दर्लीपल्ली है, सीपत में भी 660 मेगावाट में भी है ये वाला इशूज़। सर 800 मेगावाट के जितने आ रहे हैं सब में इशूज़ है, और अभी भी ये मतलब जो रिसेंट BTLs हो रहे हैं ड्यू टू एस पैनल रीजन में हो रहे हैं ड्यू टू फॉलिंग ऑफ रिफैक्ट्री। एंड सेकेंड वन इज जो एक पेंट हाउस में हम लोग क्रैक दिखाए ना सर, जो नहीं सर दुसान के भी BHL के भी हैं, BHL में भी सेम इशू है। यस सर। सर थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक रेमेडियल मेजर्स दिए। बस मेरी एक क्वेरी है कि आपने बॉयलर मेंटेनेंस को रिड्यूस किया। यस सर। आपका बॉयलर टाइम तक रन करता है विदाउट मेंटेनेंस। यस। उसके लिए जो आपने चीज़ें इनकॉर्पोरेट की वो इतनी सिंपल है कि देश के 77 साल स्वतंत्र हो जाने के बावजूद अभी क्यों कर पाए? ऐसा क्या नॉलेज है उसमें जो पहले नहीं हो पा रहा था, पहले के लोग नहीं कर पा रहे? सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया सर। सर इस प्रेजेंटेशन में एक्चुअली में हमने अपने प्रेजेंटेशन को प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में चीज़ों को बहुत प्रिसाइज डाला है, बट एक्चुअली जैसे आप रिफ्रैक्ट्री का सोल्यूशन हमारा देखें, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन इवन इन आवर SMC पोर्टल, सॉरी हाँ सॉरी सर, इसमें देखेंगे आप एक रिफ्रैक्ट्री के ऊपर दिस वन हम लोग ऑलरेडी एक फुल प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। जो मेटेरियोलॉजिकल इश्यूज़ थे उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन हम लोग दे चुके हैं। सो उन सब डिटेल प्रेजेंटेशन में अगर जाएंगे तो दीज वर वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ एंड उसमें जो हमने 50 चीज़ें आइडेंटिफाई की उसमें एक इम्प्लीमेंट की। सो वो 50 चीज़ें जो हमने उसमें 49 एलिमिनेट की, वो किस तरह से की, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का प्रॉब्लम था। बट प्रेजेंटेशन में PC के लिए हमने ऐसा टॉपिक चुना जिसमें हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर आपको दिखा सकें कि कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया है और क्या सोल्यूशन हमने अचीव किया है। इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं हो पाया, सर टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है। इसमें जो आपने लगाया उसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ, वेल नोन सिंस लास्ट 50 इयर्स। हम लोग जो रिफैक्ट्री लगा रहे हैं, पहले जो हम लगा रहे थे आज तक लगा रहे थे L1 बेसिस पे खरीद रहे थे। L1 बेसिस का रिफैक्ट्री हमारे ऑल ओवर NTPC अभी होल्ड नहीं कर पा रहा है। उसमें बहुत सारा रीज़न था, इसलिए हम लोग स्पेशली अप्रूवल लेके, सिंगल अप्रूवल लेके OEM बेसिस पे, सिंगल मतलब PSC बेसिस पे, सॉरी PSC बेसिस पे हम लोग वो रिफैक्ट्री खरीद रहे हैं।
उसको हमने ओएस को भी रिकमेंड किया है कि सर इस टाइप का रिफैक्ट्री लेना है। और अभी मैं आईपीएस अभी हुआ है हमारा, उसमें भी सर को बोला था कि उस पार्टी को बुलाया जाए कि वो किस टाइप से रिफैक्ट्री बना रहा है, कि उसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, इतना अच्छा है कि वो रिफैक्ट्री होल्ड हो रहा है इन स्पेशली जब ये 600 660 एंड 800 मेगावाट्स। ये महंगा था इसलिए नहीं ले रहे थे। सर महंगा नहीं, एनटीपीसी का पॉलिसी है सर L1 लेना है। तो वहाँ कंपेयर करके दिखा सकते हैं ना, इसमें इतना पैसा बच जाएगा। Yes sir, we have shown in this presentation ना प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिफैक्ट्री जो हमने दिखाया है, उसमें सर हमने ओएस में भी दिखाया है, ओएस वाले को बताया है, दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड। तो अभी ये बोल रहे हैं आपने जो रिफैक्ट्री से सॉल्यूशन निकाला, यस सर, उसका स्पेसिफिकेशन डेफिनेटली जो L1 होगा उससे थोड़ा अलग होगा। यस सर। तो आप मेरे को ये वाला स्पेसिफिकेशन चाहिए, इसमें L1 कौन है, ऐसा क्यों नहीं किए? सर मैं वही चीज़ बोला कि एनटीपीसी क्यों नहीं किया, ये पूछ रहा हूँ। सर अभी वो प्रोसेस में है। ओएस के साथ हम लोग बात किए, जो अभी केटी मीट हुआ था, लास्ट केटी मीट हुआ था, उसमें ओएस यही बोला कि जो स्पेसिफिकेशन इसका आ रहा है तो उसके हिसाब से हम सप्लाई, अभी तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं सिर्फ सप्लाई का, हम लोग जो खरीद रहे हैं फैक्ट्री सप्लाई का। अभी ओएस ये करने वाला है कि सप्लाई एंड अप्लाई फ्रॉम द सेम, और जो इनका केमिकल कंपोजिशन है वो उसके हिसाब से, लेकिन वो 100% सर देता नहीं है जो OEM जिसका हम रिफैक्ट्री लगा रहे हैं। नहीं सर, ये मैक्सिमम में है। अब अभी क्या ना सर, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है यूनिट्स का सभी, हाँ फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है सर। इसमें जो मैंने चार केस हमने डिस्कस किए, एक तो हम लोग क्रैक का डिस्कस किए, जो क्रैक वाला होता है ये पेंट हाउस में, वो फ्लेक्सिबल ऑपरेशन की वजह से होता है। कुडकी में फ्लेक्सिबल ऑपरेशन है तो वहाँ पे मैक्सिमम BTLs इसकी वजह से होता है। सेकंड केस है स्लोप में रिफैक्ट्री वाला, ये तो ऑल ओवर एनटीपीसी है, सभी प्लांट्स में होता है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा जनरेशन होगा, ऐश एक्यूमुलेशन होगा, इतना फास्ट इरोजन भी होगा। ट्यूब्स तो मटेरियल है सर, जितना उसके ऊपर से हाई रेट का ऐश फॉल होगा उतना तो इरोजन होगा ही होगा। तो ये कॉमन है सभी प्लांट्स के लिए, इसमें कोई 800 मेगावाट वाला नहीं है। यस सर, यस सर, सभी के लिए। और अभी जो एक केस था हमारा स्लिंग ट्यूब वाला, वैसा केस सर अभी पुराने प्रोजेक्ट्स में भी मिल रहा है, ठीक है। उसमें रीज़न क्या है, जो हमारा कंडेंसेट जो ब्लॉक हो जाता है इसमें पैनल्स में, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग हो रहा है। तो ये केस जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारा कोरबा है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, सिंगरौली है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, उनमें शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग अभी आ रहा है। इसका रीज़न ये ठीक है, उसमें वो रहता है प्रॉपर स्टार्टअप एंड शटडाउन। अगर प्रॉपर स्टार्टअप एंड शटडाउन नहीं होगा तो कंडेंसेट इसमें कॉइल्स में फॉर्मेशन होगा, और ब्लॉकेज होने की वजह से शॉर्ट टर्म ओवरहीटिंग होकर ट्यूब फट जाएगा, BTL होगा। जो अपना फर्स्ट लाइटअप के बाद से ये सारा ट्यूब लीकेजेस और ये सब का इशू आ रहा है ना? यस सर। इसमें दो पार्ट है, एक तो एनालिसिस के क्या हुआ और Yes, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। यस सर। दोनों में तुम्हारा रोल सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन में था। यस सर। है ना? एनालिसिस तो इम्प्लीमेंटेशन और ठीक है सर, आप बोलिए। मतलब मेरे विचार से एनालिसिस में दुसान था, इंजीनियरिंग था, OS था, रीजनल OS भी, हम लोग भी इन्वॉल्व थे उसमें। तो एग्जैक्टली तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इसमें जो है उसको फोकस करो, ठीक है सर। है ना? मतलब एक एनालाइज तो हो यस गया, सर, एक जो सजेशन सजेशंस आता है उसको हम लोग कैसे ऐड करके अपना सजेशन, कैसे अपना आइडियाज ऐड करके हमने इसको रोका, उसमें क्योंकि तुमने क्या इनोवेट किया? यस सर। है ना? अब जहाँ तुम्हारा मेरे ख्याल से अप्रोच के बहुत इश्यूज थे, जब स्लोप यस करेक्शन कर रहे थे, सर, स्लोप वाला इशू था, उसमें अप्रोच का इशू था, अप्रोच का इशू था। यस सर, है ना? करेक्ट। तो तुम्हारा जो डिफरेंशियल मेटल वर्क्स, मेटल वाला जो जॉइंट्स है, यस सर, DMW जॉइंट्स, उसमें अलग प्रॉब्लम आ रहा था वेल्डिंग के समय में। यस सर। तो वो सारा जो तुम्हारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है उसमें ज़्यादा डालो। सर एनालिसिस पोर्शन तो मतलब ठीक है, जनरल के लिए ठीक है, बट जिसको पता है उसको, हमको मालूम है कि सब मिलके ही करते हैं उसको। यस सर। उसमें भी कोई तुम्हारा अगर स्पेसिफिक इनपुट है एनालिसिस का तो वो जरूर दो। थैंक यू सर फॉर नाइस फीडबैक। अगली बार से हम उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। हाँ, वो काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एनालिसिस है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बढ़िया। Thank you, Deep and Shivam, team creation ideation crew, Lara. Now we will break for lunch, and at 2:30 we will again assemble here for technical session 2. So the lunch is arranged in lobby, just outside this auditorium. The teams which shall be
in technical session 2 are Elites Sipat, Srijan Lara, Sankalp Khargon, Black Diamond Korba, and Technoid Sipat.
जजेस आने के बाद करने से अच्छा है हम लोग पीके में सर हेलो एक बार चेक किया सर एवरीथिंग ओके हेलो 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 नहीं नहीं एक मिनट हेलो लैपटॉप को पीछे डाल दो वो दे दिया क्या टैब A very good afternoon to all. Our team is elites of CPAT. Team members are Khaja Murli Desari, Isank Kumar Chandrakar, Yogendra Nath Misra, Nitin Nayak S. फुल दे दो बेटा सर Team elites of CPAT. सर ये ऐप है डेमो के लिए आप रख लीजिए अपने पास ऐप डेवलप किया है डेमो हमारा जो presentation का हम वहाँ पे हाँ। दिखाएंगे सर आप इस पे देख सकते हैं हम वेबसाइट दिखाएंगे वहाँ पे ये ऐप है हाँ सर हाँ डेमो के लिए So we can start. Yeah. Okay. So we shall start. थैंक यू सर विंडोज Good afternoon, all respected judges, all the dignitaries and all colleagues present over here. I take this opportunity to welcome you once again for the second half of the technical session. Our teams, elites, PC team from Operation Group C, CPAT. The topic of our PC is Operation Desk Engineer Succession Planning, Smart Learnings and Better Results. I'd like to introduce Murli sir, myself Ishank Kumar Chandrakar, our colleague Nitin Nayak, and one more Yogendrath Mishra. And I would also like to mention our facilitator Vishal Kesri sir, who under whose able guidance, under whose able leadership, we were able to come to this far. The only real mistake is the one from which we learn nothing. So mistakes are unavoidable. We cannot avoid the mistakes. What the best we can do is we can reduce the reoccurrence of the similar type of mistakes. So the need of the hour is that we need to train our younger generation peoples so that they will at least not do the similar mistakes or the mistakes can be reduced. So I'll be dealing through the outline of the presentation. First, we will, myself and Murli sir will declare, showcase the problem statement and cause analysis. What is the problem what we are facing? And then our blended employees will deal you how we can overcome those challenges. Action plan and implementation. The problem what we are facing right now is ineffective knowledge sharing of domain knowledge and expertise. What is happening is that in the recent years, NTPC has made recruitment in large numbers, and due to that, there is a lack of experience in our young Gen Z executives who are actually the driving force of our core business. They are the desk engineers they are the means controlling whole parameters in the plant. The causes are mainly because of the transfer and department change of the senior executives and new ET operation, as I have already explained. Lateral recruitments, though they are experienced, but they do not have specific domain knowledge in that particular unit or that particular type of plant. And some personal factors because of some health issues or some issues, people are not able to work in operation departments.
what is it is causing is that there is a lack of experience, as we know, and there are challenges are more because of the dynamic work environment due to the introduction of SCD, RRAS, ancillary different services. There is major cycle in the load. We are not able to run at full load at all the times. And the consequences are more number of forced outages is there, and compromise with safety, suboptimal equipment performance, and obviously the financial repercussions are the same. So we are saying that there are new number of executives. We have collected the data from SAP, and we would like to show that in operation department we have around 2600, 28,700 employees, and we have categorized them in that experience category. You can see more than half, more than 50% of the people are having less than 2 years of experience. आप भी pointer ले लो ना. Point. Slide changer. See here we can see that नहीं दिख रहा है. डाटा शेयर नहीं हो रहा क्या? और भी ओपन करो ना. Sir, here I want to show you that majority of our operation engineers are actually E1 and E2 level of people. And here you can say that most of those are having less than 1 year of experience. So it becomes very important to accelerate their learning processes. And what we are saying that it is causing high outages. Is it really happening, or it's just a hypothesis? Okay, thank you, Shank. I will take this opportunity to show the real-time data. Why? Because everything is, if you see in the monitor terms only, it will be helpful for us to understand whether it is really or not, और कोई जैसे बता रहा है करके. ठीक है. Here the pan India outage, sir, or loss. The thing is that total outage loss is 35,610 million units we lost because of maybe partial loading. Total loss is 84,585. Out of that one, we have the total outage loss is 35,610. This 35,610 million units may be due to the equipment loss or human error or any other actions. So go to the next slide, please. So here, sir, the funda is that we need to say operation induced million units are very less compared with the boiler and the turbine auxiliaries. But the fundamental thing is that 34 outages are also avoidable if you train the people properly. 34 outages also equal to 68 crores. Maybe why? Because this only look like very small. If you keep on making the same pace, it may go to the 100, 200 crores. So for that purpose also we made a Power BI one application bana diya sir. Last we need to understand how it is impacting. Last 4 financial years ka we made that one. Again, this is a table format, sir. We taken the source from the CCOS Darpan only. Okay, from 1819, 1920, 2021, the number of outages were 48, 44, and 35. But from the 21, 22, 23, 24, the outages were keep on increasing, sir. Why? Because in this zone only we introduced our new people. That is Gen Z people, sir. Okay, that is we have very less experience of people in the desks. Who is people behind the PLF? We are proudly saying that NTPC is people behind PLF, who driving the seats, who on the driving seat, operating the machines with high effectively. Go on, please. Sir, why it was happened? Why it was happened? So these are the probable reasons for the outages, human-induced induces outages, sir. So lack of supervision, we have 16 outages, sir. Procedural error 11, detail missed 8, risk involving error 7, lack of knowledge is 6, inadvertent error 5. So our main focus is that lack of supervision and lack of knowledge. These two are our major threats. What we observe. So how to overcome those things will be dealt by our Gen Z, my desk engineer. So as Murli sir mentioned, the recent forced outages can be attributed to the transfer of experienced Generation X employees and their replacement by the inexperienced Generation Z employees. So research has shown that every generation has their own method of learning based on their ability to retain information as well as their ability to focus. And let me show you the classification of different generations based on their birth. So earlier generations like baby boomers, Generation X or the millennials use traditional tools for learning new things, like they use books or printed materials to learn new things. But the current generation, that is Generation Z, which comprises the 70% of the operation manpower of NTPC, prefers digital tools for learning, and they are very reluctant to use
printed materials for learning. And due to the heavy use of social media in the current generation, they are not able to focus for a long period of time, as well as they are not able to retain the information. And this slide clearly depicts the situation of Generation Z in the current scenario, because they are overburdened by the books or the printed materials and are not able to grasp information that are present in the printed materials. And they are also very reluctant to have a face-to-face communication with their seniors who can actually guide them, but they are very reluctant to have that. But they are, and they are preferring digital tools to learn new things. So it is important for us to develop new things, new learning tools in NTPC, so that it can help the new generation to learn and develop themselves and contribute towards the vision of the company. So we are providing some of the solutions that can be implemented in NTPC, pan-India NTPC, which can help Generation Z employees to develop themselves. One is that we can develop mobile apps or websites which can provide all the operation related documents in one app, and this can be accessible from anywhere at any time, or which is available at their fingertips. And we can integrate the initiatives generated by CCOs like Darpan and Prayas, which deals with the near miss incidents as well as the human error trips, so that new generation employees can learn from the mistakes of other employees. And one of the main feature of our app is that we have included videos and images. So research has shown that including videos and images improves the retention capacity of the employee or the individual. So we are trying our best to include all the critical activities like light up or shutdown in a more interactive way. And one of the other main feature is that we have introduced a chatbot in our app, which can help us to retrieve information at a faster pace. Over to our Yogesh. जैसे कि हमारे कलीग ने बताया है कि अगर सारा डाटा हमारे 24/7 आवर्स हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हो तो लर्निंग काफ़ी आसान हो जाती है, हम कुछ भी खोल के तुरंत देख सकते हैं। इसके लिए हमने एक टूल डेवलप किया है, एक ऐप डेवलप किया, आप देख सकते हैं। तो इसका डेमो के लिए एक सेकंड सर, यही ऐप है जो दिया गया है। ऐप और वेबसाइट दोनों है सर। सर इस ऐप में हमने सारे SOPs, LMIs, वर्क इंस्ट्रक्शन और इमरजेंसी हैंडलिंग्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर अपलोड कर दिए हैं, ताकि हम जो भी एक्टिविटी है उसको एक सिस्टमेटिक वे में स्टैंडर्ड प्रोसीजर से कर सकें आगे। तो इसके अलावा जो हमारे ऑपरेशन से संबंधित जो भी सिस्टम्स हैं उनके लिए जो भी PPTs हैं इनको इस सेक्शन में ऐड कर दिया है। और चेकलिस्ट इसी तरह जैसे कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, यूनिट लाइट अप या यूनिट शटडाउन, वैक्यूम पुलिंग, ये सब हमको एक ही जगह पर सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने मेन फोकस किया है इंटरेक्टिव OWS पेजेज में, जिसमें हमने जैसे हमें सिस्टम का नॉलेज हो जाता है, लेकिन हमको उसको कंप्यूटर पे ऑपरेट कैसे करना है, अपना हमें OWS सिस्टम में कैसे उसको चलाना है, उसके लिए हमने ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। जैसे कि ID fan दिखाओ, प्लीज शो ID fan। जैसे कि ID fan का है, our main interest is that sir, suppose in the book we have only black and white system, so the person who is reading is first time is unable to understand what happening. At the same time, in any OWS in our plan NTPC, they do not provide any running parameters का trip value कितना है, जो the person who is sitting in the first or second time he is unable to recollect the data, and sometimes what happens na, he is operating at the almost margin zone and he is not able to take the decision, so that causing the unit outages or partial loss sir. So our intention is that to avoid that one, every unit outage costs almost 2 crores. So to avoid that one, to generate the inculcate the very good learning platform, we develop this kind of platforms. Please जैसे कि इसमें ट्रिपिंग वैल्यू, ऑटो स्टार्ट वैल्यू और रेटिंग वैल्यू इसी में दिखा दी गई हैं, और साथ में इससे संबंधित जो भी डाटा है, जैसे इमरजेंसीज हैं, टेक्निकल डाटा है, P&I है, और उनका स्टॉप करने का या फिर चलाने का SOPs वगैरह है, उसी के नीचे दिया गया है। जैसे कि इमरजेंसीज में जैसे ID फैन मोटर बियरिंग टेम्परेचर हाई जा सकता है, तो इसके क्या काजेज हो सकते हैं और क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये सब हमने इसी तरह से उसी के नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, ताकि हम हर एक इक्विपमेंट के बारे में जो भी डाटा है एक ही जगह पर हमें मिल जाए। साथ में हमने इसमें जैसे ये HP बाईपास चार्जिंग या फिर TG रोलिंग सिंक्रोनाइजेशन है, इसको हमको करना है, तो
इसके लिए हमने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ये चल नहीं रहा है, ताकि उन लोगों को पता रहे कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर हमको क्लिक करने, क्या पैरामीटर देखना है और कौन सा वाल्व इंक्रीज करना है, कौन सा डिक्रीज करना है। तो इनको हमने बनाकर इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हमने इसमें Q&A सेक्शन भी ऐड किया है, ताकि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम यहाँ से देख सकें। और इसके अलावा हमने इसमें टेक टेस्ट सेक्शन ऐड किया है, ताकि हम टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने आप को टेस्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि हमें सैप में भी काम करना पड़ता है, परमिट इशू पड़ते हैं, उसके लिए कैसे करते हैं, तो उससे संबंधित भी डॉक्यूमेंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं। और इसमें हमने चैटबॉट भी ऐड किया है, जो कि जिसमें हमने अपने एनटीपीसी के डॉक्यूमेंट्स पर ट्रेन किया है। इससे हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो फिर इसका आंसर दे सकता है और उसका सोर्स भी बताएगा कि वो किस डॉक्यूमेंट में कहाँ से वो आंसर दे रहा है। Beauty of the system is that we can have that one or more than 2 references or 3 references for this one, sir. Suppose you say that I define emergency, other I define tripping. So then how it trips, what are the reasons, and how it take the data, whether from technical data, otherwise from any schematic system or something, go in the manual. Okay, sir. So sir, I have typed PF and protection. So it is whatever we have the documents which we have given to train that chatbot. It has given the values how when PF and trips. For easy searching, easy access. डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफ भी कर सकते हैं और उनका नोट्स भी बना सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ फंक्शंस हैं इसके। थैंक यू सर। इसमें आपने बहुत सारा चीज़ दिखाया, ट्रेनिंग के लिए आपने ये ऐप बनाया है। ओके, मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे ये वाला दिखाया था ना, आई डिफाइन वाला, या कोई भी प्लांट रनिंग कंडीशन, अब बिकॉज ऑफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वाटर सप्लाई, when water is not reaching to the boiler, obstacle आ गया, कुछ भी हो गया, उसमें ऐसा chaos मचा के दिखाओ। Could you get me what I want to say? Water is not reaching to boiler, the plant will get shut down. There might be some arrangement. Actually, you want to teach the employee what he is supposed to do in certain conditions. Yes, sir. तो उसमें दिखना चाहिए ना। Sir, this is only for learning purposes, sir. In actual real-time situation, means we are not in that DCS. It is not available. It is for learning of the executives, young generation, that they should know beforehand, because at that time they will search the thing, then it will cause tripping. तो स्क्रीन पे वो आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करो और फिर वो जो सीख रहा है उसको ये पता चलेगा कि अब जाके ये करो। हाँ सर, इसको बनाया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अभी नहीं बना हुआ है। अभी हमने जो एक बार इमरजेंसी वाला वाटर वाला टेम्परेचर करके सर्च करो। हाँ, ट्रिप वाला देखो ना, बॉयलर ट्रिप वाला देखो, क्या है सार का जो। हाँ यस सर, वही चेक करेगा सर। एंड आवर कंक्लूजन, ठीक है, आफ्टर दैट विल डू। सर क्या क्वेश्चन है? बॉयलर ट्रिपिंग डालो। वाटर वाला टेम्परेचर, बॉयलर सडन नो सप्लाई ऑफ वाटर, इट इज लाइक दैट। फीडबैक BFP ट्रिपिंग डालो। BFP ट्रिप डालो। सर इसमें हमने दर्पण और प्यास के डॉक्यूमेंट्स भी ऐड किए हैं, जिसमें जो प्रीवियस इमरजेंसी आई हैं वो प्लीज अप टू द पॉइंट ओनली। यस सर। So these are possible reasons for the feed water flow comes, sir. Why? Because TDFP trips means what are the reasons? Suction valve may close or bearing temperature may be exceed 100 degrees temperatures. So these are the things may lead to the feed water flow reduction. इसमें हम लोग को ये बोलना चाह रहे हैं सर, एर्लियर नहीं वो इमरजेंसी हैंडलिंग वाला हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है सर। इमरजेंसी हैंडलिंग वाला पेज दिखाओ सर, एक सेकंड। हमारा इंटेंशन क्या है सर, एर्लियर वी हैव द सफिशिएंट टाइम to boiler turbine desk, फिर बाद में यूसी शिफ्ट इंजन। सर कॉमन इमरजेंसीज now the happen it happens in a random manner, मतलब almost the person who is sitting beside me maybe 1 year of experience, less than 1 year of experience, I am 15 years of experience. नहीं मेरा कहने का मतलब था your software is capable enough to teach the new beginners. Yes sir, okay. Yes sir, that is the main mode of us. What I want to say, if the water is going hard or water is not going, then how the person responsible can check it and learn what to do. First thing we have the alarms also sir in the live system. Okay, so apart from that,
Sir, these are the SOPs, sir. Action to be on. We have already documented SOPs. We have only incorporated those in our website manner. that people can refer those things. They can learn from this. Because actual emergency situation, we do it the same thing what you are telling, sir, in simulator. In simulator training, we do these things. BFP tripping on. अगर सिमुलेटर ट्रेनिंग है तो फिर इसका क्या यूज है? Sir, simulator training. Simulator training available only for 7 days, sir. Per year only 7 days. क्यों? Because of the limitation of the systems, and that is also not possible to give every day. And this is the live data, sir. हमारा टारगेट तो नए न्यू कमर को अच्छे से सिखाना है. Yes, sir. तो सिमुलेटर ट्रेनिंग हमारे पास अगर इससे अच्छा रास्ता है तो इसका क्या यूज है फिर? ये 24/7 सीख सकता है, अलग अलग सर. चीज़ें हैं सर. सिमुलेटर में आप जो सिर्फ इमरजेंसी जो बोल रहे हैं वो सीख पाएंगे, और वो भी जो सिमुलेटर के उस डेटा में फीड हैं, BFP ट्रिपिंग, ID फैन ट्रिपिंग, इस तरीके के. बट इसमें आप हमारे पास इन्फाइनाइट स्कोप है सर. हम डिफरेंट जो हमारे लर्निंग्स है उसको ऐड कर सकते हैं. सपोज मेरे टेन्योर में कोई ट्रिपिंग होता है तो उसका मैं एक फॉर्मेट रिपोर्ट बना के इस पर अपलोड कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जो भी आएंगे वो उसको पढ़ पाएंगे सर. Actually, CCOS also taking a lot of initiatives, sir. दर्पण करके वो और सब प्रयास इसमें करके. The initiate people किया who हुआ are है have the सर. experience, maybe 10 years of तो ये experience. आपका स्टेशन लेवल इनिशिएटिव. Station level initiatives. Yes, sir. और कॉर्पोरेट से OS में अलग से हो रहा है. नहीं, OS में initiative नहीं है, इसे common platform है. OS is on. This is only for CPAT के लिए हम लोग. Only for CPAT. CPAT. It can be replicated all over India without any major threats. Otherwise, any roadblocks, minimum roadblocks से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं. Why? Because not only CPAT new people are there. All over India, we have inducted almost 2,500 people. Okay, but their learning capabilities, and we want to make it in crisp and simple format. Suppose when equipment का related SOPs, उसका emergency handling, उसका related trippings earlier. So those things will be available in the single shot. So the person who was reading first time can also understand these are the related issues may come down the line. Sir, suppose if you have the data in your brain, then only you can take proper action at right time. I got that. My concern was that this kind of initiative should be taken at the NTPC level. Actually, I am as a EC, I am facing the real-time situation problems with my desk engineers and how to teach them. So I feel this app will be helpful for me as who is teaching, and the This is operational. only exclusively operation. Yes, sir. Operation CPAT Fully engineers. operational. Only Yes, operations. sir. Why? Because we are in the front runner of the systems. We are operating the machines. How to what extent the newcomers? Sir, we have in CPAT, we have they have accepted. out of 95 in 60 executives they are using, sir, actually. Means we have told them that you just use and give us the feedback. In terms of improvement, can you highlight something that before this was introduced, this was the situation, and now after this it has improved like this? Some kind of comparison? Sir, for that data we don't have right now, sir. Why? Because When was this introduced? this introduced last month only, sir. Okay, it's only 2 months. Yeah, Yes, sir. that's fine. Actually, we want to give some real-time solution what we are facing on the desk. Who is operating the machines or plants? Why? Because And what is the vintage of data here which is stored? How far back you have gone to store the data? no, sir. Actually, the data available earlier also. Suppose No, maybe it was available. It was available as printed material. printed material, and Now it you will be have available in converted- one set में दूसरा एक parameter मिलेगा. In and CPAT different set में intranet, दूसरा you मिलेगा. can search and So I want to make it in we the have same platform. compiled that, And at the sir. same time, at the equipment wise. Suppose any equipment we are doing any Is that emergency, exercise fully over or it is still going on? not fully. It is going on, continuous sir. process, sir. Means we are continuously adding more documents, and taken the up as a pilot project, feedbacks sir. received from our executives, we are adding more instructions in that website and app. Exercise is not being done in other stations. No, sir. This is our idea only. Why? Because we are getting pain. So you want to come out from that one? NTPC level तक लिया जा. Because these newcomers, they are spread all over India. Yes, Yes, sir. sir. They are all But that's why we want to make it in front of you that these are useful for the all over India pan NTPC people. So it will be helpful if you Sir, take us in forward. the future scope we have mentioned, we propose CCOS and IT. For that we need the help of OS and IT. This should be done. Yes, sir. Means we have included, इसको sir. हमें पूरे NTPC level पे भी करना है. Due to the paucity of time, we couldn't able to show you these slides. So that was the reason, sir. और पिछला आपका कितने वो जो है ना Projects Next वाला slide, चाहिए, next sir. slide. project slide. Sir, pardon, sir.
last year how many presentations you Presentations. those presentation And screenshot with the cover, please. Sir, these are the presentations we have taken. how many? 8. 8, sir. Out of that, 6 are already implemented and 2 are in progress. Which is the best one from your perspective? Actually, Sir, for example, sir, From we your can say that perspective, which is the best one? All are best one? this every mistake is a one project, sir. Basically, the people who are unable to identify in right Sir, time. for example, and sir, the we can show you this. Unit got tripped, and otherwise unit about to trip. After that, we revived that. Okay, these parameters also to be available in the operator desk engineers readily. This one I can consider So it is the each best. unit cost. For any equipment isolation, what happens is that we do convey and we also send that isolation slip, but sometimes the power supply may have been shifted or anything some happens, so the operator might isolate or normalize the wrong equipment. So what we have done, sir, we have asked our IT with the help of that. For every equipment, we have mapped its power supply module in the faceplate itself. So when we will open that on-off command, we will get the faceplate where the supply is there, say 1.9 hour, 1.2 hour, 1.5 hour. So we'll verify with the operator that he's going and isolating the correct equipment. This also happened with one mistake only, sir. Why? Because we send one for one isolation, he done another isolation. Running equipment got tripped. Sir, here you are getting the supply, MCC 11.3F. This was earlier not present, sir. देखो इसका presentation देखो पीछे जाओ क्या हुआ पीछे जाओ नहीं process इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा. और एक बार शो फ्रीज हो गया वो नहीं यार सर इसको वो डेल्टा पी करके सॉरी शेयर विंडोज नहीं हो पी रहा. करके और एक बार freeze हो गया इसमें ट्रिप रिकमेंडेशन का है सर? हाँ सर यूनिट ट्रिप रिकमेंडेशन आ गया हाँ सर वो तो नहीं डाला है सर मेन हम लोग का दर्पण और प्रयास का सर दर्पण क्या है ना सर सपोज ऑलमोस्ट 150 to 200 केस स्टडीज इन योर ब्रेन मीन्स यू कैन आराम से दैट हैंडल दैट सिचुएशन हाँ यस सर लिंक करना है सर एक्चुअली ना थोड़ा कारपेट वाला से भी बात करते हैं एंड हाँ Yes, यस sir, सर definitely. सर कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हैंडलिंग हमने कलेक्ट करके डाली हुई है नहीं एक्चुअली स्टैंड बाय इक्विपमेंट नॉट अवेलेबल फ्लैग सर डिस्क्रिप्शन इज दैट Theme is पहले same, क्या but the discussion was in the main different. page in the main page we don't have suppose any equipment got isolated we don't know it's simply showing the healthy only नहीं soft tagging है लेकिन पेज में For जाने के that, बाद you have to go to that page to see that whether it is tagged or not. Here we have means provided that in the main parameter page only, it will show that supply is not healthy for that or equipment. not available or got tripped. So Because those things will be helpful for during take the shift next change over combination. the succession engineer might not have gone to that page. He might have missed. So in that case also, you will be aware that the supply is not available for this equipment. But आपके newcomers है वो इसको regularly use कर रहे हैं. and So they are that's why using our it team is also. with millennial or Gen Z, sir. These two people are. These are the. These two people are. That's why we involve these people also. Yeah, sir. हाँ सर काफी सारे We have parameters- faced trouble regarding like we were not able to grasp information that were available in manuals or the books, but वो we काफी with ढूंढना our पड़ता था What they say that it is available in manuals, but since you are not referring to that, new generation doesn't want to see the printed material. No, the They want to see everything electronically. Yes. So the current scenario is that we have to learn fast, sir. To learn fast, we are not able to grasp from the books. It is all presented in a more descriptive way, but we want the information to the point well to learn faster. So what और we सर have made जहाँ is पे that update we कर have रहे हैं वहीं presented all the information in an interactive way, so that we are able to retain information for a longer period of time, and we are able to learn faster. Such that, like we had shown that interactive OWS page where we had mentioned all the P&I values as well as the auto start. But if you are to learn all the technical specification and the protection value, it will take time. But if we are able to present those values in a already working environment, that is the OWS page, we will be able to learn faster. Because we are dealing with the OWS page only, sir. So सर हमको we'll काफी be, you get हेल्प used to मिलती it. है इसको Sir, for example, for a ID fan suppose,
For tripping value, you have to go to the internet and search for P&I register. For technical specification, you have to go to. Yes, हाँ sir. वो दिया वो भी है सर, दिया वो सर भी है, emergency emergency हाँ एक्चुअली आईडी फाइन रिलेटेड जो भी है, you have the technical details. Yes, yes, available है सर. अवेलेबल है, थोड़ा दिखाओ. आप में भी सार भी दिखेगा. यस सर, यस सर. OWS पेज, आईडी फाइन, इसको ट्रिपिंग करने के बाद क्या करना देखो. इमरजेंसी खोलना. उसमें इमरजेंसी जो टैब है ना ये. हाउ विल यू नो? LVS में दिखेगा, नहीं दिखने से भी हम लोग ड्राफ्ट का सेकंड पैरामीटर भी देखना है सर. सो जैसे सो एक्चुअली ना not only one parameter, we need to cross check 2-3 parameters, then only we can conclude that really happened. क्या हुआ तो ये कर रहे हैं सर ये है सर. ट्रिप्स ओके. हमने स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट किया सर. पहले कैसे होता है, मतलब कैसे पता चलेगा हमको ट्रिप हुआ है करके, उसके बाद ट्रिप होने से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, और कॉन्सिक्वेंस तो हो गया, अब ये क्या एक्शन लेना है वो भी लिखा है. नहीं, मैं यही जानना चाहता था कि you are then Z. Yes sir. And you are more comfortable with this. Yes sir. Compared to printed material. Yeah, research also shows that sir that You have more acceptability Yes, sir. of this. Yes sir. हम लोग काफी मदद लेते हैं जब भी कुछ जरूरत. Sir, not only ZenZ, now that we have means we are using it, we also find it more means easy, because earlier all these data are available, but we have to go to different sites and different internet and different pages we can get, but here we can get in a consolidated way. So that's why even we are means more happy to search quickly in this. Yes sir. More happy to learn and teach also sir. Yes, both ways. आपने एक स्लाइड दिखाया था जिसमें ईयर वाइज ZenZ दिखाया था, है ना. आपने तो खत्म कर दिया. ZenZ के बाद क्या? Alpha S. Alpha. नहीं alpha. They are yet to be inducted in NTPC. For our intention is दिया ना ZenZ. Z के बाद तो कुछ नहीं है ना. Alpha है सर next. Sorry, ABCD में Z बोलना चाह रहे हैं. ठीक. Thank you sir. अल्फा बीटा करेंगे. Alpha are there sir, but we have not included that because they are yet to not be in the workforce of our in the NTPC as of workforce, now. because So that's why. latest 2002 2003 only. हाँ. Yes. Okay. Thank sir. Thank you sir. Thank you, sir. काफी सारी इमरजेंसी ऐड किया है हमने. Thank you very much sir. Thank you. Thank you, Team Elite, Sipat. एवरेस्ट वाला नाम रखिए. Our next team is Srijan Lara. Srijan Lara, members are Jitendra Mohanty, Sonu Ram Kapoor, Naman Thapar. ऐसे ही पढ़ाने में अचानक दिखा कि पानी नहीं जा रहा है. पानी नहीं जा रहा है तो क्या हुआ और क्या करना है ऐसा दिखेगा एनिमेट. आप अगर आपने कभी लैब व्यू पढ़ा है, लैब व्यू का नाम सुना है? लैब व्यू, उसमें स्क्रीन ऐसा होता है कि स्क्रीन पे होता है जैसे एक बॉयलर पड़ा है, नीचे से गर्म कर रहे हैं, पानी उबल रहा है, वो सब दिखता है. स्टीम बन रहा है, स्टीम जा रहा है, टरबाइन की तरफ टरबाइन चल रहा है. तो मैं आपके सॉफ्टवेयर को वैसे ही समझा. क्या समझा कि स्क्रीन पे दिखेगा अभी ये चल रहा है सब, अभी ये प्रॉब्लम हुआ वो भी स्क्रीन पे दिखेगा, और जो सीख रहा है वो सीखेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए क्या करना था, या हो गया है तो क्या करना है. आई वॉज फीलिंग योर सॉफ्टवेयर लाइक दैट. However, it is not like that. लास्ट में ऐसा प्रूव हुआ क्योंकि आई हैव टू गो थ्रू, बिकॉज एनीथिंग इफ यू वांट टू स्टडी और रीड आउट. आपसे मैं पूछता हूँ, आप छोटा स्क्रीन में पढ़ना पसंद करेंगे कि बड़ा में? आपको आंसर मिलेगा बड़ा में. तो अगर ये मोबाइल है तो अगर मोबाइल में पढ़ना है तो ज़्यादा देर तक सीखने वाला टाइम देगा नहीं, बोर हो जाएगा. वो ह्यूमन टेंडेंसी है. तो एनिमेटेड रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा.
हाँ ठीक है, समझ गया आपकी बात. नहीं, this is a good approach. आएगा सर, और भी चीज़ें इसमें This is a आती good जाएंगी। approach. हम It लोग may land to a good thing. हम लोग अभी वीडियो एसओपीज वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड करके, और जैसे सीपी का आइसोलेशन वगैरह है वो भी इसमें डालेंगे, अभी चल रहा है। और लोकल में वाल्व्स कहाँ पर हैं उसका भी हम एक वीडियो ये भी आएगा। Team Srijan, Lara. So now we will start. Good afternoon, respected jury, senior officials, and my dear colleagues. We are Team Srijan from NTPC Lara. I am Naman Thapar, Manager 1M Civil Tech. With me are my colleagues, Sri Jiten Mohanty, DGM Ash Handling Maintenance, and Sri Sonu Ram, Senior Manager Ash Utilization. Today we are here to present a topic that is very relevant and very significant for power plant, that is discharge monitoring in ash transportation works. Now, what all shall be discussed today in our presentation? That will be the current scenario of ash transportation in power plants, looking at the challenges that are being faced by these in ash transportation. What are the causes that are leading to these challenges? Looking at how NTPC Lara is able to achieve a solution with that, the benefits that we have achieved after the implementation that we have done in August 2024 at NTPC Lara. And after having a very positive feedback, it can be applied pan NTPC, and we are very positive about it. Looking at the future roadmap also in that. Now in December 2021, there was a classification issued by MOEF in which power plants were described under 3 categories. That were category A, in which fall under plants which are able to achieve ash utilization more than 80%. The category B considered the plants that were able to achieve between 60 to 80, and in category C were the plants that were able to achieve below 60%. In that duration, NTPC Lara was classified under category C. In this categorization, there is one more point. Since in current scenario, each and every power plant has to achieve a target of 100% ash utilization. So there was a timeline fixed that for category A plants, they were provided with 3 years to achieve the target. The category B plants were given 4 years, and category C plants were given 5 years. In the financial year 22-23, the ash utilization was considerably low, but NTPC Lara has turned around the table, and in the next financial year, that is 23-24, it was 103%. The average comes out 63%, and if we are not doing this pace, like more than 100%, there will be an EC penalty that can be up to a quantum of 603 crores. If the ash utilization is not done in 5 years, that is 100%. Now looking at overall scenario, in NTPC plants, there is a rising trend. We are able to achieve average of 83% ash utilization. For NTPC Lara, what is the challenge? In the current running financial year, till date, we are able to achieve 106% of ash utilization. It is achieved already. But for the next 2 financial years, it has to be more than 120% to achieve the target of 100% ash utilization in 5 years, and to avoid that environmental compensation penalty. Now looking at the challenges that are there in ash transportation works. Firstly come the discrepancies. Why are these discrepancies? Because of the quantum of work that is involved. There are as more as 300 trucks or more than that in a day that are involved in ash transportation. So that can lead to any bona fide mistake due to manual handling. The environmental norms that are much stringent nowadays. The reason for the environmental norms non-compliances are mainly because of the defective or damaged trucks that are involved, non-uncovered or partially covered trucks, collection of wet ash that leads to ash falling and fugitive ash collection, and also the warning that are being given by the administration from time to time to avoid this. Now going on, safety is of utmost importance for every organization. The safety challenges are, as you can see, the overloaded trucks, that pose a major challenge. They can become unstable and topple, which can lead to both safety and environmental non-compliances. Maintaining of records, as I already mentioned, that the number of trucks that are involved per day are more than 300. Manual record keeping is very tedious. So how the digital monitoring can help in this way? And finally, regular monitoring of vehicles of such quantum. The cause is that for such quantum of work, there is no defined scientific tool, no defined SOP. And NTPC Lara has developed a method so that we can achieve this in a safe, environmental free manner.
The solution, as I already mentioned, in August 2024, NTPC Lara has implemented this, and now I would like to pass on to Mr. Ram to take on further. थैंक यू नमन। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि सर अभी एस सारे एनटीपीसी प्लांट में एस ट्रांसपोर्टेशन में 3 मेजर दिक्कतें हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है सेफ्टी का इशू है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा होने से टपल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेकंड इशू है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का, फ्यूजिटिव डस्ट इमिशन का, और थर्ड इसमें हाईली बजट इन्वॉल्व है एस ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसका मॉनिटरिंग सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को हमारे मोबाइल सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों ने कवर किया है और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड किया गया है सर। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का सिंपल इंटरफेस है जिसमें सारे एजेंसी वाइज व्हीकल्स एंट्री किया जाता है, प्लस इसमें हम लोडिंग पॉइंट अनलोडिंग पॉइंट डाटा का अलग से रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ देख सकते हैं। साथ में ये हम ऑफिस में भी डायरेक्टली इसका मॉनिटर करते हैं सर। अभी ये देख सकते हैं सर, इसमें हम जो है सारे डाटास जो है विथ इमेजेस स्टोर कर रहे हैं, जिसको हम और डिटेल में देखेंगे सर। पहले इसके इम्पोर्टेंट कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली है सर। इसमें ऑनलाइन जीपीएस मॉनिटरिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें विथ इन अ मिनट हम उसका जीपीएस मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस इसमें सर सारे डाटा व्हीकल एंट्री जो मैनुअल होते थे, सारे डाटा अभी हम डिजिटल स्टोर कर रहे हैं फ्रॉम 1 अगस्त 2024 से। इसमें जो मेन फैसिलिटीज़ है सर, ये है कि हम इसमें इमेज अपलोड कर रहे हैं, जो ये इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंट कंप्लायंस और सेफ्टी कंप्लायंस प्रॉपर्ली हो रहे हैं कि नहीं, ये हम इसमें इंश्योर कर पा रहे हैं सर। और ये ऑटोमेटिक हमें रिपोर्ट जनरेट कर देता है, जिसे हम डेली रिपोर्ट्स में पब्लिश भी करते हैं। और इसमें इसका डाटा एक्सेस जो है रिमोट एक्सेसिबल है, जो 10% है उनको। सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एनटीपीसी लारा में एस ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है उसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगा सर। इसमें जो है हमारे पास जब एम्प्टी ट्रक आता है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमने जो है 3 चेक पोस्ट बनाए हैं, जिसमें जो है प्रॉपर सेफ्टी और इन्वायरमेंट के पॉइंट्स जो है उसको चेक किया जाता है। जैसे ये पहले हमारा चेक पोस्ट 1 में आएगा, वहाँ पे खाली गाड़ी जो एम्प्टी गाड़ी है उसका ये पोजीशन चेक किया जाता है कि गाड़ी डैमेज तो नहीं है, फिजिकली चेक किया जाता है। अगर उसमें कुछ डाला गैप वगैरह ज़्यादा है तो उसको वहीं से रिपेयर करने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि लोड होने के बाद वो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और सेफ्टी दोनों के लिए डेंजरस रहेगा सर। उसके बाद ही इसको जो है लोडिंग के लिए साइलो और डाई से अलाउ किया जाता है सर। साइलो में इस तरीके से सेफ्टी के साथ प्रॉपर ऐश लोडिंग होता है। सिमिलरली डाइक में भी हमारा जो ऐश लोडिंग होता है थ्रू पोकलाइन के थ्रू लोडिंग होता है सर। इसके पश्चात लोडिंग के पश्चात हमारे दोनों जगह पे सेफ्टी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें तारपुलिन कवर करने का प्रॉपर सेफ्टी लाइफलाइन के साथ प्रॉपर कवर किया जाता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि तारपुलिन जो है ठीक से कवर किया है कि नहीं। इसके बाद ही ये हमारे चेक पोस्ट 2 में आते हैं सर। चेक पोस्ट 2 में फिर से हम ये इंश्योर करते हैं चेक पोस्ट 2 में सर हम ये इंश्योर करते हैं कि गाड़ी में ओवरलोड ऐश तो लोड नहीं हुआ है कहीं पे, या फिर उसमें गीला ऐश तो लोड नहीं हुआ है, क्योंकि वो हमें दिक्कतें करेगा। ऐश स्पिलेज तो नहीं है। ये चेक होने के बाद ही दोनों पर्ची जो है ड्राइवर को दिया जाता है। ड्राइवर फिर उसको जो है ले जाके आगे तभी उसको बढ़ने दिया जाता है। फिर वो हमारे वेटमेंट के लिए वेट ब्रिज के पास पहुँचता है, जहाँ पर फिर से एक बार क्रॉस चेक किया जाता है सर कि सारे सेफ्टी और इन्वायरमेंट कंप्लायंस जो है प्रॉपर फॉलो किया गया है कि नहीं। ये हमारे 3 चेक पोस्ट पे 3 चेकलिस्ट दिया जाता है सर। इसके पश्चात ही वेटमेंट किया जाता है। ड्यूरिंग वेटमेंट सर हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसमें सारे डाटा जो पहले फिजिकली रजिस्टर में एंट्री होता था वो हमने अभी डिजिटलाइज कर दिया सर। डिजिटल एंट्रीज हो रहे हैं, जो हमारे सारे रिपोर्ट्स को जो है इसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन ऑफिस में भी डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं सर। अभी डाटा जो है कितने ट्रिप्स पर डे जो है निकलता है वो। ये मैं एक वीडियो के थ्रू इसको दिखाना चाहूँगा सर, डाटा एंट्री कैसे होता है। इसमें व्हीकल्स के जैसे एम्प्टी व्हीकल्स आता है उसके सारे इसेंशियल डाटा, जैसे टायर वेट, ग्रॉस वेट, कौन से एजेंसी का है, डेट एंड टाइम एंट्री चेक, डेट एंड टाइम,
सारे डाटा जो फिजिकली था सर उसको एंट्री कर देते हैं। मेन फीचर्स जो इसमें है सर वो इमेज अपलोड करने का है। उसकी वजह से क्या है, जैसे कोई गाड़ी एक्चुअल में आई थी कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, जो फिजिकली चेक करना पॉसिबल नहीं होता था, फिजिकल रजिस्टर में भी मेंटेन करने में गलती हो जाए, बट यहाँ पर हम गाड़ी को श्योर करते हैं कि एक्चुअल में आया था। इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर टार्पोलिन कवर किया है कि नहीं, फ्री बोर्ड छोड़ा गया है कि नहीं, कोई एस लीकेज है कि नहीं, वो इंश्योर करते हैं। इसके बाद जो हमने फिजिकल 3 चेकलिस्ट बनाए हुए थे वो भी हम इंश्योर करते हैं कि सर हमारे लड़के जो है फॉलो कर रहे हैं उस चेकलिस्ट को। ये तो हमारे इंड से हम ये सिक्योर करके भेजते हैं कि सर हम प्रॉपर सारे कंप्लायंस अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये अनलोडिंग पॉइंट तक पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि हम तो 300 किलोमीटर NHI तक के लिए भी पेमेंट कर रहे हैं, तो उस हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि वो 50 किलोमीटर में तो डाल के नहीं आ गया। तो उसके लिए ऑनलाइन GPS का रूट लेके सर उसको भी हम जो है इसमें अटैच कर देते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कंप्लीट डाटा मेरे पास डिजिटल फॉर्म में स्टोर है, जो फ्यूचर बैकअप के लिए रहता है सर। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें विथ इमेज भी सारे डाटा सेव है। हम चाहें तो केवल चालान नंबर डालेंगे और उस व्हीकल का पूरा A to Z डाटा, बैक डाटा निकाल सकते हैं सर, जो फ्यूचर एविडेंस में काम आता है। इसमें सर एक और फीचर्स है इनबिल्ट GPS मॉनिटरिंग का है, जैसे कि विथ इन अ मिनट में किसी भी गाड़ी का व्हीकल नंबर पोजीशन देख सकता हूँ। जैसे कि एक गाड़ी था 8505, उसका मुझे अगर GPS लोकेशन देखना है तो विथ इन अ मिनट हम जो है सर इस ऐप के थ्रू डायरेक्टली फैच करके देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं सर कि ये गाड़ी जो है NTPC लारा से निकल के अभी सरायपाली पहुंचने वाली है। नाउ आई लाइक टू हैंड ओवर माय सीनियर मोहंती सर। Thank you, Sonu. So we have just seen how our mobile application works. Now let's see what are the major benefits of our application. So by using our mobile application, each vehicle data is being stored in a digital way, starting from the unloading point to the loading point, unloading point to unloading point. That there you can see all the images. So it has become a helping tool for all the supervisors who are working in our department, as relation department. It ensures the environmental compliance by ensuring proper covering of tarpaulin and proper tying of rope, and is there any ash spillage during the loading of ash, and also ensures the safety norms like avoiding overloading or over height of the dala, height of the loading of ash should be less than the height of the dala. So by ensuring all this, safety norms compliance is being done. So earlier, as I said, my friend, the entry was made in the manual way. By going digital, we just eliminated all the discriminations that has been earlier present. So there is no possibility of data manipulation because the user has no access after once it enters all the data in the mobile app. So regular monitoring has been done with this app only in our NTPC Lara. There you can see the GPS monitoring of each vehicle. So also by using this app, we have totally eliminated unauthorized unloading of ash at any other location than the designated location. So this app is also very user friendly and very simple to use. And by using this data, we can analyze the data each day, and also the report, the daily report, the monthly report, or the yearly report can be easily accessed on a fingertips at any point of time. Next, please. So what are the improvements that we have achieved in NTPC Lara after implementing this? So we have totally improved our efficiency for the monitoring of ash vehicles at NTPC Lara. Earlier in the previous financial, we had received around 17 number of notices from CECV for non-compliance of environmental norms. But after implementation of this our app, it has been reduced to 3 numbers only. So as I said earlier, the safety also has been improved by ensuring that the overloading and over height of the truck should be ensured, and the data is being stored in a digital way so that it can be accessed at any point of time. And the billing part, because we are calculating the every data in a manual way, and which were prone to human errors. So by going digital, the data generation and the billing has been very drastically reduced from 3-4 days to 1 day only. So what is in for NTPC? So this we believe that formally believe that this mobile application can be easily implemented in PAN NTPC, because the transportation of ash has been in all the stations has been done,
And this application can easily implementable in other departments like fuel management, where the coal transportation is being done through road also. So as I said earlier, it ensures the environment compliances and improves safety in mass transportation work. And this application drives digitization. The whole total process of the manual intervention has been removed, and this is a digital transformation within NTPC. By adopting this technology, NTPC can position itself as a role model for other plants also. So there are some of the limitations in future roadmap. Like for this app to work, we need some internet connectivity at least. So in some areas there may be issues of poor internet connectivity. And for our at Lara only, we have tested our application for 500 vehicles at NTPC Lara. We have not tested for more than 500 vehicles because there is no facility like that. So for our some future roadmaps, like we are planning to integrate this IoT to generate data analysis, so that any exception, like any deviations or any discrepancies, when is there can be an alert for this. And alcohol testing is being done manually. We are planning to do this digitally through this application also. And the vehicle fitness and insurance validity creates a significant delay in issuing the gate pass. But we are also planning to introduce this one in our app so that the gate pass system can be easily fast. We are also planning to implement skilled manpower to monitor geotag data 24/7 hour basis in our department. So this is how we implemented our data for this. Thank you, sir. एक्चुअली हमें इस एप्लीकेशन को डेवलप करने का सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे एचओपी सर से मिला. उन्होंने रिक्वायरमेंट बताया कि हमारे एस यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट में एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे हम इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करें. तो फिर हमने सर इसको डेवलप करने के बाद 27 जुलाई और 29 जुलाई को हमारे GMO साहब और एचओपी साहब के सामने रिप्रेजेंट किया. उन्होंने इसके आगे बढ़ने का परमिशन दिया. उसके बाद हमने इसको 30 जुलाई को हमारे जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं उनके सामने इसको जो है डेमो दिया, उनको ट्रेनिंग दिया. देन इसको बड़े इजीली अगले ही 1 अगस्त से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया सर. और पूरे सारे गाड़ियों का भी हम जो है डिजिटल रिकॉर्ड रख रहे हैं तब से. और उसके बाद सर इस 31 अगस्त को हम SMC मीटिंग्स में भी इसको विजिलेंस डिपार्टमेंट और हमारा EMG डिपार्टमेंट, क्योंकि दोनों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनके सामने भी इसको रिप्रेजेंट किया जिसमें हमें काफ़ी अप्रिशिएशन मिला. और उसके पश्चात सर RED सर का रिव्यू मीटिंग था वहाँ पे, उसके सामने भी इसके बेनिफिट्स दिखाए गए सर. नेक्स्ट उसके बाद CO मैडम का विजिट था जिसमें विजिलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिप्रेजेंट किया गया कि हम कैसे ट्रैकिंग रख रहे हैं, बैक रिकॉर्ड रख रहे हैं. सर इसमें जो है बी ऑडिटर का एक्सेस हुआ था, उसमें भी हमने ये हमारा न्यू इनिशिएटिव्स को दिखाया तो उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएशन दिया. और रिसेंटली सर अभी हमने 13 to 15 फरवरी को जो यहाँ पर IPS टेक्नो गैलेक्सी हुआ उसमें भी मॉडल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जिसमें हमें काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन मिला. खासकर 4 प्लांट सर NTPC कोरबा, सीपत, NSPCL भिलाई और महोदय से हमें ये वहाँ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोच किया गया है सर इसको. और वेस्टर्न रीजन 2 ने सर इसमें टेक्नो गैलेक्सी में भी विनर का प्राइज़ जीता था मॉडल एग्जीबिशन में. दैट्स ऑल सर. थैंक यू. थैंक यू सर. तो ये पूरा सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डेवलप किया है? यस सर, इन हाउस सॉफ्टवेयर. इन हाउस सर. इनके से जो आप डाटा स्टोर करते हैं, यस, उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का यस सर. एक्चुअली इसको जो है हम जो है केवल सिंगल ड्राइव्स है और जो ड्राइव्स पे डाटा स्टोर हो रहा है उसका जो एक्सेस है सर केवल जो एडिटर है, फिलहाल तो मैं ही हूँ सर जो उसके पास ही है कि, और एक एंट्री करने के लिए जो यूज़र इंड पे है वो उसके पास वो केवल एंट्री कर सकता है सर. एंट्री करने के पश्चात उसमें वो कोई मॉडिफिकेशन कभी नहीं कर सकता, डाटा में कोई चेंजेस वो कर नहीं सकता सर. तो काफ़ी सिक्योर है सर, डाटा में कोई हेरफेर मैनिपुलेशन पॉसिबल. स्टोर्ड है डाटा, यस, वो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या? कोई ठीक है उसमें कोई टेम्पर नहीं कर सकता. यस सर. डाटा को. यस सर. बट वो डाटा लूज ना हो जाए, हाउ डू यू इंश्योर? यस सर, वो एक्चुअली एक सिक्योर्ड मतलब हमारे ड्राइव्स में है सर, वो मतलब किसी के पास एक्सेस नहीं है लॉगिन आईडी पासवर्ड. तो NTPC का जो
सर्वर है उसमें है? नहीं, अभी उसमें नहीं डाले हैं सर हम उसमें। तो कैसे, हाउ डू यू इंश्योर? मतलब गूगल ड्राइव में अभी सर, वो Google Drive पर्सनल में है सर, सर हमारे वन अभी। ड्राइव में सर बता। पर्सनल तो इसको आपको यस migrate यस, उसको Drive अभी can हम be done, इनहेंस वो कर रहे हैं सर, सेफ्टी के आईटी के साथ बात करके इसको आगे कर रहे हैं सर। ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है सर, हम अभी आईटी के साथ इसको बात कर रहे हैं सर, आगे बढ़ाएंगे अभी सर। बिल्कुल 6 months old ऐप। और वो आपको वो जो होता है ना लास्ट कैलेंडर ईयर में कितने यस सर वो भी है ये सर। तो इसी का ही आता है। यस, इसके अलावा भी हमने कुछ वो भी एक प्रेजेंटेशन दिखा दो थे जरा। सर। यस सर, वो हमने शुरू में मेंशन नहीं कर पाए थे। सर इसमें हमने पहले एक सेफ्टी पर PTW सेफ्टी परमिट के लिए भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जिसमें जो है प्रॉपर आइसोलेशन नॉर्मलाइजेशन, जब मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में था तब डेवलप किया था सर। उसमें भी पीसी के लिए यहाँ पर आया था मैं, तो उसमें जो है जो भी आइसोलेशन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, तो उसमें जो इंश्योर कर रहे थे जितने भी उसमें सेफ्टी के पॉइंट्स ऑफ व्यू रहते हैं हमारे, प्रॉपर आर्क शूट पहन रहा है कि नहीं, वो सारे इमेजेस के साथ सेम प्लेटफॉर्म पे डेवलप किए थे सर उस टाइम भी, और काफ़ी सक्सेस रहा था सर। वो अभी भी इम्प्लीमेंटेबल है, वहाँ यूज़ कर रहे हैं सर। सेकंड है सर जो पिछले साल हमने नहीं, जो सबको एक्सप्लेन मत कीजिए, यस टाइम लगेगा। टोटल आपने 9 किए 9 किए सर। 9 में से 2 पार्शियली कंप्लीटेड है, रेस्ट आर कंप्लीटेड। बाकी सही है सर। सर यस सर। यूज ऑफ बॉटम मैच इन प्लेस ऑफ सैंड। यस सर। ये तो ऑलरेडी हो रहा है ना। ये सर BIS मतलब के- विद BIS के साथ हम कर रहे हैं नहीं सर। ये NTPC लारा फर्स्ट पावर प्लांट बना जिसको सर्टिफिकेट मिला। BIS सर्टिफिकेट मिला विथ यूज ऑफ बॉटम एश। पहले हमारा जो है 55% बॉटम एश फ्लाई एश रहता था और 30% उसमें सैंड होता था सर। तो उसको जो है रिप्लेस कर दिया, अभी हम 90% तक बॉटम एश मतलब टोटल एश यूज कर रहे हैं और सर। ये मॉनिटरिंग ऑफ एश यूटिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? ये भी कुछ वो ऐप बनाया था इसके लिए? वही है सर, डिजिटल मॉनिटरिंग जो अभी कर रहे थे हम अभी लोग। जो कर रहे हैं वही है। यस सर, यस सर, यस सर, वही है। हाँ, वही सेम ही है। सर उसको पार्ट वाइज किए थे सर। सर पहले मतलब अभी इसमें हमने अलग अलग चीज इम्प्लीमेंट किए ना कर रहे हैं सर। सर। शुरू में GPS नहीं था, शुरू में हमने उसको केवल इमेज कैप्चर के लिए किए थे। अभी हम उसमें जो है सब ऐड कंप्लीट कर रहे हैं सर उसमें, जियो टैग एंड जियो GPS वाला। हाँ सर, इसमें चालान एंड एवरीथिंग सर आ रहा है। टेयर वो वेट एंड चालान ग्रॉस वेट, सारे रिस्टोर करते हैं सर चालान के टेयर साथ। वेट, ग्रॉस वेट, जितना मतलब पॉसिबल प्रूफ रख सकें सर हम एविडेंस के में, वो सारे कलेक्ट वेब्रिज कर का रहे सर हैं जो सर। रिकॉर्ड है, डिजिटल रिकॉर्ड, उसको भी पे आता है इमेज। यस सर। इसमें ड्राइवर का फोटो नहीं आया सर ड्राइवर का फोटो, ड्राइवर का सर वो फ्रंट से हम लेते हैं ताकि वो ट्रक का नंबर आ जाए, नंबर प्लेट्स। और इसके लिए हम जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर एल्कोहल टेस्टिंग, तो उसमें आएगा अगर जैसे वो कुछ गड़बड़ियाँ करती है तो नेक्स्ट टाइम उसको अलाउ नहीं करेंगे। यस सर, रहता है सर, लाइसेंस रहता है। यस सर, वो जब हमें केवल लेकिन ये प्लांट के लिए इम्प्लीमेंट है सर। जब वो प्लांट में साइलो के लिए लोडिंग आता है हमारे पास, तब गेट पास बनाने के लिए उसको सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तभी हम डाइक के लिए सर इतना ज़्यादा व्हीकल्स है अभी 300 to 400 सारे का वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमने वही फ्यूचर प्लान किया है सर कि डायरेक्टली वन टाइम डाटा व्हीकल्स के साथ आ जाएगा, तो M परिवहन से सारे उसके फिटनेस और वैलिडिटी सारे आ जाएंगे हमारे पास। थैंक यू सर। Thank you, Team Srijan. Our next team is Khargon Sankalp. Members are Priyabrat Mandal, Manish Kumar Vaske, Viswanath Devnath. Team Sankalp, Khargon. ये फाइनल होना है। ये आगे नहीं, नेक्स्ट ईयर आगे ये करना है। ऐसे पकड़ लो ना। हेलो हेलो हेलो।
जय श्री राम। नहीं नहीं, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ खाली है। डाल दो। सही बात है, थोड़ा पीछे वाले को घंटी बज रही है हर 5 मिनट। बोल दिए ऐसे में तो क्या होश नहीं रहता ना, ये जज लोगों को, जज लोग अपने स्कूटर में बैठ जाते हैं। Team is ready, so can we start? Okay, we shall start. Huh? So, good afternoon all, respected judges, seniors, my dear Time. colleagues. Team Sankalp from NTPC Khargone welcomes you all in RPCC 2024. Our team Sankalp consists of Sri P. Mondal sir, AGM S Management, Sri Vishwanath Devnath sir, Senior DGM FQA, and myself, Manish Kumar Vaske, Senior Major FQA. Our topic of presentation is dry fly ash transportation through portable closed container in BLC rack. This is a unique initiative of NTPC Khargone. As we know, ash utilization is very critical for power plant. Our presentation outline consists of ash generation of Khargone, challenges of road transport, then what's the need of our, then thought process, brainstorming, then pilot project we took, their objective, execution, learning, highlights, and what other future options. This is ash data of Khargone. So total ash production is per day is 4,836 metric ton. Average fly ash production per day 3,773 metric ton. Bottom ash production 1,063 metric ton. Average pond ash utilization per day 3,164 metric ton, which is mostly utilized by NHI through road transport. Average fly ash utilization per day is 2,633 metric ton through road and rail transport. And balance fly ash which we sent in ash dike is SCST lagoon per day is 1,170 metric ton. This is a crucial part which we focus on our pilot project. Now I invite Devnath sir for further. ये वाला नीचे करना है। So हमारा थ्रस्ट इस प्रेजेंटेशन में ये 1170 मेट्रिक टन लिक्विड डिस्चार्ज फ्लाई ऐश को हम लोग पॉन्ड ऐश में भेज रहे, उसको वहाँ नहीं भेज के जो वहाँ मोटो है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज के हिसाब से आगे हमने जो प्रेजेंटेशन आपको उसको ब्रीफ करेंगे। इसमें कस्टमर बेस जो है हमारे कहाँ हम लोग अर्निंग्स कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। NHI का जो है वो बॉटम ऐश है, आज स्पेंड कर रहे हैं, कल पैसा तो वो मिल जा रहा है। और ये जो 30% 10% कलेक्शन, ये जो 30% का जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो मेरा पॉन्ड ऐश है उसको मुझे कम करके उसको हम लोग ने टारगेट 10% रखा था कि वहाँ से DFA कलेक्ट करना है। ये एक मंथ वाइज यूटिलाइजेशन मंथ वाइज एक है जहाँ पे यूटिलाइजेशन कौन से मंथ में कम हो रहा है उसको दर्शाया गया है कि फेस्टिवल सीजन है, रेन है, यहाँ मुझे कम आ रहा है। अब ड्राई फ्लाइज यूटिलाइजेशन का भी मंथ वाइज यह भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया जा रहा है कि कहाँ पे ये पॉइंट ये बॉटम जा रहा है। अभी चैलेंजेस जो रोड ट्रांसपोर्ट का है सर, वो जैसे कि खरगोन आप जानते 2 ज्योतिर्लिंग के बीच में है और ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, तो रिलीजियस प्लेस है और रोड क्लोजर के बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है। ट्रैफिक कंजेक्शन है, रोड्स बहुत जगह तो रोड सिंगल लेन रोड है, डबल लेन रोड है। फिर एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, बाय रोड अपन ले जा रहे हैं तो उसमें एनवायरमेंटल चैलेंज तो रहता है, ऐश का थोड़ा स्लिपेज होता है, ये होता है। सेफ्टी चैलेंजेस भी रहता है उसमें, और डिपेंडेंसी ऑन द फ्यू एजेंसीज कम है, उसको भी ले जाने के लिए तकलीफ रहता है। अनलोडिंग इशू फ्रॉम बल्कर्स ड्यू टू मॉइस्चर, एक वो भी एक रीज़न रहता है सर। एक रेल ट्रांसपोर्ट के चैलेंजेस है कि बल्क कंज्यूमर्स अराउंड अस डज नॉट हैव
railway siding and unloading facility. Or traders serving to medium and small consumers also has final reach through road only. मैंने डिस्टेंट कंज्यूमर्स मोर देन 300 किलोमीटर्स जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसका कॉस्ट हाई रहता है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों? कम पैसे में उसके पास पहुंच सके. नीड ऑफ द आवर सर हमारा है कि 100% एस यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट इन ड्राई फॉर्म, मिनिमम एस टू एस डाइक, ट्रांसपोर्ट इन मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर. स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस को मुझे फॉलो करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है थ्रू ऐश, और ट्रांसपोर्ट ड्राई फ्लाई ऐश ऑन चीपर रेट. अब सब ये हमने जो अभी आपको टॉपिक में दिया है बीएलसी रैक, ये बीएलसी रैक को हमने कैसे सिलेक्ट किया है? अब बीएलसी रैक क्या है? इट इज़ ए बोगी लो प्लेटफॉर्म फ्लैट वैगन्स. एक दिन हमारे मेंबर मंडल साहब खंडवा रेलवे स्टेशन में खड़े थे, एक कंटेनर का एक ट्रेन निकला, भरे हुए कंटेनर्स. तो भरे हुए कंटेनर्स जब गया कंटेनर में तो बहुत सारे बल्क मटेरियल ले जा रहे थे, वो सीमेंट कंटेनर था और उसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ था नवकार. तो इनको तुरंत क्लिक किया, ये आए ऑफिस फटाफट, फिर हम लोग को बुलाया, हम लोग बैठे, फिर हम लोग नवकार के साथ उसको फ़ोन करके उससे पूछा कि भाई बल्कर में क्या ले जा रहे हो? बोले मैं बल्कर में तो सीमेंट ले जा रहा हूँ. तो हम सोचे जब सीमेंट ले जा सकते हो तो मैं ऐश भी ले जा सकता हूँ, बट ऐश को ले जाने कहाँ सीमेंट का कॉस्ट है और कहाँ ऐश का कॉस्ट है, दोनों में वाइड डिफरेंस है. तो उनसे ही हम पूछे कि भाई हमको यहाँ से ऐश ले जाना है तो ले जा पाओगे? बोले हाँ, क्यों नहीं ले जाएंगे. अगर विन विन सिचुएशन है, हम आपको प्रपोजल देते हैं, आपको लगता है कि आप दे पाएंगे तो विल टेक इट. तो उन्हें बुलाया गया, बैठ के हम लोग बातें किए, बातें करके वो प्रपोजल को, जो हम लोग बैठ के बात किए, वो प्रपोजल को हमारे एचओपी के सामने सबमिट किया. तो हमारे एचओपी कन्विंस्ड हो गए. जब एचओपी कन्विंस्ड हो गए, अब इसमें अप्रूवल के लिए फिर हम लोग ने इधर हमारे एचओपी सर ने आरडी के साथ बात किया WR2 में. उन्होंने भी उसको प्रपोजल उनको अच्छा लगा तो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक अप्रूवल दे दिया कि पायलट प्रोजेक्ट पहले करो. तो उस पायलट प्रोजेक्ट को कैसा किया गया है उसके लिए मैं हमारे मंडल सर को आमंत्रित करता हूँ. मंडल सर. थैंक यू सर. सो हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे सर ने बोले हैं कि आरडी साहब ने 2 पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमको अप्रूवल दिए. तो उसमें हमारा पहला बीएलसी रैक जो हम लोग किए थे वो 30/9/2023 को किए थे. तो इसमें हमारा मेन मोटो ये था कि बल्क ड्राई फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर्स में हो. तो उसके लिए हम लोग जो पार्टी है, अल्टीमेटली उनका नाम मेसर्स कनेडियन बिल्डिंग सॉल्यूशंस, उसका जो हब है वो महाराष्ट्र में है, पनवेल में है. तो वो हमसे दिस कंटेनर्स का थ्रू, उनका एक्चुअली 45 वागन रहता है बीएलसी रैक में उनका, और एक एक वागन में 2-2 कंटेनर रहते हैं, टोटल 90 कंटेनर्स है. तो हम लोग जब पहला बार जो किए हैं, तो ये कुछ उसका ग्लिम्स है. पहला जो ट्रेन आया था हमारा, इसका आ रहा है, जो संटिंग हो रहा है, तो संटिंग हम लोग थ्रू ऐसे सिग्नलिंग के थ्रू कर रहे हैं. और ये जो है टेलीस्कोपिक थ्रू इसमें आके बैठे. तो हम लोग पहला जो सक्सेसफुल बीएलसी रैक का जो लोडिंग किए थे वो 30/9 को किए थे. हमारा ऑनरेबल कर्नल जी साहब का उसी दिन का सुपरएनुएशन था और मेरे को बोले थे कि मंडल जी इसको करके जाना. तो मैंने अल्टीमेटली हम सब लोग मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अल्टीमेटली उसी दिन सर का हाथ में वो फ्लैगिंग करवा के इसको सक्सेसफुल करवाए. उस दिन हम लोग 2700 मेट्रिक टन 10 घंटे में लोड करके भेजे. तो हम लोग से जब पहली बार ये बीएलसी रैक पहला लोड किया है, उसमें हम लोग को कुछ प्रॉब्लम मिला है. जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये एफएस साइलो है, तो उसमें टेलीस्कोपिक ट्यूब जो है उसको एग्जैक्टली कहाँ पे कैसे मैचिंग करें. तो हम लोग उसको एक्शन कैसे किए, नेक्स्ट जो आया उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन ढूंढे. तो विथ इनिशियल फ्यू संटिंग्स मोर accurate placement was carried out in coordination with the loco driver and the engine driver with the help of walkie-talkie and mobile. वो सिग्नलिंग से नहीं. नेक्स्ट स्टेप में एस लीकेज फ्रॉम द फ्यू कंटेनर्स शुरू में था. तो
हम लोग को पता था और एजेंसी को भी पता था कि यहाँ से लीकेज हो सकता है, तो दे हैड प्रोवाइडेड पुट्टी, तो इमीडिएटली हम पुट्टी डाले तो सील हो गया, फिर हम उसमें ऐश डाले। उसके बाद फिर अपना जो प्रॉब्लम हुआ था लीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो है, हम लोग को एक्सपर्टाइज हम लोग नहीं थे इसमें, तो समय लग रहा था, और एजेंसी का ही पार्टी आए थे, 7 लोग उनका रखे थे, 4 टीम में डिवाइड किए थे हम लोग उसको, तो 8 आदमी आए थे, तो उसमें हम लोग उसको डेडिकेट कर दिए थे, 4 ग्रुप को एक्सपर्टाइज बना दिए थे, भाई कैसे ढक्कन कैसे खोलना है और कैसे उसको बंद करना है। और लास्टली हम लोग जैसे शुरू में हम लोग ऐसे ही भर रहे थे बिना टाइमिंग का, तो बाद में मैनुअली जब शुरू में कर रहे थे, बाद में हम टाइमर बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हमको बाद में बहुत फैसिलिटी मिला। तो ये अपना लोडिंग टाइम है एज पर द ग्राफ, आई विल डिस्कस इट लेटर। इसमें सर हम लोग देखें कि पहला जो रेक है वो लोडिंग टाइम 10 घंटा हुआ, तो हम इसका रेलवे जो है 6 घंटे का ही डेमरेज, 6 घंटा डेमरेज फ्री देते हैं, तो 6 घंटे के अंदर हम कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको डिजाइन भेजे हैं। मैं बोला कि तुम लोग का जो एक कंटेनर्स है उसको ऐसा करो कि टेलीस्कोपिक चूट कर जस्ट नीचे मैच हो जाए, जैसे 1, 4, 6 एंड 8, 9 4 एक साथ ऑपरेट हो जाएगा, नेक्स्ट 2, 5 एंड 7 एंड 10 ये 4 एक साथ हो जाएगा। तो वो जो मॉडल हम लोग रखे हैं हम आपको दिखाएंगे सर, कि हम एग्जैक्ट मॉडल में दिख जाएगा कैसे हम लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं फील्ड में। तो हम लोग उसको डिजाइन भेजे, और डिजाइन भेजने के बाद उन्होंने उसको किया, काफ़ी बाद में इम्प्लीमेंट हुआ, और अभी हम लोग का टाइम जो है 7 घंटा 40 मिनट तक का आ चुका है, लेस देन 8 आवर्स आ चुका है, और हमारा अभी टारगेट है उसको 6 घंटे में लाना। तो ये अपना जो सेकंड जो लोड हुआ था उसका हिस्ट्री है, उसका कुछ ग्लिम्स आगे बढ़ो। और सेकंड BLC रेक का जो है उसमें क्या हुआ था, एक एक कंटेनर में एक कंटेनर का जो ढक्कन है एक एक टेलीस्कोपिक चूट में मैच हो रहा था। तो हम लोग शुरू में क्या किया, जो साइलो आगरा जो सबसे फ्रंट में है उसी को सेंट्रल लाइन मान के उसी से हम लोग फिलअप किए। उसके बाद जो कंटेनर का जो ढक्कन B, C, D जो मैच होते जा रहा तो उससे भी करते रहा, लास्टली आगरा से बाकी सब फिलिंग किया। तो इस टाइप का हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते गए, और करने के बाद अल्टीमेटली इसमें भी क्या हुआ है सर, जबकि यहाँ पे एक एक वागन मतलब एक एक कंटेनर ही भर रहे थे, तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगा, 10 घंटा 40 मिनट। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते रहा। फॉर नेक्स्ट आई एम गिविंग मनीष। तो जो कॉस्ट डिराइव हुई है वो आई है 1387 रुपीज़ पर मेट्रिक टन, और वो विदाउट डैमरेज अगर BLC रैक से भेजते हैं। अगर विथ डैमरेज है जो एक्चुअल में आई थी उस टाइम में, वो आई है 1418 रुपीज़ पर मेट्रिक टन, और अगर हम इसको रोड के थ्रू भेजते हैं तो वो आती है लगभग 1657। तो ये साफ शो कर रहा है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अपना रेल ट्रांसपोर्ट इतना चीपर है, 200 रुपीज़ पर मेट्रिक टन। नेक्स्ट आई एम कंटिन्यूइंग इट। जो अपना ये जो रेल से अभी हम लोग का करीबन एज ऑन डेट 6 करोड़ हम लोग कमा चुके हैं एज बेच के। तो उसमें हमारे ये जो 44 एक्स हमारा ऑलरेडी इसमें चला गया है। दिस इज फॉर द नॉट ओनली इन पैन NTPC बट ऑल्सो इन पैन इंडिया। वी आर फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कंटेनर्स टू ट्रांसपोर्ट DFL। सो 44 रेक में हम लोग ऑलरेडी 1,20,000 हम लोग मतलब सप्लाई कर चुके हैं, जिसका वैल्यू करीबन 1 करोड़ के आसपास है। बाकी सर इन फ्यूचर ऑप्शन के लिए मैं देवनाथ जी को इन्वाइट कर रहा हूँ। सर ये क्लोज कंटेनर्स जैसे अभी रैक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रैक आता है जा रहा है, तो अगर हमारे पास स्टोरेज है तो मैं एक रैक स्पेशल बुला के उसको लाके साइट में रख देता हूँ, वहाँ उसको फिल करके रेडी रखता हूँ कि सेकंड रैक जब आता है तो उसको आगे लेके जाके हम उसको रैक कंटेनर में चढ़ा के उसको। अभी हम लोग का 4 से 5 रैक ये मेन है। आपको जितना बाहर आप एडवर्टाइज करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगा, फ्लायर्स का रिक्वायरमेंट हर स्टेट्स में उतना नहीं है। जैसे अभी हमारे यहाँ से जो जा रहा है वो सीमेंट फ्लायर्स जा रहा है, गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाएंगे। तो हमारा जो टारगेट था 1170 मेट्रिक टन को जाने के लिए, उसमें हमने अचीव अभी तक जो किया वो 265 मेट्रिक टन का किया। हमने 10% हमने तो कवर कर लिया, पर हमको करना है कवर 100%, कि 100% चले जाए फ्लाई ऐश, तो मैं ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज का जो मोटो है वो फुलफिल होगा। ये उसके ग्लिम्सेस है कैसे उसको एक कंटेनर लाते हैं, उसको लाके उसको स्टोरेज करते हैं।
यह भरा हुआ कंटेनर जो है उसको कालमाल वो ऐसे लेके आ रहा है, और दूसरा जो देख रहे हैं उसको ट्रेलर में चढ़ा कर ट्रेन में खाली आके ट्रेन में जा रहा है। ट्रेन के हिसाब से इसको लेके जा रहा है। ये इसका कंटेनर का जो शेड है, स्टोरियर। और इसका एक चीज़ और बैक कीजिए, इसमें एक और भी एक फैसिलिटी है, बैक और बैक बैक ऊपर वाला ले रहा ना, नहीं ले रहा है। हाँ सर, इसमें जो है हम लोग का क्या है, ये नियर फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं सर, तो हम लोग अभी फ्लायर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इसको लिफ्टिंग ऑफ जिप्सम एंड पोलर्स, उसके लिए भी सेम तरीका इस कंटेनर से हम लोग बाहर इसको भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका पोर्टेबिलिटी, जो और कहीं पे नहीं है। ये एक एक कंटेनर को हम लोग कालमक से या टेलर से उठा के कहीं पे भी डाल सकते हैं, और इसके थ्रू हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हाई क्वालिटी। हमारे पास अल्ट्रा फाइन एस बी खरगोन में अभी अवेलेबल है, वी हैव टेस्टेड ऑल्सो एंड इट इज़ सर्टिफाइड। सो ये DFA जो है और जिप्सम, ये दोनों को हम शिपमेंट के साथ भी हम इसको आराम से भेज सकते हैं। दिस इज अनलोडिंग एट देयर स्टेज। सर पिछले 1 साल से हम लोग सर ये जो है हम लोग प्रेजेंटेशन हम लोग प्रेजेंट किए हैं। अच्छा, अभी सर हमारा मोटो है इस प्रेजेंटेशन का, जब से हम लोग ये टीम बनाए हैं, प्लान एग्जीक्यूट एंड सक्सीड। तो अब सक्सीड का सक्सेशन अगर 0 LD लेंगे तो हम 50% में पहुँचे हैं, बट वी आर इन अ फॉरवर्डिंग जोन, कि मैं जब तक उसको ZLD नहीं करूँगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। थैंक यू सर। नेक्स्ट हाँ बस क्लिक करो, किसको क्लिक उसी को नेक्स्ट। साउंड कर दीजिए। Actual picture of our station PLC rec. सर थोड़ा वो वर्किंग मॉडल भी अगर साहब देखें, जब वर्किंग मॉडल साउंड म्यूट कर दो उसको सर, बंद कर सर, बंद सर, 2 मिनट सर मॉडल लिखा देते हैं सर। हाँ सर, ये एक्चुअली ऑपरेशन भी है, वर्किंग भी है ये। हाँ, ऑपरेट भी करता है आगे पीछे। अभी जस्ट इसको सर IPS 2025 में भी इसको डिस्प्ले किया था। सर 30 सेकंड सर, इसमें क्या है सर, ये सप्लाई दिया, इनका जो संटिंग करेंगे ने ये किया, इशारा किया, अब ये हुआ संटिंग, अभी 1, 4, 6 एंड 9 आ गया। अभी ये टेलीस्कोपिक जो चूट है इसको ऑपरेट किया, चारों एक साथ नीचे आ गया। अभी 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा भर जाता है। फिर नेक्स्ट हंटिंग में हमारा 2, 5, 7 एंड 10 वो आ जाएगा। तो इसमें जो आपका सप्लाई है 100% ड्राई फ्लाई है। यस सर, डिस्पैच करना है। यस सर। आप अपना एक्शन प्लान ये है कि सर हम लोग विदिन 1 ईयर इसको पूरा कर लेंगे। अभी हमारा फिलहाल चल रहा है सर 75% चल रहा है ड्राई फ्लाइज का जो यूटिलाइजेशन 75%। हम लोग रेल का जो डिमांड है सर अभी बहुत जगह से आ रहा है सर, अल्ट्राटेक से भी आ रहा है, और ये जो अभी कनेडी बिल्डिंग सॉल्यूशंस है वो अभी पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट ऑक्शन में और पार्टिसिपेट करेंगे। अभी फ्रीक्वेंसी मंथली 4 to 5 आ रहा है, तो दिस विल बिकम 12 to 15 पर मंथ। तो ये अगर हो जाएगा, अभी जैसे हम लोग 10% जो 30% पहले दिखे, 20% तो बॉटम है सर, जो कुछ डाइक में जाएगा ही, कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो 10% है वो SSG का आके डाइक में गया आया था, तो वो 10% को मिटिगेट करने के लिए अभी हमारा 265 टन हमारा ऑन एन एवरेज रेल में जा रहा है, उसको 11 से 70 बनाना पड़ेगा। तो उसको जस्ट 4 टाइम बढ़ा देंगे तो आ जाएगा। तो हमारा रेक का नंबर जो है अभी जो 4 है मंथली, दैट विल बिकम 14 to 15। तो उसके लिए सर डिमांड आ रहा है, और नंबर ऑफ रेक्स हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा सर। अवेलेबिलिटी का क्या पोजीशन है, ये जो हाँ सर, BLC रेक का सर एक्चुअली क्या है ना, ये जो कनेडी बिल्डिंग सॉल्यूशंस है ये अपना ट्रेडर है, और वो ये लेता है नॉपकर कॉरपोरेशन बोल के है, उसका महाराष्ट्र मुंबई में हेड ऑफिस है। उनके पास ट्रेलर भी है, BLC रेक भी है, कंटेनर भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनसे पूरा BLC रेक को ले लेते हैं हायरिंग में, लेके अपना कंटेनर कैपेसिटी कितनी है सर 5 RPCC में इसको करना है। हाँ सर, तो
सर वो कर सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी उनके पास फिलहाल अराउंड 540 एम्प्टी कंटेनर्स है और टेलर भी करीबन 10 से 15 उसके पास ऐसे BLC रैक है। सर ये 76 रुपीज़ पर मेट्रिक टन से परचेस करके लेके जा रहा है। ये पैन NTPC में होने से ना सर, तो आपका ZLD का जो थॉट है, आज हम ZLD की बात करते हैं, ZLD का थॉट को इस प्रोसेस से अगर मैं ड्राई निकाल सकता हूँ तो ये जहाँ तक रेलवे ट्रैक है इंडिया के पास लास्ट फार एंड ईस्ट तक ये वहाँ तक जा सकता है ये मटेरियल, बट उसका कंजम्पशन के लिए वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा सर। हमारा मेन मोटो ये है सर कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट फुल फ्रेंडली है, दूसरा सर डिस्टेंस नहीं सर, शुरू में सर मॉइस्चर का इशू आता था, उस टाइम हमारा PLC PCL लाइन इंसुलेटेड नहीं था। अभी वो PLC लाइन जो है इंसुलेटेड हो चुका है और हम लोग फ्लूइडाइजिंग जो है और हीटर है उसका भी टेम्परेचर सेट पॉइंट भी बढ़ा दिए हैं, तो अच्छा से फ्लूइडाइजिंग भी हो रहा है। अभी टेम्परेचर सर अराउंड 50 डिग्री के आसपास आता है सर आज का टेम्परेचर। ब्लोअर का सर 120 और कट ऑफ 140। अभी 44 चला गया, 45 आज आ रहा है। आज आ रहे हैं नहीं सर, हमारे यहाँ पे सर इसी का ही पहला हुआ है और हम लोग एक कंडीशनड बॉक्सन वागन भी हम लोग 7 दिन पहले भेज चुके हैं। हाँ, लेकिन ये हमारे पैन NTPC में हमारा ही स्टेशन में पहली बार किए थे, ये 30 सितंबर 2023 से अभी तक 44 चला गया है सर। डेमरेज में बता रहा हूँ सर, ये हमारा अभी एवरेज टाइम आ चुका है 8 घंटे का आ चुका है, इसमें अभी 2 घंटे का डेमरेज टाइम लग रहा है। 6 घंटा फ्री टाइम है, 2 घंटा लग रहा है। वो भी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग का क्या है सर, OHE लाइन देखिए यहाँ पे खत्म हो गया है सर। ये OHE लाइन खत्म होने का कारण में क्या हो रहा है सर, तो लास्ट का जो 6 कंटेनर है उसको भरने के लिए इंजन कट करके लेके जाना पड़ता है और साइड से डीजल लोग को लगता है, फिर डीजल लोग को जब भर लेता है, भर के बाहर आता है, फिर वो लूप लाइन से मेन इंजन लगे, इसी में सर हमारा 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। ये अगर हम माइनस कर लेंगे, उसका भी तरीका से ढूंढ लिए है। हमारा HMDC का जो है ना सर, वो HMDC का हाइट थोड़ा नीचे है, वो चारों HMDC हम विदिन 1 मंथ डिजाइन कर रहे हैं कि ऊंचा कर देंगे, तो पेंटोग्राफ को नीचे करके उसके बाजू में ही हम ये लोकोमोटिव को लगा देंगे, तो हमारा 6 घंटे का अंदर ही ये पूरा हो जाएगा, नो डैमेज। ये हमारा टारगेट है सर। वो कंटेनर के अंदर आप ड्राई भर रहे हैं कि वेट करके भर रहे हैं? प्योर ड्राई। प्योर ड्राई यस सर। अगर वो ड्राई है तो जब भरते हैं तो इधर उड़ता है कि नहीं? नहीं सर, उसका सर पीछे से वेंट लाइन दिया हुआ है, हल्का सा पतला सा वेंट लाइन दिया हुआ है, कोई उड़ता नहीं सर। नहीं उड़ता है? नहीं उड़ता है सर। अभी जैसे एक रैक में कितना बोगी होगा, कंटेनर होगा? सर 90 कंटेनर से इंटू 35 190? नहीं 35 मेट्रिक टन एक का कैपेसिटी है गैस का। 90 कंटेनर 90 चार करके भरेंगे ना? हाँ सर। इसमें क्या दिख रहा है, मतलब बाकी 2 को कैसे भरोगे? इसमें थर्ड फंटिंग में आ जाएगा सर, 3 और 8 2 आएगा सर, यानी 4 और 4 हो गया 8। हाँ, फिर 2 बचेगा, दो ही नंबर 1 नंबर 3 में लगेगा। किसी के नीचे मैच नहीं करेगा वो? नहीं करेगा सर। इसमें क्या है ना, फर्स्ट फंटिंग तो दिखा है, सेकंड फंटिंग दिखा, इसमें देखिए ग्रीन कलर का दिया हुआ है सर 3 और 8, वो फिर साइलो आगरा एंड साइलो कलकत्ता में मैच होगा। मतलब ये 10 कंटेनर भरने के लिए 3 फंटिंग काफ़ी है, तो ऐसे 9 सेट ऑफ आएगा, 9 × 3 27 फंटिंग। ये सर हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Team Sankalp Khargon. Our next team is Black Diamond Korba. After that, Technoid Sipat. Black Diamond Korba team members are Santosh Kumar Soni, Ashish Agarwal, Raj Mangal Gond, Ram Manohanaray Konkena. Black Diamond Korba. नहीं हो पाएगा।
किन्हीं के पास पॉइंटर चला गया है, पॉइंटर? ग्रीन पॉइंटर एक ग्रीन कलर का पॉइंटर था, ग्रीन कलर पॉइंटर। देखे ना ग्रीन वाला पॉइंटर ये नहीं ग्रीन पॉइंटर वो तो हम लिए नहीं है, वो हम लिए नहीं है। हाँ, हम इसी से करते हैं, हम इसी से कर देते हैं। हेलो So we can start. Okay, we shall start. Good afternoon, everyone. नीचे नीचे चलो रुको ना, पॉइंटर दो बंद करो। फर्स्ट से बैक कीजिए, ठीक है नहीं स्टार्ट फिर से। As you can see, this was one of the most tragic incident that happened in one of our NTPC project. And what is this? This was one of the most terrifying conveyor belt fire incident that happened at one of the projects. And the question is, do we really want such situation? And the answer is obviously no. If I ask to everyone, we don't want such type of situations to happen in any of the projects. This could happen anywhere. And the question is, are we prepared for this? Millions are lost time, equipment, and trust in such type of incidences. One failure can put countless lives at risk. Question still remains the same. To address this, we team Black Diamond from NTPC Korba, myself Ashish Agrawal, myself Santosh Kumar Soni, myself Rajmangal Gaun, myself Ram Mohan Rao, are presenting you with one of the most burning topics of CHP. We are going to present a topic on advanced conveyor belt protection system. And again, the question is, why do we want this? To ensure safety, durability, reliability, and efficiency of the CHP conveyor system. This was our last year performance. In the last financial year, we did 8 projects in which we are able to complete 6 and 2 are in progress. And we were first at the station level also. Come and let's have a look what we have done physically, practically at our CHP Korba. For a dedicated CHP engineer, such type of incidences is definitely a kind of setback in his career. And we don't want such type of situations to happen with our conveyor belts, because the conveyor belts are the heart of any power plant. And if such situations are happening, our heart aches and breaks. This is the outline of the presentation which we are going to present. First, we will understand the conveyor damages that happens at CHP, the methods for increasing the belt life, advanced technologies and systems that we have incorporated, and some in the planning phase. This is a general coal floor path of any CHP that everybody knows. This is the layout of NTPC Korba. And this is a general anatomy of any conveyor system.
These are the common type of damages in our conveyor belts. Those are impact damage, entrapment damage, edge damage, and delamination, etc. We'll go in detail. Impact damage. Large or soft material when striking the belt's top cover is enough force causes punctures and tears. Causes are adequate loading system design, improper impact absorbance. Effects are belt surface damage, reduced belt life. Second one is entrapment damage. Foreign materials like stones, debris, other objects get trapped between the belt surface and the stud board. It damages the belt through abrasion and cuts. Causes may be improper steering, poor housekeeping and maintenance. Effects are abrasion and cuts, belt misalignment. Edge damage. Sir, we can see in the picture the edges of the belt worn or torn. This happens because of the improper tracking issue, material accumulation on the rollers. It affects the spillage of material. Frayed edges reduces the belt width and reduces the life of the belt. Delamination or ply separation. This is also a type of defect where the different plies of conveyor belt get separated. There are various reasons. Some of them are overloading, improper tensioning, impact from sharp material at the joint portion. It ultimately affects, reduces the belt strength, longevity, and leads to complete belt failure. Sir, this is another type of defect in the belt. The top cover worn out because of continuous material loading and improper cleaning. The result is failure of the belt. Next. Sir, this is the cut, rips and grooves in the belt caused by metal piece or the sharp edge foreign material. When any housekeeping is not properly done, then this type of activity done and the result is failure of the belt. This is a belt cleaner damage. This is also one of the kind of damage. This usually happens when we are installing a wrong belt cleaner. Sometimes excessive pressure is put over the belt, and due to this, improper blade to belt contact happens, and ultimately it causes stretch marks over the belt. This is the top cover cracking. This happens due to the carrying of during reclaiming. Usually, we are carrying the smolder coal, which is in a hot condition. What it causes is this damaging of the top cover of the belts. Heat damage. Heat damage is mainly due to prolonged exposure to the high temperatures. Causes may be due to handling of hot materials and extreme operational environments. Effects are top cover hardening, cracks on top cover, deformation, and it shortens the belt life. Junction joint failure. Junction joint failure occurs mainly transition points where belt shifts from flat portion to troughed portions, mainly at tail end areas. Okay. Causes may be outer portion of the belt stretches more than the center portions and high tension at junctions. Effects are it damages the belt's appearance and weakens the belt's integrity. Belt cubbing. Sir, here you can see in the picture, the belt forms a permanent curvature along the direction perpendicular to the direction of the treble. It forms a shape like a cup. It happens because of the excessive heat exposure, improper transition distances. It affects basically the surface area at the bottom portion, reduces the surface when the conveyor belt leaves the surface contact, mistracking issues, sway issues, increasing wear and tear. Belt camber. Sir, this type of defect comes when the belt forms a curvature like a bow instead of remaining straight. This happens because of the poor manufacturing, excessive tension during the operation, uneven transition distribution. It also affects the belt during operation. It increases the contact with belt edges, accelerated wear and tear, and sway tendency increases. Sir, up to now you have seen the different type of defects in the belt. Now, as our topic is advanced production system of the belt, there are our mitigation strategy. How we can select the belt, how we can inspect the belt, maintenance proper cleaning, proper skirt board fixing, and what type of advanced monitoring system we can use for protection of the belt. So these are some of the daily routine activities, strategies which we are using for protecting our belts, which includes visual inspection, cleaning, lubrication, tensioning, and the component replacement. Presently, we have some basic belt protection system in our conveyor system to safeguard the men and machinery. Those are zero speed switch, belt sway switch, pull cord switch, fire protection system, and belt monitoring system, etc. Sir, some of the methods that we have already incorporated in our
project, and for saving the life of belt, some of them are stripped ceramic lining, use of R-flex compound, use of belt tensiometer, use of standard skirt rubber, automatic greasing system. Sir, this is a strip ceramic legging. In place of normal conventional type of legging, we use ceramic legging. The advantage of ceramic legging is more strength, more power, and more life. This is the RFX compound which we are using nowadays in our conveyor belts for the filling the shortcuts and wears of the belt. Right now we have increased it for long cuts also. The help of which we are getting a high flexibility. So lagging is actually done over the pulleys to increase, provide traction and friction to the conveyor belt. Belt के नीचे नहीं sir, pulleys. Over the pulleys. Over the pulleys. To get for getting the traction. Sir, use of RFX compound. We are using this new compound for using for getting the belt repairs done. Tensiometer, belt tensiometer device used to measure the tension at various points in the conveyor belts. By knowing effects of incorrect belt tension are excessive belt weights, or slippages, and increased stress on pulleys and shafts. Advantages of using belt tension are ensure precise tension for extended belt life, improve conveyor performance, and reduces downtime. Use of standard skirt rubber. Sir, when we use conventional rubber in-house made, it comes into single pieces, and due to uneven distribution, uneven pressure distribution over the contact surface, the belt gets damaged, and it takes much time to replace. Here the standard rubber comes into the pieces where provides the flexibility over the surface contact and enhances the workplace safety by minimizing hazard, easy replacement during the maintenance. Automatic greasing system. Sir, in addition to the conventional maintenance practices that we are already doing, we have implemented automatic greasing system. Here we are using cartridges, and this is controlled through the applications, and here we can control the quantity, time, and when we go in the range of 10 meters, we automatically connect through the Bluetooth, and we can get the data of like temperature, history, and all. Sir, as Lord Krishna said in the Gita, Karmanya Adhikara se ma phalesu kadachana. We have done a lot for our CHP for protection of the belt, and these are our results. Sir, this is the data of the last 3 years to 22 to up to 25. The trend of the belt consumption pattern is in the reducing trends. This is our achievement. Sir, definitely by incorporating the system, we have achieved some cost savings. In some of the belts, we have already implemented the set systems that we have shown. And definitely, we are in the planning phase of some new systems. With the new systems that we will show in the further slides, definitely we can achieve more higher savings of the conveyor belts. So whatever system we have incorporated by now, if we say that belt costs around 6,000 per meter, in the 3 years average we have saved around 1,000 meters, and it approximates around 60 lakhs. For the 3 years we have saved around 60 lakhs per year. Sir, with more new suggestions, we can reduce consumption of belt furthermore. The savings crores of money of our organization. This is the conveyor protection systems that we have taken from the different projects from the vendors, and these were some of the systems that we found to be helpful for protecting the conveyor protections further. It includes some in-house made systems also, which includes real-time detection system, automatic belt tracker, tapered self-adjuster, impact belt, H-type belt cleaners, belt trip detection system, vertical roller with overspeed trip protection, belt patch detection system. We will go in details further. Real-time detection system. Condition monitoring of large machines can be possible by adapting the real-time monitoring system. Advantages are real-time alignment, vibration monitoring, real-time bearing condition monitoring, enables early detection of faults, preventing major failures. It will give solutions also. Sir, automatic belt tracker system. Sir, as we have already seen, there are many damages happens due to the sear tendency. This device adjusts the conveyor belt to keep them centers, ensures continuous belt alignment, reduces wear and tear, and minimizes the material spillage and losses. Next.
Sir, belt sway is a common problem in the CHP. When the belt will sway, the coal have been accumulated beside the belt. To adjust this belt sway, this type of tapered design of roller we use. By this method, the belt sway adjusted itself. Sir, this is the impact bed. In a conventional type of conveyor system, we are using the impact kind of idler frames. What is happening with the conventional type of idler frames? Due to impact, the idlers are coming out of the frames, because of which the sharp edges are exposed over the belts, causing the belt damage. With the help of this type of impact bed in the receiving chutes, we can reduce the impact. This type of system can absorb the impacts and provides a sliding effect for the belt. Spring-loaded belt cleaners. Normal conventional cleaner may not maintain the constant contact with the belt due to its wear and tear, whereas belt cleaners equipped with spring-loaded tensioners can maintain constant contact with the belt. Advantages are maintains effective cleaning performance with consistent tension, reduces the carryback and prevents material buildup, enhance conveyor system efficiency and reliability. Belt rip detection system, carrying side. Sir, this is a device that used to detect rips, tears, cuts in the conveyor belt system. It basically uses the sensors. Basically, approximately 75% of the belt rips and tears occurs during the material handling inside the chutes, during the stuck up of the foreign material. This ensures the early detection and ultimately saves the belt. So belt patch detection system. If the belt patch will increase, it will damage the belt. We have detected the belt patch in advance and stopped the belt before opening of the belt. Sir, this is a vertical roller with overspeed protection. This we have made in-house. This was our idea. This has been used in Korba. We have made a design and tested in some of the belts. Here what we are using, usually this is used to adjust the return side belt sways, which ultimately rubs the frame and the belt side edges are worn. To prevent this, we have provided a vertical roller. Whenever the belt is swaying, the roller will rotate. We are using that roller speed by, we are using a sensor to sense the speed of the roller and ultimately providing a trip feedback to the conveyor belt. Next. Sir, we have named this conveyor protection system as a ZenZ because it is a more advanced stage of protection systems, and we have already moved on with such systems. For the real-time detection system, already we have received a quotation. Automatic belt tracker, we have raised a PR, tapered self-adjuster, we have vendors visited, impact bed S-type, vendors visited, and so on. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. एक बीच में आपको मेटल का दिख रहा था, पीछे चलिए जरा स्लाइड में एक मिनट फटाफट, वो मूव कैसे होगा? और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे Sliding bars. और पीछे Impact bed. और पीछे Impact Impact bed. bed, yes. This one. Sir, actually, these are the these are kind of sliding bars. This is a system where this system has a wing type of structure. Angle has been adjusted. कन्वेयर बेल्ट को सपोर्ट कर देना है, Impact side में. Support नहीं सर, Impact वो side slide करेगा इसके ये ऊपर में. slide करेगा, Slide करेगा. स्लाइड करने के बाद फिर मुड़ेगा कैसे? नहीं, ये दिस इज फॉर द रिसीविंग चूट. सीधा जो हमारे चूट से कोयला गिरेगा रिसीविंग चूट में और बेल्ट इसके ऊपर पूरा स्लाइड करके आगे जाएगा. ये चुपचाप खड़ा रहेगा ना? हाँ. Yes, sir. अभी बेल्ट गरम क्यों हो जा रहा है? बेल्ट तो चुपचाप कोयला लेके जाना चाहिए उसको. हाँ. वो गरम क्यों हो रहा है? नहीं सर, हीट वाला जो इफेक्ट है वो अलग है सर. इसमें बेसिकली पूरा उत्पात ही तो हीट के कारण है. हाँ नहीं सर, वो हीट पहला स्लाइड में आग लग गया था हीट के कारण. सर, उसमें बहुत सारे कॉज है. जो हमारा जो एक प्रोजेक्ट का जो आग लगने का कारण था उसमें काफी सारे रीजंस थे. मैं ये पूछ रहा हूँ कि हीट क्यों हो रहा है और दूसरा हीट हो रहा है सर, तो उसको क्यों नहीं रोक रहे? बेसिकली जो हमारा जो हीट जो हुआ था, जो इरप्ट हुआ था, जो वो इनिशिएट हुआ था, वो हुआ था बियरिंग साइड से. बियरिंग्स का जो हम लोग टेकअप साइड जो रहता है वो नीचे रहता है. बेंड पुलीज हो गया, टेकअप हो गया. जाम हुआ था. हाँ, उसका ग्रीसिंग जो है ड्राई होके देन उसमें जो है वो धीरे धीरे गर्म होकर हीट पकड़ा था. मतलब कन्वेंशनल मेथड में यदि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ठीक से किया जाए तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है. बट बेसिकली होता क्या है सर कि जैसे समर सीजन्स हो गया स्पेशली, या गर्म मौसम हो गया, एंड दैट टेकअप एरिया इज हाईली इनएक्सेसिबल क्योंकि वो नीचे रहता है. जो हमारा जो गैलरी रहता है उसके नीचे रहता है. तो हम लोगों को क्या है कि मतलब पीरियोडिकली तो भेजा जा सकता है,
बट क्या वो टेकअप एरिया है, वहाँ काउंटर वेट है, तो दैट इज मोर प्रॉन टू वियर एंड टियर एंड मतलब इन वेरिएबल लोड्स। तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे वो गर्म हो, बियरिंग्स एंड वो बेल्ट स्वे का कंडीशंस भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। चार्ट रहे जिसमें कि हर 7 दिन में ये कर देना है। यस सर, इसको चेक कर लेना है। एग्जैक्टली जो सिस्टम को जो हम फॉलो करें तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा है तब हम एडवांस सिस्टम को ला रहे हैं। अभी हम लोग मान लीजिए एसेसिबल नहीं है तो उसका इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया जाए जो असेसिबल हो। यस सर, वो अभी जो इनएक्सेसिबल की बात, इनएक्सेसिबल की जो बात हुई, वहाँ पे हम लोग ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। अब क्या होगा कि उसमें जो ऑलरेडी जो पिछला सिस्टम था कि हम लोग उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में हमने एक एडिशन और भी दे दिया है कि वहाँ पे ऑटो ग्रीसिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब क्या होगा कि वो ऑटो ग्रीस होते रहेगा सिस्टम, एंड दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड ऑनलाइन ऑल्सो। हम लोग यही से देख सकते हैं उसमें ग्रीस कितना कंटेंट है, खत्म हो गया है क्या, ये सारा चीज़ उसमें कंटिन्यू पंपिंग होता है। एंड देन इवन इफ इन द वर्स्ट केस फायर हो भी जा रहा है, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रोवाइडेड spray systems in that take-up area. Earlier it was not there. सर, अभी जो जितना हमने सिस्टम इंस्टॉल किया था, सर कुछ इक्विपमेंट्स के हमने किए हैं, अलग स्पेयर पार्ट्स के किए हैं, जैसे ये इम्पैक्ट बेड है, टोटलिटी में नहीं कर पाए हैं सर अभी, क्योंकि हम लोग अभी अलग-अलग एरिया हमने तो देखा है कि एक एक इक्विपमेंट कितना फेलियर हो रहा है उसमें इंडिविजुअल। जैसे इम्पैक्ट बेड, मैं इम्पैक्ट बेड की बात करता हूँ, तो क्या होता है कि जैसे इम्पैक्ट बेड में हम लोग इम्पैक्ट रोलर्स यूज़ कर रहे हैं, बार बार जो है वो इम्पैक्ट रोलर निकलता है वहाँ पे, क्योंकि इम्पैक्ट जोन है, वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हम अल्टीमेटली होता क्या है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे मेंटेनेंस करना, क्योंकि हमको बेल्ट को लिफ्ट करना है, देन वहाँ पे फिर वो रोलर को जो है रिप्लेस करना है। अगेन इम्पैक्ट रोलर है, फिर उसमें क्या होता है, इम्पैक्ट रोलर निकल गया वहाँ से, तो के जो फ्रेम्स के शार्प एजेस हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब वहाँ यस सर, हम लोगों ने किया हुआ है इसके लिए, हर एक का अलग अलग है। यस सर, इंडिविजुअल करके दिया हुआ है, उसी के बेस पे जो पीओ हम लोग पीआर बढ़ाते हैं उसी के बेस पे करते हैं। जैसे हमारा मैंने एक सिस्टम बताया सिरेमिक लेगिंग। यस सर, जो हमारे स्टार्टिंग में जो मेथड्स थे वो हमने किया हुआ है, वो इन हाउस है। वो ये सर वो इन हाउस वाला है, वो किया हुआ है। यस और सर एक जो नॉन कैरिंग साइड का बेल्ट ट्रिप डिटेक्शन सिस्टम है वो भी इन हाउस है। वो इन हाउस है। नेक्स्ट कन्वेयर मैपिंग कंटिन्यू होता है सर हमारे पास। यस सर, कन्वेयर मैपिंग से ही सारा चीज नॉन रिपोर्ट आ कैरिंग जाता साइड है। में बेल्ट ट्रिप डिटेक्शन सिस्टम के लिए होगा क्या सर, जब नॉन कैरिंग साइड से बेल्ट पैच ओपन होगा, वो एक मतलब लूज रॉड डाला है हमने जो कि उसे स्ट्राइक करेगा बेल्ट। जैसे ही बेल्ट रॉड से स्ट्राइक करेगा, वो लिमिट स्विच प्रोवाइड किया हमने एंड्स पे, दोनों एंड्स पे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। दैट लिमिट स्विच हैज बीन कनेक्टेड टू पुश बटन दैट विल अल्टीमेटली ट्रिप द कन्वेयर बेल्ट, so that we can reduce the major damages. सर बहुत प्रॉब्लम था, धीरे धीरे करके सिस्टम लगने से हम लोग टुवर्ड्स कंक्लूजन पहुंच रहे हैं और बिल्ड करने का मैटर भी कम होता जा रहा है। सर बेसिकली जितना हमने किया है सब प्रैक्टिकल अप्रोच किया है, हमने डायरेक्टली जाके उसको कितना बेनिफिट है जाके उसको इंस्टॉल किया, और ये सब इन हाउसेस के लिए तो हम लोगों को काफ़ी अप्रिशिएशन भी मिला है। जैसे आइडलर वाला था सर, जैसे वर्टिकल रोलर लगाने वाला, बेल्ट से भागता था, आइडलर रोलर लगा दिया, स्ट्रेट लगा दिया, अब वो भाग नहीं देता, रोलों के घूम जाता है और रोक देता है, साइड में लगा दिया, ना इधर भाग पाता है इधर भाग पाता है। जो छोटी छोटी चीजें हम लोग बेस्ट कर सकते थे। दूसरा उस रोलर को हमने यूटिलाइज कैसे किया, रोटेट होगा, हमने एक ओवर स्पीड सेंसर लगा दिया है, रोटेट होगा, एक फिक्स टाइम से ज़्यादा रोटेट होगा, सेंसर उसको सेंस करेगा रोटेशन स्पीड को, डायरेक्टली एक ट्रिप फीडबैक दे दिया। अब मेरा क्या है कि वो बेल्ट जो है मुझे पता लग गया कि किस पॉइंट पे जाके वो स्वे हो रहा है रिटर्न में, तो अल्टीमेटली मैं जाके फिर वहाँ पे उसको एडजस्ट करूँगा बेल्ट स्वे को। हमारा बेल्ट का एजेस बहुत मार खाता था, उसमें पूरा बेल्ट खराब हो जाता था, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अटेंड किया इसमें। Just we have fitted these rollers are just one inch ahead of this L bracket. So before touching the हाँ यस सर। सर होता क्या है जनरली क्या है कि इतने लॉन्ग कन्वेयर बेल्ट्स में हर बार मेंट सिस्टम रखना मुश्किल हो जाता है। होता क्या है रिटर्न साइड को हमेशा, जैसे कोरबा जैसा प्रोजेक्ट है नीचे में है,
तो वो क्या है कि अनदेखा रह जाता है नीचे का जो है। अब होता क्या है कि फिर अल्टीमेटली बेल्ट पूरा जो है, जो रिटर्न आइडलर्स के फ्रेम्स हैं, जो स्ट्रेंजर पोस्ट हैं, उसमें जाके पूरा रब करते हुए उसको पूरा इवन मेटल को भी काट देता है। अब वो क्या होता है, ग्रू जैसा बन जाता है, बेल्ट वहाँ जाके फिर वहाँ से स्लाइड होना शुरू होता है। फिर अल्टीमेटली जो हमने एक पिक्चर दिखाया था जिसमें एजेस पूरे वॉन हो गए थे, उस टाइप का कंडीशन हो जाता है। फिर अल्टीमेटली सिस्टम ये रहता है कि उसको तो कुछ कर नहीं सकते, पूरा बेल्ट रिप्लेस करना है। मतलब डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था, उसको एक एक करके अटेंड किया और उसके बाद जाके एंड रिजल्ट तो हमने बताया था बेल्ट कंजम्पशन वाला। बैक करो। Okay, thank you, team Black Diamond. Korba. हाँ सर, ये जो है बेल्ट एज जो है पूरा देखिए साइड से पूरा खराब हो गया। अब ये होता है रिटर्न साइड में, तो बेसिकली मेरा पूरा बेल्ट वेस्ट हो गया। अब मुझे क्या है कि मैं उसको पैच वैच ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता, अल्टीमेटली उसकी विड्थ कम हो गई। हाँ, अनइवन लोडिंग। यस सर, ये छोटे-छोटे अब ये क्या है, टोटली वेदर कंडीशंस पे भी डिपेंडेंट है, वो बैफल प्लेट पे भी डिपेंडेंट है। बेल्ट सर नियरली 1 किलोमीटर बेल्ट है सर। और ये जो हम लोगों ने किया है सर, वो एक्चुअल किया हुआ उसका रिजल्ट है। So next team is Technoid Sipat. Members are Vishal Wankhede, Mohit Kumar, LK Gupta, Aman Bansal. Team Technoid Sipat. क्या है इसमें? एक स्लाइडर। हाँ अच्छा ठीक, ये फॉरवर्ड है ना, ये बैकवर्ड है। ठीक, और पॉइंटर किसी से लाइट किससे, लाइट किससे? After Technoid, next team is Nirman Sipat. ठीक है चलो। So now this team is Technoid Sipat. This is 12th number of presentations of this convention. Technoid Sipat. मैं करूँगी, आप करना। आप कर दीजिए। So can we start now? Okay, we shall start. Good afternoon, everyone. On behalf of Team Technoid, I welcome you all for a very exciting presentation on Advanced Centralized Electronic Lab for PAN NTPC and beyond. Our team members consist of myself, Vishal Wankhede, Mohit Kumar, Lal Kumar Gupta ji, and Aman Bansal. One issue which is common across the NTPC is failure of costly electronic cards and modules which are used in our automation systems.
So for this repairing of these electronic cards, we do not have any in-house electronic repair facilities, and OEMs do not provide any support in the repair. Because of this, we are forced to maintain high inventory level of these costly electronic cards. Moreover, these electronic cards have shelf life. So when they are not in use, they are in the store, still their life keep on degrading. So only option left for us is third-party repair services. But third-party repair services have their own issues. First is high lead time. It takes some time in awarding the PO, then there is a transit time, repair time, then testing time, etc. Despite of this high lead time, we cannot guarantee the quality of the repair service because we do not know their skill sets, testing facility, whether they are using ESD devices or not, etc. Another issue is the cyber security issue. If they want, they can easily introduce a malware in our system through firmware of these electronic cards, which can paralyze our unit operations. And in case of emergency, there will not be any support. And we cannot do the root cause analysis for the failure of the electronic card. So to resolve this issue, we have started a advanced electronic repair lab at the CPAT, which was inaugurated by our HOP CPAT in December 2024. So our plan is to expand our services for the PAN NTPC by April of this 2025, and by next year we want to provide our services outside the NTPC also. For this, already discussions are being held at C&I HOD workshop. It has been discussed with RET sir. It has been discussed. So process is almost. We are also developing the software for it. Now to understand the importance of this lab, I invite LK Gupta ji to continue. Thank you विशाल सर. इस ए हब फॉर एक्सेलेंस, इस कॉन्सेप्ट के पीछे भी कुछ सक्सेसफुल स्टोरी है. केस स्टडी 1, रिपेयरिंग ऑफ ASI 23 कार्ड. ASI 23 कार्ड बेसिकली ABB मेक का एक एनालॉग कंट्रोल कार्ड है. पैन NTPC इस कार्ड्स की संख्या हजारों में है. यदि हम पिछले 5 साल का पैन NTPC कंजम्पशन हिस्ट्री देखें तो देखते हैं कि 60 to 70 कार्ड्स पर ईयर NTPC में कंज्यूम हुए हैं. पैन NTPC में अकेले NTPC सिपत में ही ये कार्ड 6 to 7 कार्ड्स पर ईयर कंज्यूम होते हैं. जब इस तरह के कोई कार्ड खराब होते हैं तो हमारी समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि एक और जहां हमें नए कार्ड खरीदने के लिए वेंडर को हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है, हमें एक कार्ड के लिए वेंडर को 10.5 लाख रुपीस पे करना पड़ता है, वहीं हमारे पास डिफेक्टिव कार्ड इकट्ठे होते जाते हैं, क्योंकि OEM की तरफ से डिफेक्टिव कार्ड का कोई रिपेयरिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. यदि पिछले 8 महीनों का देखें तो पिछले 8 महीनों में हम लोगों ने इसी तरह के 10 कार्ड डिफेक्टिव कार्ड को रिपेयर करते हुए 1.05 करोड़ रुपीज़ की डायरेक्ट सेविंग की है. केस स्टडी 2, रिवाइवल ऑफ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट. कोविड-19 पैंडेमिक को हम एरा ऑफ अनसर्टेनिटी भी कहते हैं. कोविड-19 ने हम लोगों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया था कि हमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना है. कोविड-19 के टाइम में हमारे NTPC विंध्याचल, NTPC सिंगरौली और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैढ़न का वेंटिलेटर खराब हो गया था. उस समय हमारे सर्विस इंजीनियर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण कोई भी सर्विस इंजीनियर रिस्क लेने को तैयार नहीं था. हम ज़्यादा पैसे पे करके भी नए वेंटिलेटर नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि मार्केट में वेंटिलेटर का शॉर्टेज था. उस इमरजेंसी सिचुएशन को भी हम लोगों ने हैंडल किया था और कार्ड लेवल पे रिपेयर करते हुए उस इमरजेंसी सिचुएशन में तीनों वेंटिलेटर को अवेल करवाया था, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगरौली और ED विंध्याचल ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था. केस स्टडी 3, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल्यूर इन H2 प्लांट. हमारे H2 प्लांट में एक प्यूरिटी एनालाइजर होता है, जिसके फेल हो जाने से हमारा H2 जनरेशन बंद हो जाता है. हमारे NTPC सीपत में भी सेम हुआ. हमारा H2 प्यूरिटी एनालाइजर फेल हो गया. वेंडर से बात करने के बाद वेंडर का कहना था कि कंप्लीट एनालाइजर चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए 6 मंथ का लीड टाइम लगेगा. 6 महीने तक हम हाइड्रोजन जनरेशन को नहीं रोक सकते थे, क्योंकि इससे तो हमारा सीपत इफेक्टेड होता ही, साथ ही लारा भी NTPC लारा भी इफेक्टेड होता है, क्योंकि लारा का भी हमारा जो हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होती है वो NTPC सीपत से ही होती है. उस इमरजेंसी सिचुएशन को भी हम लोगों ने हैंडल करते हुए अपने इन हाउस लेबोरेटरी में नए कार्ड डिजाइन करके उस प्यूरिटी एनालाइजर को अवेलेबल कराया और हाइड्रोजन प्लांट को रन किया. केस स्टडी 4, सर्विस टू नेत्रा.
नेत्रा को भी रिसेंटली उनका पीडी एनालाइजर था, पार्शियल डिस्चार्ज एनालाइजर, जो कि उनका आउट ऑफ सर्विस हो गया था। वेंडर से बात करने पे वेंडर का कहना है कि वो OEM इसका USA है और हमारे पास इसकी रिपेयरिंग कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको इसको नया प्रिक्योर करना पड़ेगा और लीड टाइम 2 महीने का लगेगा। नेत्रा का ये इक्विपमेंट खराब हो जाने के बाद उनका जनरेटर की टेस्टिंग उनकी ऑब्स्टेक्ट हो रहा था। इस चैलेंज को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और रिमोट उनको सपोर्ट देते हुए उनके इक्विपमेंट को अवेलेबल कराया। नॉट ओनली C&I के अलावा इमरजेंसी केसेस में हम लोगों ने दूसरे डिपार्टमेंट को भी हमेशा सर्विस प्रोवाइड किया है। हमारे सेंट्रल वर्कशॉप का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेथ मशीन खराब हो गया था, OEM से भी उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस रिपेयरिंग के लिए नहीं मिल रहा था। उस कंडीशन में भी हम लोगों ने इन हाउस उनके कार्ड्स को रिपेयर करते हुए दोनों लेथ मशीन को सर्विस के लिए अवेलेबल कराया था। यदि हम गुड्स लिफ्ट की बात करें तो गुड्स लिफ्ट का इंपॉर्टेंस सबको पता है, लेकिन BTL के टाइम में इसका इंपॉर्टेंस और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि BTL के टाइम में हमें मटेरियल की हैंडलिंग क्विक करनी होती है। BTL के टाइम में यदि हमारा गुड्स लिफ्ट खराब होता है तो एक तो हमें मटेरियल की हैंडलिंग बाई हैंड करनी होगी, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, दूसरा एक सेफ्टी कंसर्न भी होगा। इसी तरह का सिचुएशन कुछ हमारे सिपत में भी आया था। उस सिचुएशन को भी हम लोगों ने हैंडल करते हुए उसके कार्ड्स को रिपेयर करके, इन हाउस रिपेयर करके गुड्स लिफ्ट को अवेलेबल कराया था। NTPC के यदि अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोगों ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस पावर, UP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी सर्विस दे चुके हैं। इमरजेंसी में उनका कुछ क्रिटिकल कार्ड्स खराब हो गए थे, जिसके कारण उनका जनरेशन हैम्पर हो रहा था। उनके रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने उनके क्रिटिकल कार्ड्स को रिपेयर करके उनका जनरेशन अवेलेबल कराया था। यदि पिछले 10 महीनों का डेटा देखें तो हम लोग इन हाउस अपने लैब में कार्ड्स की रिपेयरिंग करके 5.53 करोड़ की डायरेक्ट सेविंग किया है। यदि इसको हम पर मेगावाट रुपीस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कह सकते हैं कि 22,268 मेगावाट पर ईयर की हमारी सेविंग, पर मेगावाट पर ईयर की सेविंग हो रही है। इस तरह यदि हम पैन NTPC की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 170 करोड़ का पर ईयर है, एक पोटेंशियल है रिपेयरिंग से। ये हमारे वेराइटी ऑफ DCS है। चलिए NTPC में वास्ट टाइप से वेराइटी DCS है। यदि टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो 125 है, जिसमें 12 डिफरेंट टाइप्स के जैसे ABB, BHEL, इमर्सन एक्सेट्रा के DCS लगे हुए हैं। PLC की बात करें तो 268 के अप्रॉक्स हमारे NTPC में PLC लगे हुए हैं, जो कि 14 डिफरेंट वेंडर के हैं। हम लोगों ने PLC के लाइफ, DCS का लाइफ और प्लांट लाइफ को कंसीडर करते हुए एक पोटेंशियल कैलकुलेशन किया वेटेड एवरेज के अनुसार, तो हमें ये मिला कि 102 करोड़ की सेविंग पर ईयर हम कर सकते हैं कार्ड रिपेयरिंग से। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू सर। As our team has saved 5.53 crores in the last 10 months and has the potential of saving 102 crores per year across NTPC, and it is our vision to expand this saving across NTPC and beyond. We want to develop our C&I Electronic Advanced Lab as a separate revenue center for NTPC and develop it into a profitable business model. So we will be seeking as an initial investment 10 crores from NTPC. Out of that 10 crores, 5 crores we will be utilizing for setting up capital lab equipments, and another 5 crores for keeping as a working capital to meet day-to-day expenses of the AFAM lab. For initial capital required for lab equipments, we have summarized our equipments here. We will be having standard lab equipments as signal generators and electronic test bench, as well as high-end lab equipments such as SMD rework station and LCR meters costing to 5 crores. As far as manpower requirement for our lab is concerned, in our proposed model, we have considered 4 executives, 2 non-executives, 4 highly skilled workers, 4 skilled workers, and the total cost of manpower comes to be around 1.68 crores per year. Now, what is our revenue generation model? We will have 3 sources of revenue generation. Our first source of revenue generation will be through the card repair services of reputed DCS and PLC vendors such as GE, Honeywell, etc. Our second source of revenue generation will be through the hands-on training provided in our lab. Our third source of revenue generation would be through the customized circuits and power packs that we'll be designing based on the customer's specific requirements, layouts, and designs. Now, as we can see, the minimum market rate for repair services in our country is around 12 to 16%. But in our lab, we will be charging only 10% as for a successful repair and 1% for diagnostic charges. This way, we can see that the lab revenue for the first year will be around 10.2 crores per year.
Now we can see the basic financial projections of our model. Here we can see that in the very first year itself, we have 10.2 crores as our revenue, which is the break-even point of 10 crores of our initial investment. Over the course of 5 years, we'll be having revenue in the range of 55 crores. If we take into account the R&D cost and total expenses, our EBITDA margin will be as high as 73 to 86%. If we consider the taxes, interest, depreciation and amortization, then profit after tax we will have in the range of 48 to 68% and overall profit of 34 crores. Now we'll look at the market opportunity that we are targeting. As far as NTPC concerned, our serviceable obtainable market is 10.2 crores. And if we consider the entire power industry of the country, we are targeting our serviceable addressable market of 50 crores. And if we consider the entire automation and control system of the country, then our potential market opportunity is 4,500 crores. With these numbers in mind, I would call Aman to continue this presentation. थैंक यू मोहित सर, हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में टैम सैम सोम के बारे में बताने के लिए. देन वी हैव कि हमने देखा कि अभी हमारे पास 102 करोड़ पर ईयर का ह्यूज पोटेंशियल है सेव करने का इटसेल्फ एनटीपीसी, एंड 10.2 करोड़ रेवेन्यू का एक जनरेशन मॉडल है. बट वाई चूज़ अस, हमें क्यों चूज़ किया जाए हमारी सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को? हमारी यूएसपी क्या है? हमारी यूएसपी है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स. प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स में सर ने जैसे बताया कि कुछ हमारे केस स्टडीज, कुछ हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज रही हैं. नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है एसओपीज़, हमारे पास डेजिग्नेटेड एसओपीज़ हैं. सपोज ये कार्ड आया है, एक एनालॉग कार्ड आया है इस ब्रांड का, तो हमें कैसे कैसे उसमें प्रोसीड करना है, किस किस कंपोनेंट लेवल पे क्या क्या चेक करना है, वो प्रॉपर एसओपी हमारे पास है जिससे हम चेक करेंगे और उसको बताएंगे कि अब क्या इशू है और उस कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे. देन हमारे पास है टेस्ट जिग्स ऑफ मल्टीपल सिस्टम, जिससे कि क्वालिटी चेक रहेगा और मल्टीपल उसमें इनपुट्स डाल के हम उसका क्वालिटी आउटपुट निकालेंगे, और जिससे एक रिगरस टेस्टिंग एक कार्ड की हम पर्टिकुलरली करते हैं फॉर 24 आवर्स, जिससे एक क्वालिटी सर्विस मिलेगी और वो कार्ड रिलायबल होगा, उसकी श्योरिटी होगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एनटीपीसी ब्रांडिंग है. एक ओएनएम हमारा एनटीपीसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है. तो ओएनएम में हमारे पास जो हमारा इनपुट है पूरे ओएनएम का, क्या क्या इसमें पार्ट लगेगा, क्या यूज़ होगा, उसका सपोर्ट मिलेगा. हायर मटेरियल मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी ऊपर मैनेजमेंट से, तो उससे हमारे पास इजी होगा इसको, और ये हमारी यूएसपी है. नेक्स्ट, अब इस सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास पावर कॉस्ट सेविंग होगी. जो भी हमारे जैसे सर ने बताया कि हमने लास्ट 10 मंथ्स में 5.5 करोड़ का सेविंग किया है एक सिंगल कार्ड रिपेयर करके 10 नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ में. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी. हम सपोज कोई थर्ड पार्टी वेंडर को एक कार्ड अपना भेजते हैं, तो वो कोई भी मालवेयर उसमें फायरवॉल ब्रेक करके उसको में मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है. अगर वो कार्ड हम लगाते हैं अपने सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम को करप्ट कर सकता है और पूरे प्लांट का जनरेशन हैम्पर कर सकता है. तो उस रिस्क से हम बच सकते हैं. फास्टर टर्न अराउंड टाइम, जैसे सर ने बताया कि 6 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेटली एक प्रोसेस होता है जिसमें वो लीड टाइम लेता है 6 मंथ्स का, उसका रिपेयर करने के लिए, उसका प्रोसेस, उसका पीओ अवॉर्ड करने के लिए, वो हमारा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा. एंड इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि हम टेस्ट जिग्स मेथड से मल्टीपल इनपुट्स देके 24 आवर्स की रिगरस टेस्टिंग पर कार्ड करते हैं, उससे हमारे पास जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होगा. और जो इसके जो इनपुट्स मिलेंगे, जो भी हमारे टेस्टिंग से जो भी हमें इनपुट्स मिलेगा, जो भी लर्निंग होगी, वो सब हम एक वेबसाइट में ब्लॉग्स की फॉर्म में एक कार्ड की रिपेयरिंग डालेंगे, जिससे कि कोई दूसरा भी पढ़ सकता है कि क्या क्या इसमें इशू आया, कैसे उसे वो सॉल्व कर सकता था, हमने कैसे सॉल्व किया और कैसे वो भी अपनी लैब में सॉल्व कर सकता है. नेक्स्ट हमारा है कि रैपिड रिस्पॉन्स टू एमरजेंसीज. जैसे कि हमारा था कि विंध्याचल में कोविड के टाइम में वेंटिलेटर नहीं थे हमारे पास, तो वो एक मैन पावर को सेव करने का एक बहुत अच्छा वो हुआ था, सॉल्व हुआ था. नेक्स्ट हमारी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल, एक ये जो कार्ड्स होते हैं और कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर चिप से बनते हैं, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, जो इनका प्रोडक्शन प्रोसेस है. तो और ये मल्टीपल ई वेस्ट हमारा जनरेट होता है, तो उसको भी हम रिड्यूस करते हैं. और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक कॉस्ट कार्ड की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 lakhs होती है, समटाइम इट गोज अप टू 50 to 60 lakhs. तो उस इन्वेंट्री कॉस्ट को भी हम रिड्यूस करते हैं. कस्टमाइजेशन एंड अडेप्टिबिलिटी, सपोज हमारे पास SMPS पावर सप्लाईज हैं, जिसको एक जगह यूज़ हो रही है, उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं. उसको हम एज अ आइसोलेटर यूज़ कर सकते हैं, एज अ मल्टीपल थिंग्स यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए, और इसमें इनोवेशन एंड R&D
को यूज़ करके हम उसके सप्लाई की पावर रेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और उसको दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। ये वेब लैब है हमने प्लान किया इकोसिस्टम बनाने का, जिसमें कोई भी रिपेयर आएगा उसमें एक यूज़र अपना इनपुट डालेगा, अपना क्या इसका रिक्वायरमेंट है, कितना उसका प्रायोरिटी हाई है, लो है, उसका जनरेशन उससे हैम्पर होगा, जिससे कि हम उसे फास्टर सर्विस दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल इंडिया मिशन को भी हम सपोर्ट करेंगे इसमें, और जो कि अप्रेंटिस टेक्निकल अप्रेंटिस हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे अपनी लैब में, जिससे कि वो स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे सर ओवर द ईयर हमने ये 15 प्रोजेक्ट्स हमने इस साल लिए थे, उसमें से हमने 10 इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और 5 अंडर अप्रूवल हैं, जिनके PR क्रिएट हो चुके हैं। इसमें सर जून 2023 में हमने सर PC विन किया था टेक्नोइड टीम ने, उसमें हमने ABT सिस्टम बनाया था, जो कि ABT सिस्टम पूरे NTPC में पैन NTPC में इंस्टॉल किया है हमने। हमारी टीम के अचीवमेंट्स है सर, हमने एक IPS पेपर पब्लिश किया है, 2-3 बार हम फाइनल्स में इसमें पहुँचे, PC में पहुँचे हैं, एंड हमने एक AI दोनों चैटबॉट भी लॉन्च किया था। एंड हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट सर का है कि पेटेंट एक सर को ग्रांट, हमारे एस्टीम टीम मेंबर को एक पेटेंट ग्रांट हुआ है एश मॉनिटरिंग लेवल फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड टीम टेक्नो। हाँ यस इक्विपमेंट ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारे हैं। हाँ हाँ ये वो सर, हाँ उसमें से जो कुछ नए चाहिए। हाँ एक्चुअली सर जो हमें, क्योंकि हमें जब मास स्केल पे कुछ करना होगा तो हमें लिए क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा चाहिए। हाँ यस यस सर, यस सर। उसके लिए प्रदीप नोट मूव कर रहे हैं सर अभी। यस सर। सर ये नहीं सर, अभी उसका कुछ PR ऑलरेडी मूव हो चुका है, PR भी उसका कुछ मूव हो चुका है। कुछ हमारे जो इक्विपमेंट्स थे ना, उसको हम लोगों ने डाल रखा था, कुछ PR मूव हो चुके हैं, कुछ अभी अंडर अप्रूव। यस यस सर। हाँ यस सर। उसके लिए हमने 1 ईयर टारगेट लिया ना सर, नेक्स्ट ईयर के लिए बोल रहे हैं, आउटसाइड के लिए। यस हाँ उसके लिए नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं। बाकी जो इन प्रिंसिपल C&I HOD वर्कशॉप में डिस्कशन हो चुका है, साथ ही में RD सर से भी डिस्कशन हो चुका है, अभी उसका नोट मूव होने वाला है सर, मतलब कर दिया रहेगा ऑलरेडी हमारे सर ने साइट ने इसके लिए। हाँ यस सर ठीक है, बेटर नेवर से तो बेटर है सर कि लेट। ये एक्चुअली अभी हमने इस बार से हमने क्या किया सर, ट्रैक रिकॉर्ड रखना चालू किया कि हमने सेविंग कितना किया, तो उसको हर मंथ वाइज एक्सेल शीट मेंटेन की। फिर हमने देखा अरे इतनी ज़्यादा सेविंग हो रही है। पहले तो हम लोग ऐसा करते, कार्ड आया जस्ट रिपेयर किया वापस भेज दिया। हाँ यस सर। तो उसका रिकॉर्ड एक्चुअली हमने सॉफ्टवेयर भी जो बनाया है कुछ कुछ, तो उसके चलते रिकॉर्ड हमारे पास ज़्यादा जनरेट होने लग गया, जिसकी वजह से हमको क्या सर अभी मतलब बहुत इमरजेंसी रहने से ही आता है, अदरवाइज अभी तो हमने मतलब अदर स्टेशन के लिए फॉर्मली ओपन नहीं किया है, बट मतलब कोई हेल्प के लिए करता है तो फिर जैसे अभी इन्होंने नेत्रा का बताया था, कुछ दिन पहले सिंगरौली का है। सिंगरौली और नेत्रा का अभी सपोर्ट हम लोगों ने दिया है सर, मतलब रिपेयर चार्जेस वगैरह अभी लॉन्च नहीं किया है फुल्ली, जस्ट अभी प्रॉपर ऑफिशियल चैनल। इसमें जो है अभी जो NTPC में लैब्स है सर, जनरली वो है ओनली ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन के लिए और इसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर अभी कहीं पे भी नहीं हो रहा है, अभी धीरे धीरे करके वो बंद हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर्स अभी नहीं है साइट्स में। उसी के लिए हम लोग अप्रूवल बढ़ा रहे हैं सर, इसमें इतना मैन पावर चाहिए करके। हाँ यस सर। का इनिशियल एस्टिमेट हम लोगों ने जो किया था सर, उसका कॉस्ट निकाला था। कार्ड खराब क्यों होते हैं?
सर पर्टिकुलर एक ब्रांड का कार्ड खराब नहीं होता एक्चुअली कार्ड्स। हाँ एबीबी तो जस्ट एक एग्जांपल था सर। एक्चुअली कार्ड की कुछ सर्टेन लाइफ होती है सर। हर कार्ड्स की एक सर्टेन लाइफ होती है, उसमें जो सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं लाइक डिस्क्रीट कंपोनेंट कैपेसिटर्स वगैरह, इसकी एक लाइफ होती है। उसके क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक ड्राई होने लगते हैं तो वो कार्ड माल फंक्शन करने लगता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन हैं सर कार्ड्स ख़राब होने के। वो एजिंग इफेक्ट तो है ही, उसके अलावा स्पाइक्स भी है, वोल्टेज स्पाइक्स वगैरह भी है, लेकिन मेन जो फैक्टर होता है वो एजिंग इफेक्ट ही है। उसको उस इफेक्ट को नहीं रोक सकते। मॉइस्चर भी होता है सर। यस सर मॉइस्चर भी होता है, बट वो सब तो अभी एयर कंडीशन उसमें होते हैं तो मतलब बहुत कम उसका वो होता है इफेक्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारे मोर देन जो 95% जो कार्ड खराब होते हैं वो ड्यू टू एजिंग इफेक्ट होते हैं। मतलब एनटीपीसी अब पावर नहीं जनरेट कर, पावर के साथ साथ कार्ड भी सुधारती है, ऐसा होगा कोई स्लोगन है। हमारा रेवेन्यू सेंटर इसी तरह हमारा प्रपोजल। नहीं, उनको यहाँ पे लेके आने का ही प्लान है। जो एक्चुअली एक दो बंदा जो बाहर का भी अच्छा है सर, जो अच्छे लोग हैं, उनको लाके सबके लिए सेंट्रलाइज। हाँ यस सर। सेंट्रलाइज्ड बनाना है सर, और विद इन एनटीपीसी जो भी ज़्यादा अक्वेंटेड है उससे उसे एज अ टीम कंबाइन करके वो प्रपोजल हम लोग इनिशिएट आगे करेंगे। Thank you, team Technoid. Now, with the permission of judges, can we break for 5 minutes? So, after break, we will see Nirman Sipat. चालू है क्या? चालू। Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello. Am I audible? सर लगवा लो माइक। सेव सेव। तो लैपटॉप सेट कर लो। मारी के देखना बोलो और चलाना।
ये रहा। अगर चाहिए होगा तो नीचे रहेगा तुमको चाहिए। हो रहा है बैटरी फुल है। गुड इवनिंग। ঠিক আছে না স্মুথ হচ্ছে না স্মুথ আসতে না বুঝছি এটি আসছি কোথায় থেকে কয়েক দিক থেকে না कहीं मतलब कूटा इसको मारते ही आ जाएगा। हाँ आ गया ना। ओके मारने से आ जाता है ना। एक बुक उठा दो यार कोई बुक उठा लो चल नहीं है सर ऑल द बेस्ट। अभी तो आएंगे जजेस नहीं आए जजेस नहीं है आ रहा है चले जाओ वेट करो ना फोन ऑफ थोड़ा वो टाइम अभी सेट कर दीजिए सर वो जो कर देना सर वो स्क्रीन में जो है ना टाइमिंग थोड़ा जीरो कर देंगे ना अब स्टार्ट होगा ओके 20 से कम So this is team Nirman from Sipat. Members are Kamakhya Prasad Rath, Pradipta Kumar Sahu, Pankaj Agarwal, Subhasis Panigrahi. Team Nirman Sipat. Can we start, sir? हेलो हाँ, okay, sir. We shall start. Good afternoon to all, respected judges and my dear colleagues. We are Team Nirman from Project Department, NTPC Sipat. Our aim is to achieve net zero water in NTPC township through a projectized approach. This is our team, myself Kamakhya Prasad Ratha, he is Pankaj Agrawal, he is Pradipta Kumar Sahu, he is Subhasis Panigrai. We as a team represented various topics related to project department which are enlisted here. We all know that NTPC Sipat Township is indeed beautiful in terms of all the public amenities, parks, fountains and all the things. But
we met with the beast in the form of frequent leakages and seepages in residential buildings and unregulated wastage of water through the storm water drains. On curiosity, we have gone through various investigations, and we did the thorough investigation of site survey, and we did the record analysis of whatever available records we have, and we did analysis of a water audit report. We have interviewed with various stakeholders like TAD, EMG, P&S, and other council residents also. And for proper realistic data, we have analyzed our complaint portal, that is Nivaran portal. In that, we have analysis last 7 months data, and we came to know that more than 60% of complaints occurring mainly the plumbing issues. Upon all the investigation, we found the conclusion that our major concern is leakage and seepages in the residential buildings and unregulated water wastage in the public buildings. And we have found that the most major thing, that is a high per capita water consumption, that is ranging from 180 to 230 liters per capita per day, which is much more than twice than the average benchmark set by the Ministry of Housing and Urban Affairs, that is less than 135 liters per capita per day. We also found that there is very limited metering devices are found inside the key areas, as well as less technological use in the generation of water conservation. Moving ahead, as a company, our NTPC also signed MOU with IGBC and USAID last year, as well as in the last concluded raising day, our higher management emphasized that our company is the largest consumer of fresh water, and we need to reduce it in the form of implementation of ZLD as well as rainwater harvesting to the maximum possible level. This also matches with our goal, Brighter Plan 2032, in order to achieve as a company level per capita consumption of 120 liters per capita per day. To standardize our net zero, we have adopted as a third party IGBC, which is our guiding star in implementation of standardization of data. I request my friend Pankaj to continue more detail about the IGBC. Thank you, Raj sir. So we understand what IGBC is, what IGBC requirements are, and where our NTPC township is. IGBC is Indian Green Building Council, which comes under World Green Building Council, having a roadmap to achieve net zero water in our township. So as per IGBC, there are 4 requirements. First one is reduce water demand. Second one is harness alternate water. Third one is water back to source. And fourth one is community initiative and innovations. So to understand the first requirement, reduce water demand, IGBC further categorizes into 4 ways. First one is through water management system. What IGBC says, whatever water we are consuming, 80% water needs to be measured through water meters. Second one is by using water efficient fixtures. What IGBC says, that by using water efficient fixtures, we can increase the water efficiency minimum 30% from its baseline. Third one is by using water efficient landscaping and irrigation techniques. Means to say, we have to plant drought tolerant and native species of trees and plants inside township, limiting the turf area less than 20% of the total area, and further utilizing the water irrigation techniques, that is advanced irrigation of drip irrigation. And fourth one is advanced water management system. What IGBC says, we have to demonstrate online water performance in the form of water dashboard through SCADA system. Moving ahead, this is the work we did in our township. We have water meters. We are already having native species of trees, people neem. We are using this Google Map technique for turf area calculation mapping, and we are using flood irrigation. Whatever STP water we are recovering, we are utilizing it 100% to irrigation purpose. For the further requirement, harness alternate water, what IGBC says, there are 3 ways. First one is we should have a wastewater treatment plant. That is already inside our township. STP plant is available. Second one is rainwater harvesting from roof and non-roof areas in order to recharge the underground water. And third one is percentage use of alternate water. What IGBC says, whatever is our 100% total requirement, 30% requirement should be met through alternate water. So moving to ahead, inside our township, we have a STP plant of capacity 1500 KLD, and we have rainwater harvesting pit also inside our township. So this is the third requirement, water back to source. But IGBC says there are 2 ways. First one is water back to source in the form of
recharging local aquifers by using pervious paving and through adding the green infrastructures. Here we are non-compliant. And second one is, in case water table is high, we have to donate the treated water for useful purpose. Moving ahead, this is the fourth requirement, community initiative and innovations. What IGBC says, project should support communities to rejuvenate the local water bodies like ponds and lakes. And second one is by implementing the innovation in design and operation in order to get the tangible benefits in the form of water saving and in the form of money. Moving to ahead, we will understand this is the overall score of NTPC township as against IGBC score. We are scoring a credit of 31 out of 100, and there are two ratios here, water performance ratio and water back to source ratio. So as per all the data analysis, we came out that we achieved 0.37 of water performance ratio against the requirement of 0.5, and we are scoring 0 against the requirement of 1 again for the water back to source. So we are here unsatisfactory credits we have, and we are IGBC non-compliant. Further, Subhashish sir will explain you how we can improve our score and become IGBC compliant. Thank you. So thank you, Pankaj. So till now we have understood why we focused on this area, pain area, and we followed the IGBC guidelines and how we should move ahead. So accordingly, we have formulated some recommendations. So first recommendation is the technology leverage. But before technology leverage, we should mitigate the leakages. We have found that in township there are a lot of leakages, and the first recommendation is we have to kindly repair all the leakages and replace all the water inefficient fixtures so that we have a potential to reduce our water consumption up to 15%. However, there is a potential, there is a cost implication of 10 lakh rupees. We have a low hanging fruit that in our township we have a lot of vacant quarters, and this vacant quarters we can easily have some leakages from valves or something else, we can easily repair and have a quick win there. Next is the implementation of Industry 4.0. So as we know that 80% of our water consumption should be metered. However, we are not doing so now. So we should install smart meters and track our consumption on a daily basis. And in case of any abnormal consumption, using AI analytics, it should highlight us and we can take remedial action. Its cost would be around 43 lakhs. Next is the rainwater capture. We have analyzed the general layout plan of our township, and we have found that the main entrance gate area of our township is at a higher elevation as compared to the reservoir. So naturally, all the rainwater will flow through this gradient. So if we develop a catchment pond near the reservoir area and install some transfer pumps, we can easily transfer that surplus water into that reservoir. We have found through the rainfall data and surface area of the township, we have the potential to have around 3.5 lakh meter cube per annum of water which we can harness. The development of pumps and catchment area would cost around 22 lakhs. Next is the water efficient irrigation. Currently we are using flood irrigation, which is which has the potential of overwatering and wastage of water. So we should switch to micro irrigation like sprinkler and drip and use of moisture sensors. It will cost around 31 lakhs. Rainwater harvest is an area in which we have a lot of scope of improvement. We have divided our township into a number of blocks. In each block, we have planned for 24 number of rainwater harvesting pits, which will collect the rainwater harvesting potential. We have also calculated this around 2.76 lakh meter cube per annum. We can recharge this. However, it will cost us around 36 lakh rupees. Next is technology. Our SIPA township is around 15 years old. So its piping and other infrastructure in the distribution system is quite old. Plus it is having manual operation. Due to this, it is prone to errors and water wastage during operation like overflow of tanks. So we want to reduce this manual intervention and go for SCADA incorporation or automated systems. It will cost us 50 lakh rupees. STP in our township is quite a neglected area with uncalibrated metering devices. So we recommend to involve third-party industry experts so that they can take decisions according to their expertise and give us remedial actions. So it will cost us around 15 lakh rupees. Community initiative, we have two goals like community development. Under CSR activities, we are already regenerating local ponds. It will give us credits in our net zero initiative.
Last recommendation is the transform the water use behavior. This is the most important part because we have seen that unwarranted water consumption in township, and even if there is some leakage, lack of concern among township residents was observed. So we can go for water stewards and water vigilance and awareness campaigns. It will cost us, as a recurring, it will cost us nothing, but it has most impact. So if we go for this recommendation, our expectation is we will improve our water performance ratio to 0.60, that is way higher than the 0.37 currently. And the water back to source will leapfrog to 1.18 from current 0. However, the total cost incurred will be around 2.38 crores, which I think is nothing compared to the environment and community impact. Now to check the action taken till date, I request Pradipta sir to continue. So after successfully presenting this presentation during our last station PC, we put forward this proposal in front of the SMC members in December, and the topic was well discussed and deliberated in detail, after which directives were given, because of which the major leakages were attended, the metering devices were recalibrated, and this resulted in initial impact of at least 30 liters per capita per day reduction of water consumption. Further, as a team, we revisited the various facilities like DM plant, raw water pump house, STPs to improve our data quality and further substantiate our findings. As metering is an important necessity to monitor the water consumption and to become IGBC compliant, we evaluated a number of vendors, and finally we are under proposal to procure smart IoT enabled flow meters, cloud services and water management systems. Further, we are also in dialogue with Digital Pani, a startup which was recently aired in Shark Tank in the television at the Water Express. We are talking and knowing more about their services, what their offerings are, and how Industry 4.0 can be implemented in our township. Moving ahead, NTPC had always led in the community initiative front work. So now currently we are also developing 2 numbers of ponds in Janji villages, which is also in line with the IGBC standards. Further, on a smaller pilot scale level, we did try to capture rainwater from stormwater drains and divert it to a reservoir. However, it was very in small nature, and in the current situation, a large scale pumping is required to meet our standards. In doing so, we faced a lot of systemic challenges. One of it was a functional approach where different departments were dealing with the same problem independently, which has led to conflicts, integration issues, and lack of ownership. And this has also led to poor data quality and hindrances in data sharing. So there may be a question on data integrity. Further, individuals who are working on this are reluctant and are sometimes feel disconnected with the purpose, leading to lack of motivation and ownership. Meanwhile, a lot of time there is a need of decision making, where there is a need of higher level of top management involvement, and any delay in that way will lead to lack of direction and confusion. However, on a behavioral aspect, we have seen that non-seriousness has been observed, as our main focus had always been on plant. And currently, whatever leakages we are attending are being done by non-standardized fitments. So this every challenges can be mitigated if we adopt a projectized approach. A similar kind of issue was faced when NTPC targeted to reduce and reuse water within the plant premises, and JDLT came to our rescue and had been an inspiring success story. Further, we can incorporate a water management group like EEMG, who will be responsible solely to monitor the water consumption and water management system both inside and outside plant, and help get us with the statutory compliances and further certifications. We can streamline it by partnering with third-party experts, water experts. So this projected approach will help us to get a target-oriented approach in cost-effective and time-bound manner. So the intangible benefits are we will be able to meet the UN sustainable goals, improve PR for NTPC, we can have better access to green loans, community development, we can enhance perception of NTPC for the upcoming generations to join us,
and we become drought resilient. However, the biggest tangible benefit will be we will be saving around 3 lakh meter cube of water annually, and up to date we have, after mitigating leakages, we have achieved around 5,400 of meter cube water saved. This in turn will help us save more than 50 lakhs of rupees annually, and till that we have saved around 80,000. We can also earn ISO certificate 4601, and recently we have become runners-up in Nano Water Award. And finally, our main target is to get a golden plaque this golden year of NTPC. The question just remains, can we? Thank you, sir. Thank you. रिसेंटली हुआ अगस्त में हुआ है सर लास्ट। सो उसमें फाइंडिंग हुआ कि पोर्टेबल वाटर जो कंजप्शन हो रहा है अपना प्लांट, ऑफिसेस और टाउनशिप के लिए 229 मीटर क्यूब पर आवर हो रहा है, जो कि टाउनशिप एरिया एंड जो ऑफिस है ऊर्जा भवन, इन दोनों के लिए वो चलता है अराउंड 8 to 10 आवर्स चलता है सर। तो उस हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करके पर कैपिटल कंजप्शन निकालें सर। Yes, sir. ये सर हमारे दो स्टैंडर्ड्स हैं सर। एक है आईजीबीसी स्टैंडर्ड बताता है कि 130 सॉरी आईजीबीसी स्टैंडर्ड्स भी बताता है, और एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स भी बोलता है कि 135 होना चाहिए। Less than 130. However, हमारे ब्राइटर प्लान में ये लिखा हुआ है कि हम लोग 120 अचीव करना चाहिए। 2030 तो और आज के डेट में 280 to 310 चल रहा है। तो हम लोग तो कम किए। तो अभी जो लीकेजेस हुए सर, तो हम लोगों ने इसके बाद जो है सारे वैकेंट क्वार्टर्स जो थे, हम लोग जहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं पे फ्लोर वाल टूटा हुआ है, कहीं पे टैप प्लग टूट गया है, तो क्वार्टर्स बंद है करके वो अटेंड नहीं हो रहे, कि कहीं पे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद जो है पिन पॉइंट करके उस लीकेजेस को अटेंड किया सर। और जो है जो लोकल हमारे जो पब्लिक बिल्डिंग्स है जहाँ पे अनवांटेड यूज हो रहा था, जैसे कार वाश हो रहा है खुला छोड़ दिया है, हाँ, तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं उसको एड्रेस किया गया और सेंसिटाइज किया गया सर। तो उससे थोड़ा बहुत कम हुआ है सर, लेकिन जब तक पूरा टोटल मीटरिंग नहीं करेंगे तो हम लोग जो है पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल कहाँ पे है। अब जो भी लीकेजेस अटेंड हो रही है तो वो सारे कंप्लेंट बेसिस में हो रही है, जो हमारे निवारण पोर्टल में आ रही है। अब जो हम लोग दिखाए हैं सर लास्ट 7 मंथ्स में अराउंड 60% ऑफ कंप्लेंट जो है वो प्लम्बिंग इशूज़ में ही रिलेटेड है सर, क्योंकि टाउनशिप थोड़ा पुराना हो गया है तो सब वही टूट रहा है, फूट रहा है, कहीं पे लीकेजेस हो रही हैं। तो ये सब ऑब्जर्व किए हैं सर। मीटरिंग सर अभी हम लोग प्रपोजल मूव किए हुआ है सर। अभी जो मीटर्स अवेलेबल हैं, जो रॉ वाटर पंप हाउस में 2 मीटर है, हमारा एसटीपी में मीटर है, वो सबको रिकैलिब्रेट किया गया है सर। यस सर। मीटरिंग करेंगे, पैसे पे करना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, देन देयर विल बी सम कंट्रोल एंड बिहेवियर चेंज करना है, जैसे बता रहे हैं सेंसिटाइज कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं सर अभी बट देयर हैज टू बी कंसर्टेड एफर्ट सर। अभी सर क्या है ना सर, ये जो एफर्ट है सर वो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप है। अभी जैसे हम लोग जो है पर्सनली जाके सेंसिटाइज कर रहे हैं, अगर हम लोग इंडिविजुअल मीटरिंग कर पाएँ, जो कि लेटर फेज में करेंगे, और उसको जैसे हमारे पे स्लिप में दिखाएं कि हम लोग जो है पर जो पर्सन है आपके क्वार्टर में इतने जो है कंजप्शन हो रहा है, तो धीरे धीरे सेंसिटाइज करके हो सकता है कि हाँ ये सर वो तो सर बेस्ट है सर। सर इसमें और एक इशू है, जैसे अभी अपना ये पूरा मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी बड़ा इशू है। जैसे ऑपरेटर कहीं गया और वो टैंक फिल कर रहा है, तो वंस टैंक ओवरफ्लो होता है तो बहुत पानी वेस्टेज होता है, तो मैनुअल ऑपरेशन की वजह से भी ये बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि अभी एसटीपी में भी जो पानी ट्रीट हो रही है उसको हम लोगों को बाई फोर्स जो है इरिगेशन में डालना ही पड़ रहा है, क्योंकि सर वहाँ पे कोई स्टोरेज करने का या हार्वेस्ट करने का और अल्टरनेट यूज करने का ऑप्शन नहीं रखा हुआ है। हाँ यस सर। तो बेसिकली हमारा तक आइडियोलॉजी यही है कि इसको इससे जितने हायर मैनेजमेंट सेंसिटाइज हो, जैसे कि अभी सर इस मतलब हम लोग देने के बाद हम लोग को पास रोड मैप भी अभी आया है जो एनटीपीसी जो ऑफिसेस एंड टाउनशिप्स के लिए बढ़ाया है, तो धीरे धीरे सर ये अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो हम लोग वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग का टाइम कोलाइड किया, और इसी हिसाब से अगर सेंसिटाइज हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है सर, और अगर इसको लेकिन हम लोग फंक्शनल अप्रोच से करेंगे सर तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। अगर हम लोग इसको प्रोजेक्ट वाइज में जैसे जेडएलडी का एक प्रोजेक्ट पैकेज बना दिया गया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया टाइम बाउंडली, तो हम लोग डेफिनेटली इसको कर सकते हैं सर। नहीं सर, आई विल ऐड टू दिस सर। मैं तो ये कहूँगा यस सर, एनटीपीसी के वो कितने % लोग हैं आसपास के एरिया के कंपैरिजन में जो बेचारे वाटर वेस्ट कर रहे हैं।
असली पापी कौन है, जरा ध्यान से मुड़ के देखो, क्या एनटीपीसी है? आपको आंसर मिलेगा नहीं। तो आप तो खूब ऐसे सोना जैसे पकड़ के चल रहे हो, आजू बाजू में सब केजरीवाल है, कैसे करोगे? चलिए ठीक है। लेकिन सर I'll add to this, sir. If our township is, sir, is structure block wise, sir. In each block, if you will put and SCADA implementation will do, then immediately there is a leakage, sir. There is a water user fixed, sir. That is number of blocks, number of residents are fixed. Nearly all users are fixed, nearly family members almost. Then we can identify that there is a leakage in that block, so that we can able to attend. Immediately tag. सर वही है सर। सर अभी सर क्या हो रहा है, लीकेजेस बहुत हाई नंबर में है, तो अभी तो टीएडीए जो है ना ओवरलोड हो गया है सर। तो यस सर, तो उसका सर अभी क्या है, टाउनशिप अपग्रेडेशन का टाइम आ गया सर। हमारा एक्चुअल टाइम से थोड़ा ओल्ड हो चुका है, तो इट्स टाइम टू अपग्रेड आवर टाउनशिप। अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो व्हाई नॉट इनकॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस एंड इंडस्ट्री 4.0 क्यों नहीं ला रहे हैं? जैसे कि फ़ोन में आ जाएगा कि आपका इतना कंजप्शन हो रहा है सर। सर अभी सर पाइपलाइन को ले करने की जरूरत नहीं है सर, फिटमेंट्स है ना सर। सर ऐसा नहीं है कि सर हम अचीव नहीं किए सर, अचीव किए सर। SCADA सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है सर सोलापुर में सर, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी कर रहे हैं सर। हाँ सर, यस सर, तो वही चीज़ सर that is the sir true picture, sir. It is not possible that we are not able to achieve in other plants, sir. If that can be achieved in other plants, net zero also achieved in Ratnagiri plant, sir. बारिश नहीं होता है सर, we are bringing. हम वहाँ पे कंपल्सन में आए तो वहाँ पे if you are wasting also, sir, that amount also we are paying, sir. So I want to add one thing, sir, because as per IGBC, there are 3 mandatory requirements. First one is water management system. So metering has to be done. So we have make the roadmap where metering we can do. And second one is STP, that is already available with us. And third one is harnessing the alternate rainwater capturing. So we have to improve there. And other whatever requirements are credit-based requirements. So basically mandatory requirements has to be met, sir, because we have to follow. Otherwise we will. Yes. सर ये MOU हुआ है सर। Last. है सर। Yes, sir. Yes, available. सर IGBC नहीं सर, अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का रिकमेंडेशन वही नहीं। अभी सर रिसेंटली IGBC के साथ हमारा जो 5 सितंबर 2024 को हुआ है सर, वो इसलिए हुआ है कि हम लोग कैसे नेट जीरो टारगेट्स जो अपना वाटर हो, एनर्जी हो या फिर वेस्ट हो, इन टाउनशिप एंड ऑफिसेस। यस। और उसी बेसिस पे यूसेट के साथ एक रोड मैप भी बनाया हुआ है जो हमारे पास अवेलेबल है एनटीपीसी में, उसको भी हम लोग फॉलो किए सर। कर दिया। ये स्टार्टिंग में हाँ हो गया। कोई भी सर, अभी सर हमारा पीसी टीम जो है रिसेंटली अभी ये सर, और हम लोग सर फैली बहुत ही नया टीम है सर, और हम लोग सर सितंबर में बने हैं क्योंकि अभी प्रोजेक्ट सर वहाँ काम चालू हुआ है और हमारे साथी लोग भी अभी लैटरल से हमारे ज्वाइन किए हैं। लास्ट ईयर तो हमारा मेजर फोकस अभी रहा है कैसे नॉलेज शेयर करें उनके साथ, जो हमारा एनटीपीसी कल्चर है कैसे उनको इम्बाइब करें उनके अंदर। इसलिए हमारा मेजर वही है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना है, जेम में कैसे जेम प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, उसमें हमारा है। हाउएवर अगर हम लोग देखा जाए तो एक जो पहले के 3 जो हैं हम लोग जो है उसमें काम किया हुआ है सर अभी। सर बताएं। That is the safe passage to stage 3 area, sir. That is the new unit, the 800 is coming, and that is along with the operation 5 units are there. How to separate out the new construction area? That approach we have made with a separate entry of the materials, because in that case, without that we will not get any BOCW license. That we have segregated for the labor entry as well as this. That roadmap that is finally and that is scheme is implemented, sir. And next is that implementation of integrated gate pass system. That also we have implemented, sir. Third one is the for BOCW license, how we have separated, how we have with the convincing of the labor
officers, sir. We have that first three is implemented, and rest are our knowledge sharing, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Team Nirman, Sipat. Next, this is the second last team, Team Black Pearl, Khargon. Members are Sil Bhadra Parmar, Syed Ali. अच्छा आगे कैसे बढ़ेगा स्लाइड नेक्स्ट नीचे का ठीक हाँ, ठीक बोले हेलो 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 अच्छा रहा है So, can we start, sir? Can we start, sir? Yes. Okay, we shall start. Good evening, respected seniors, judges, and my colleagues. We are very sorry to start our presentation with a sad incident. On 24 July 2024, Surat Seth, a young pointsman, was carrying out the shunting operation. During the shunting operation, he was connecting the locomotive with the Mumbai-Bhubaneswar-Konarak Express. But unfortunately, some miscommunication happened and loco pilot moves the loco backward. The pointsman was in the vicinity of the coupling. He was crushed to death. Can this happen in NTPC? We have a clear-cut guideline that there should be two pointsmen for shunting operation so that loco pilot need not to rely on information of one pointsman. This will increase the reliability. But is this sufficient? Again, the answer is no. This incidents prove that two pointsmen are not sufficient. On 6 November 2024, a similar incident happened. This time, during shunting operation, the pointsman was decoupling the engine of Lucknow-Barauni Express, and again some miscommunication happened. The loco pilot reverses the loco while the pointsman was in the vicinity of the coupling. This fatality happened again. So, two pointsman is not the ultimate solution. So, our team, Rakshak, comprising of myself, Syed Ali, and Shil Bhat Pramasa, we brainstormed about the problem and we came out with a possible solution and we named it Rakshak. Rakshak is a system in which we use automation in the shunting operation to increase the safety. Our brief outline is that we will start with our project which we had implemented in current year, followed by the overview of our yard and shunting operation. Then we will present a SWOT analysis of shunting operation. And in the last league, we will discuss the Rakshak system. Our team was formed in 2019, and we continuously take projects to improve the process. This year only, we have commissioned the bulge wagon system in our railway yard, and these all projects, which 5 are implemented. A brief introduction of our yard. We have 13 lines, in which 2 lines are dedicated to the loading of ash rake, 3 lines are dedicated to the unloading of coal rakes. There are 3 wagon tipplers. 1 line is dedicated to the unloading of oil rake. There are 4 number of in-motion wave bridges, 2 on the main line, 2 on the loop line, to measure the weight of the incoming and outgoing rakes. Now, we have already mentioned shunting in previous slide,
What is this shunting operation? Shunting operation is basically an operation in which rake is transferred from one track to another. In this operation, the detaching and attaching of loco is also covered. Let us see what is this operation. These are 2 pointsmen. They have their CVC coupling. This is their CVC coupling between the rake and the loco. They have aligned the CVC coupling. Now they are giving instruction to the loco pilot to move the loco backward. If the coupling is aligned perfectly, then coupling is done automatically in one go. Here, it is not done in one go. Now, they will ask the loco pilot to move the loco forward. It is moved by around 10 or 20 meters as per standard procedures, and they will again realign the coupling. Generally, this coupling is made in one go, but sometimes there are frequent attempts which are required. And in this situation, the risk increases. Let us also mention that the loco driver is in the front cabin. He is visually blind with what is happening at the coupling area. He is totally relying on the walkie-talkie communication given by the pointsman. So there are chances of miscommunication. Now these pointsmen have aligned the coupling. Now they are instructing the loco pilot to reverse the loco. The speed during this reversing operation is around 5 to 6 km per hour as per SOP. Here we go. The coupling is made in the second. So, in Khargone, we carried out the SWOT analysis of the shunting operation to increase the safety. And we found out that our strength is that we adopt the best practices whichever are going in any yard. And our weakness is that we don't have bulb arrangement in our yard operation, yard. And our threat is that we had limited pool of experienced manpower in railway operations. But we seek opportunity in automation to achieve the zero accident. This is the detail of our best practices that we follow in NTPC. We use continuous buzzer system when the rake is reversing. We use announcement system in wagon tippler area, which relays the information about the shunting operation going in the yard. We use all the safety instruments like tricolor torch, tricolor lamps. We conduct regular safety pep talk and incident recalls to the safety worker. We carry out regular medical checkup of our workers as per norms of NTPC. And we also conduct the training by railway staff as well as fire staff to our workers in yard. Now, our weakness is that we don't have bulb arrangement. In bulb arrangement, what happened that in bulb arrangement, the rake which arrives at the yard, it goes around a loop and can exit. It don't need the reversing operation. But in Khargone, there's no bulb arrangement. Once a rake entered into the plant, to leave the plant, it is mandatory to commit reverse operation. So here is the risk. And our threat is that the railway is engaging its retired work personnel for their own operation. They are giving them jobs on the contract basis, according to their recent circular. So the pool of experienced manpower is shrinking for us. To discuss the opportunities, I would like to Shield, sir, please continue. Thank you, Ali. Hello. Thank you, Ali. तो सर जो हमने शॉर्ट एनालिसिस अभी जो किया है उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अपॉर्चुनिटी जो हम एक्सप्लोर कर रहे थे तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना और ऑटोमेशन। तो ह्यूमन बिहेवियर को हम ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं सेफ्टी पेप टॉक से, और जितने भी हमारे सेफ्टी रिलेटेड SOPs और प्रोटोकॉल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवा करके। तो हमने सोचा कि CNW स्टाफ जब कपलिंग जोन में जाता है तो क्या उसे डिटेक्ट किया जा सकता है? अगर उसका डिटेक्ट किया जा सके और उसे लोको पायलट को ऑडियो या विजुअल सिस्टम के द्वारा दिखा जाया जा सके तो हम
काफ़ी हद तक उसकी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। तो हमने इस सिस्टम जो हमारा सिस्टम था रक्षक, उसके लिए जो सेंसर एक्सप्लोर किए, तो हमें 2 टाइप के सेंसर के साथ हमने ट्राई किया। फर्स्ट हमने माइक्रोवेव सेंसर का यूज़ किया और उसके बाद में इंफ्रारेड सेंसर का हमने यूज़ किया। माइक्रोवेव सेंसर का बेसिकली माइक्रोवेव पल्स जनरेट करता है और जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ रिफ्लेक्ट करके उसका डिटेक्शन कर लेता है। और इंफ्रारेड सेंसर 2 टाइप के हैं, एक पैसिव इंफ्रारेड सेंसर जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंफ्रारेड जनरेट होता है उसको डिटेक्ट करता है, और एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर के अंदर हमारा एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर में एक लाइट सोर्स होता है LED, और रिसीवर साइड में फोटोडायोड से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर इस लाइन ऑफ साइट में अगर कोई पर्सन एंटर कर रहा है तो उसका डिटेक्शन, ये जो बीम बन रही है उसको ब्रेक कर उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव सेंसर के साथ कुछ इश्यूज थे, जैसे कि ये 230 वोल्ट AC सप्लाई पे काम करता है, जबकि हमारा जो लोकोमोटिव है उसमें 24 वोल्ट और 72 वोल्ट DC सप्लाई अवेलेबल रहती है। दूसरा कि डे और नाइट के लिए हमको डिफरेंस लक्स सेटिंग करनी हो रही थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये था कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का डिटेक्शन कर ले रहा था, मतलब CNW स्टाफ के साथ साथ जो कपलर है उसका भी अगर मोशन हो रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर ले रहा था। तो इसके लिए फिर हमने IR सेंसर के साथ में अपने सिस्टम को बनाने का फोकस किया। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि DC सप्लाई पे ऑपरेट होता है, तो किसी बैटरी के साथ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और लोकोमोटिव की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है DC का, उससे भी इसे एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे रक्षक सिस्टम के कंपोनेंट का ब्रीफ व्यू है। इसमें हमने अपने लोकोमोटिव पे एक ट्रांसमीटर फिक्स्ड वे में लगा के रखा हुआ है, क्योंकि खरगोन एक रेल फेड स्टेशन है, वहाँ पे डिफरेंट वेगन्स आते हैं अलग अलग रेल के साथ में। तो रिसीवर जो है वो हमारा पोर्टेबल होना चाहिए था, तो उसी को लगाने के लिए हमने, तो ये हमारा रिसीवर है, रिसीवर को लगाने के लिए हमने एक मैग्नेट टेस्ट सिस्टम बनाया हुआ है सेटअप, जो कि किसी भी वैगन पे हम अटैच और डिटैच कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी इशू जो थी इसके ट्रांसमीटर और रिसीवर के अलाइनमेंट की, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल हमने एक, जैसे मेले में छोटे लेज़र आते हैं, जैसे यही एक लेज़र है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट से हमने अलाइनमेंट करने का ट्राई किया। एक जगह ट्रांसमीटर फिक्स करने के बाद में लाइन ऑफ साइट हमने रिसीवर का फिक्स करके उसकी मार्किंग करके जो भी CNW स्टाफ है वहाँ पे हमारा रिसीवर अटैच कर सकता है। तो वंस एक लाइन ऑफ साइट बन जाने के बाद में ओके, और इस सिस्टम के साथ में हमने कैमरा भी दिया हुआ है, जो कि नाइट विजन कैमरा है, जिसे हम डे और नाइट कभी भी किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। हमारा यार्ड बहुत ही एक्सपेंड फैला हुआ है, तो वहाँ पर हमने इस कैमरे का सेटअप कुछ इस तरीके से बनाया है कि उसे हम यार्ड में कहीं भी ले जा करके उसकी फुटेज को कैप्चर कर सके और उसे कंट्रोल रूम में वायरलेसली देख भी सकें। तो इसके लिए हमने एक सिम बेस्ड वायरलेस राउटर इसमें यूज़ किया हुआ है, इसका इंटरनल सर्किटरी है, और इसमें हमने एक एक्सटर्नल बैटरी का यूज़ किया हुआ है जो कि पोर्टेबल है। तो ये सेटअप कहीं पर भी हैंड हेल्ड कहीं भी उठा करके हम यार्ड में मूवमेंट कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन के लिए कैबिन में हमने एक डिस्प्ले प्रोवाइड कराया था, और इसका जस्ट एक ग्लिम्स हम आपको शेयर करते हैं। तो जैसे ही CNW स्टाफ जब ट्रांसफर रिसीवर की लाइन ऑफ साइट में आता है, तो सिस्टम डिटेक्ट करके बजर को ऑन कर लेता है, जो कि पायलट उसको देख रहा होता है, और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है तो वो साइड में जा सकता है। लेकिन उसमें बजर बंद नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें एक लैचिंग रिले का प्रोग्राम किया हुआ है, जो कि कंटिन्यूसली बजर को ऑन ही रखता है, और जो CNW स्टाफ है खुद जा करके उस सिस्टम को रीसेट करेगा, तभी वो बजर ऑफ होगा। तो ये एक स्कीमेटिक है रक्षक हमारे सिस्टम का, जिसमें जैसे ही CNW स्टाफ जाने से जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो ब्रेक होती है, उससे हमारा एक ब्रेजर एनर्जाइज हो जाता है। इसी जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं उसको हमने एक्सटर्नल बैटरी से पावर्ड किया हुआ है। जो ट्रांसमीटर है उसको लोको की पावर सप्लाई से हमने दिया हुआ है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तब भी ये बजर ऑन ही रहेगा, अनलेस अनटिल लोकली प्रोवाइड पुश बटन को पुश करके ये सिस्टम में बजर को ऑफ नहीं करता। अगेन सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाएगा इसके साथ में, और जब सेम रिपीट प्रोसेस करेगा तो ये सिस्टम इस तरीके से काम करेगा। इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की अगर बात करें तो बहुत मिनिमल कॉस्ट के साथ में ये प्रोटोटाइप हमने तैयार किया है, जिसका 12,500 में हमने एक्सपेंडिचर था हमारा। और इसके बेनिफिट की बात बता जाए तो एक ह्यूमन लाइफ की हम सेव जो अनमोल है। इसे 100% NTPC में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे पीट हेड स्टेशन है वहाँ पे हम ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किटरी को फिक्स टाइप लगा सकते हैं, और रेलफेड के केस में सर्किटरी और जो हमारा ट्रांसमीटर है वो तो लोको में फिक्स रहेगा, और बाकी वेगन के अंदर डिफरेंट वेगन्स में हम ट्रांसमीटर जो रिसीवर है उसे अटैच डिटैच कर सकते हैं। फर्दर हमारा जो रोड मैप है, हम चाह रहे हैं कि इस सिस्टम का यूटिलाइजेशन हम
शंटिंग प्रोसेस के अलावा रैक स्प्लिटिंग में भी करें, क्योंकि शंटिंग प्रोसेस के अंदर लोकोमोटिव और वैगन के बीच जस्ट नियर बाय ही होता है, लेकिन शंटिंग प्रोसेस लगभग 200 से 300 मीटर दूर होती है। सॉरी, रैक स्प्लिटिंग 200 से 300 मीटर दूर होती है, तो उसका बजर विजुलाइजेशन लोको कैबिन में पहुंचाने के लिए हमको वायरलेस सेटअप करने की ज़रूरत है, जो जिसके ऊपर हम थोड़ा अभी देख रहे हैं। और इसका हम एकेडमिक इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ में कोलैबोरेशन करके इसे और इम्प्रोवाइज वर्जन देना चाहते हैं, और फाइनली हम वेंडर के साथ मिलकर के चाह रहे हैं कि इसका एक कमर्शियल प्रोडक्ट भी हम रिलीज़ करें। थैंक यू। सर 100% रिलायबल इसका आईपी। यस सर, ये सर इसका जो रिलायबिलिटी हम कैसे उसको मेजर करते हैं, मतलब कि उसकी सर एवरी सिस्टम हैज अ चांसेस ऑफ फेलियर, बट यहाँ पे हम ऑडियो वीडियो दोनों देते हैं। मोस्ट ऑडियो अगर फेल होगा सर उस केस में हम फेल सेफ सर्किटरी है हमारी, अगर मान लीजिए कोई मिसअलाइनमेंट भी होता है तो उस केस में कंटिन्यूसली अलार्म बजेगा, पावर ऑफ होने के बाद में भी वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। उस केस में भी हमारा सिस्टम एटलीस्ट फेल सेफ है। Yes, sir. Manpower is already engaged. Sir, this is additional system. There is one supervisor along with two C&W staff. Both will work in tandem. Yes, this is the added security, sir. सर हर जगह काम आएगा, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं सर। अगर जहाँ पे कपलिंग हो रहा है सर, शंटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं सर, इसमें इट इज माउंटेड ऑन वैगन टिपलर बेसिस, सॉरी वैगन्स पे माउंट करेंगे, तो इसे हम कभी यूज कर सकते हैं। एक पार्ट हमने लोको पे डाला है सर, एक वैगन पे हम जो भी वैगन आएगी इसको हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट पोर्टेबल है ये सर। जी सर, राइट जी जी सर। सर ये एक्चुअली जो इंसिडेंट हुआ था 2 नवंबर 2024 में हुआ था, तभी हमको ये आइडिया स्टक हुआ था कि हमको इसको कैसे करना है, तो हम यस सर, यस सर। सर फेल तो नहीं हुआ है, बट वी कैन नॉट से कि कोई 100% सेफ तो कुछ हो नहीं सकता, बस ये कि हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो हमने इसमें इसीलिए ऑडियो वीडियो दोनों शामिल किया हुआ है। इन केस अगर इसमें फेलियर होता है, इसमें कंटिन्यूस वो बजर इसका कंटिन्यूस इसका बजर रिंग करता है, तो अगर कहीं सप्लाई का फेलियर सर 1-2 बार आया तो वो उसको एड्रेस किया सर। यस सर, सर ट्रेडिशनल सिस्टम इज वर्किंग, दिस इज एडिशनल। साल भर में कितने प्रेजेंटेशन? यस सर। कैसे होगा? अभी ऑफ हो गया, हाँ नीचे आई सर। बोल चुका सर ऑल आर इम्प्लीमेंटेड सर। सर ये केमिकल हमारा जो CHP डिपार्टमेंट है उसका डेली प्लानिंग मीटिंग होता है, उसमें हम करने के बाद में उसको प्रेजेंट करते हैं सर, डेली प्लानिंग मीटिंग में। हाँ, मतलब हमारा मंथली एक टारगेट रहता है कि हम जो भी सोचते हैं कि इसको हमको बनाना है। सर हायर में सर डिपेंडिंग सर, जैसे हमारा अगर ये आया सर, जैसे OHE सिस्टम एंड सेफ्टी आया सर, तो इसमें हमने OHE की थोड़ी सेफ्टी इंप्रूव करी सर, जिसमें हमारा स्टेक होल्डर ओनली CHP और हम लोग ही हैं सर। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, रेलवे इन्वॉल्व था, इसलिए हमको इसमें नेगोशिएशन ज़्यादा लगे, तो इसको हमने CHP की DPM में कर दिया। अब सर जैसे और RCR कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू हुआ सर, इसमें सर पैन NTPC कमेटी बैठी थी सर, उसके अंदर में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने भी स्टैंडर्ड बना रखा था, तो मैक्सिमम उसके अभी उसके पॉइंट्स गए सर, वो अप्रूव हुआ है सर उसका। सर रेल कम रोड मोड ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट सर, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे सर प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो उसको इम्प्रूव किया गया। हायर लेवल पर भी हुआ है, बट प्रेजेंटेशन हम DPM में देते हैं। बाकी जैसे RCR कॉन्ट्रैक्ट का बात जो चल रही है, उसमें एक रिकमेंडेशन भी निकाले थे अभी CCFM ने हमारे इनपुट के बेस पे। वो तो सर ED लेवल पे अप्रूव हुआ है सर, वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है सर। ये लोको और वहीं तक सीमित है या कंट्रोल रूम में भी जाता है? सर जो अलार्म बजर बजेगा
ये केबिन में अवेलेबल है सर, लोको केबिन में अवेलेबल है। हम चाह रहे हैं कि इसको कंट्रोल रूम तक ले जाएं, तो उसके लिए हम फर्दर थोड़ा हमको रिसोर्सेज भी लगेंगे, क्योंकि अभी इस फोरम में हमें लोरा कम्युनिकेशन के बारे में पता चला है, तो हम चाहते हैं कि उसको हम इस सिस्टम के साथ भी यूटिलाइज करें। सर वीडियो अवेलेबल है, वीडियो इज अवेलेबल इवन ऑन मोबाइल सर। हाँ सर, हर जगह अवेलेबल है, जहाँ पे हम चाहें वो सिस्टम में दे सकते हैं। हम ज़्यादा उसको देते नहीं हैं, लेकिन अपना हमारे सिस्टम में है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, team Black Pearl Khargon. Our next team, and this is the last team, Team Delta Korba. Team members are Anand Pandey, Nitesh Khandelwal. Team Delta Korba. ये नेक्स्ट जाने के लिए नीचे वाला, ये नीचे जाने के लिए मतलब नेक्स्ट, ठीक है, ये ठीक है, देख लेते हैं। So can we start, sir? Okay, we shall start. A very good evening to all of you. Our professional circle Team Delta was formed in January 2021 with the executive of MTP and EMD. We have received first prize from 21 to 23 and second prize in 24 at station level PC convention. We have presented 12 topics in last 2024 year and related to technical and material management. So, Government of India aiming 5 trillion economy in future. Power of increase in a way in such a huge power required for the India. Ministry of Power also emphasize to running and maintaining old fleet of generators. So all power utility have to maintain their asset at all cost. So today our theme of presentation is AI driven decision making for mitigating challenges in maintaining old fleet of generator for sustainable operation, which will be presented by myself, Nitesh Khandelwal and Anand Pandey. The flow of presentation like this: first we will introduce the maintenance philosophy, one of our capital and critical equipment of power plant, that is turbo generator. Then we will explain the kind and type of its failure and generator testing. Then we will discuss the real-time case study and commercial implication. And finally, we will share our proactive approach through data analysis along with learning and conclusion. So, the condition of capital equipment is prime importance for successful operation of the power system. Turbo generator is one of the costliest equipment of power plant. The cost of the 200 megawatt generator is approx 50 crore. So its failure has huge implication over the utility. Smart maintenance is necessary for reliable and sustainable operation for units. So correct technical decision play the importance role for continual growth in the profit. So for this, we have to review our conventional approach to take this decision to reduce the financial impact. During operation of capital equipment, it may expose the condition which are adversely affected its reliability and useful life. Thermal cycle also take the addition risk in the mechanical integrity of the stator and rotor. Data analysis of real-time operational parameters may provide the schedule overhauling and preventive maintenance, which may reduce the impact of catastrophic failure. So properly, and however, the old generator which are NTPC is running, the old fleet of generator which are going to their 30 plus year of the service, surprises always spring up. The next part will be explained, Mr. Anand. Thank you, Ritesh. Sir, NTPC has got very good practice, O&M practices.
we don't maintain machine, we don't run machine like any other. We carry out many diagnostic tests that tells us about the integrity and sustainability of the machine, that now it will not fail for next 4 years till another overhauling. And these tests actually assess the integrity of core, stator, then insulation system of rotor and stator. These tests can be broadly classified into two categories: electrical test and mechanical test. Under electrical test for stator, we carried out electromagnetic core imperfection detection test, that is LCID test, which assess the health of core. Then 10 delta test for winding insulation. Then partial discharge test. Then IR, PI polarization index test, again for insulation of the winding. Then polarization, depolarization, current analysis test. This is also for insulation testing of high voltage material. And then for rotor, we carried out recurrent surge ischograph test for interturn fault, and then we do impedance test, resistance test of rotor winding. Under mechanical category, we carry out so many tests like wedge compression test. It actually helps us to tell that what is the margin for expansion and contraction of the copper conductors. Then boroscopic inspection of ducts through which the cooling hydrogen gas flows through the rotor. Then natural frequency test. This particular test is very much required to assess the integrity of winding over and core system. If there is any looseness or there is any resonance peak, then there is a possibility during running condition that because of the vibration the conductors may fail. So this is one of the very important tests. Then we also carry out ultrasonic test and dye penetration test for various weld joint. For rotor, we carry out boroscopic test and wedge knock test, which of the wedges of which are there at the surface of the rotor body. Among these, NFT is one of the most important tests. We'll discuss in detail about this NFT. As we talk about the diagnostic test, the most important thing during any overhauling is the first inspection, because during first inspection, when we thread out the rotor from the stator, there are subtle indications that indicate that whether the machine is going to run successfully in near future, or there are indications that something is going to happen which are in very nascent stage, and incipiently there is something going to happen which may lead to failure of the machine. So before finalizing the scope of work, we must also carry out the proper data analysis of running parameters and historical running data of the machine and maintenance record, so that we can have sufficient time to call for OEM if during any surprises we see that any deviation is occurring. And moreover, we may get sufficient time to box up the machine well within the duration overhauling time, and there should not be any cost or time overrun. So overall material management is very much important for maintaining old fleet of generators. So with this, actually, if we divide the failure modes of machine, both stator and rotor can be divided under two categories. The failures may be electrical or mechanical both for stator and rotor, and these mechanical related failure are more prone during current regime of machine, because there is flexible operation and machine is seeing load variations. These load variations are impacting very much the insulation of the machine, and we'll see in real-time case studies how it is impacting. And trend analysis of operational parameters, I request my young engineers to go for trend analysis of running parameters, because that is one thing that will going to help you in deciding and forecasting what actually may happen when you open the machine. There are various types of stresses that lead to the failure of the machine. That can be categorized under thermal category, electrical category, mechanical and environmental. Under thermal category, actually, these imposed these are cyclic in nature, and because of the temperature variation, many insulation problems may arise. Because of the application of voltage, again insulation gets stressed up like you are stretching a cloth, and it may tear up. For mechanical, because of the rotating magnetic field, the stator core compresses and expands, and complete structure feels that vibrational oscillatory forces, and that ultimately lead to failure. And for environmental, the kind of gas purity we are maintaining, the water chemistry, because of the aging, the oxidation of insulation system, all these lead to the ultimately aging of the machine, and machine may fail. Because we are running the machine with 40 more years of operating condition, now since I have got 20 years of experience, I am seeing more cases which are there due to the cyclic operation of the machine. Now Nitesh will continue with one particular case study, and we will discuss them in detail. Nitesh. During the overhauling of 1/200 megawatt generator, it was observed that the significant deposit in the winding overhang support system found the black soot. This black soot are also visible at the turbine end as well as the exciter ends. And it was also observed that the putty which is filled between the adjacent bar has got the dewounded.
and cracks were also seen in the various locations. So these all were indicating our winding overing support system has got compromised. If we running, if during this condition, if we run the generator, it may lead to failed because our overhang winding support system experienced the significant periodical forces due to the rotating magnetic field at the air gap between the stator and rotor. This is the one case of the failed generator due to the similar type of the problem and weakened winding support system. In this condition, either we have to replacement of the rewinding of the complete stator or replacement of the complete stator, subject to damage. If we see the commercial implication, then the cost of the reapply the putty in the complete adjacent between the windings, the cost is it is 30 lakhs rupees, including the material and service. But rewinding of the complete stators, the cost will be approx 3,000 lakhs. You can say 30 crores. And this is not much. With addition, the unit may be out up to 50 days for the for shutdown. So in this situation, we have decided one thing. So, we remove all the black suits and debonded putty and cracks and reapply the fresh putty to get the desired strength and compressibility. And in the overhauling, because this was the surprise for us during the overhauling after rotor thread out. So we have only 5 days merging during the overhauling to complete the job. For this, we have to prepare the putty mixtures of the various compound like resin, hardeners, talcum powder, kaolin powder, and at a definite ratio to get the desired strength. And these all compounds are the very light and the airborne. So safety concern is also there. So we have, as an innovative approach, we take the putty mixture rod and attach in the magnetic drill machine and prepare the mixture as the uniformly apply to the all slots and get the desired strengths what we required. And another innovative approach, we put some fixtures of pre-coated the resin between the adjacent bar and for getting the uniform shape of the putty and material required to fill between the adjacent bar. And this is the after dry out of the putty, this is the image of the, you can see easily that this is the uniform shape we get. So this is the final condition of the overhang winding support system before rotor thread-in. Next part, NFT, RCA and desired solution in this situation will explain Anand. Thank you, Nitesh. Now, before moving ahead, let us understand what NFT is actually. NFT is one tool that help us to identify the structural strength of any system. For generator, actually, it is a 2-pole machine, and in India, our running frequency is 50 Hz. The natural resonance frequency of our system is 100 Hz. So, in NFT, actually, if we have a resonance peak in the range of 95 Hz to 105 Hz during dynamic condition, then there is a problem that the winding over in copper conductor that are coming through the slot exit part, they may feel certain cantilever effect, may vibrate, and hollow conductors may crack, and cooling water may come out, and ultimately machine will fail on insulation stator earth fault. So we try to avoid, there should not be any resonance peak in this is the resonance peak, it should not be there in the range of 95 to 105 Hz. So this particular thing, we carry out the test, NFT test, by providing external excitation, and we capture the Fourier analysis, and there should not be any resonant peak in this condition. But in our case, if there is any such condition is there, we either add the mass to reduce the natural frequency, or we increase the stiffness to increase the natural frequency. But through the data analysis, we do the data analysis on NFT of previous year overhauling records also, and we identified that there is a particular slot which has a resonance frequency of 82.5 Hz. Even though it is not coming in the band that is considered as a risky band, but this particular condition in a static condition, during dynamic condition, it may shift to that zone. So considering this, we opted for repair of the putty, and ultimately after repair, this particular band got shifted to 192 Hz, which is very much safe part. Initially it was 85, but after it was 85 Hz, but after repair it changed to 192 Hz, as you can see over here. So this was the advantage of the carrying out the repair work. But why actually it happened? This was something quite
amazing for us also, because during previous overhauling nothing was there any observation of this nature. So what we observed that there is cyclic operation of the machine, and when we carry out the RCA, root cause analysis, we observed that there is a too much cyclic operation in last 3-4 years, and in other machines also. I recently got a chance to visit Singrauli plant also. There also I observed the similar phenomena, that during this regime, when the machine is running at 200 megawatt, the slot temperature is approximately 50 degrees centigrade, where the cooling water flow is constant at 39.5 degrees centigrade. But when the load is reduced to 150 megawatt, the slot temperature is coming 47, which means copper is getting cooled. So, and whereas the cooling water flow is 39.5 degrees, means the cooling system is constant, but the copper is expanding and contracting. But the same regime, same nature is not being followed by the adjacent insulation putty. So there is a possibility of debonding. So with this condition, we actually put into a AI software, and we have given the prompt which with all these conditions, and the software itself gave us a particular condition that in your system the cooling is constant, whereas the load is varying with temperature, which means that there is a expansion and contraction in the copper. This particular condition is more frequent in recent regime, so cooling water flow part has to be taken care of, so that there should not be a relative motion between copper conductors and insulation system. And this particular condition, since insulation is getting stressed because of thermal cycling, and ultimately it may lead to mechanical or thermal fatigue, so there is a possibility of debonding or cracking of the putty. You have noticed in the picture that putty was not cracking in between, it was cracking from the adjacent slot bar. There was crack at the adjacent boundaries, so it was debonding. Overall, what is the proposed solution? The proposed solution is very simple. I don't know why it was not implemented earlier. In all the machines where we don't have such type of system and which is seeing thermal cycling, we should go for temperature control valves. And it can be implemented in all the machines of 200 megawatt at NTPC, which are seeing nowadays thermal cycling, and we can save machines from insulation failure, not only at slot exit portion, but at the between slot where insulation liners are there. There is a possibility of machine, because ultimately if this condition prevail, we will see more failures of stator in near future. So this particular case is also discussed with our corporate office, and they have asked to initiate a note sheet also. And overall, what we can see that internal inspection is very much important. We should take care of data management, historical data driven, and decision should be taken before making scope of work or planning. And ultimately, any subtle observation, and initial inspection is very much important. Any subtle observation should maybe indicating to a potential future failure, and we should consider those things. We should discuss it with experts, and ultimately AI is going to help us like anything in near future. We should start putting our data-driven decision should be taken, so that we can have a better overhauling scope, and our machine will run more trouble-free. Thank you. Thank you, sir. मैं समझ नहीं पाया AI ने यहाँ क्या किया है? सर AI में हमने अपना प्रॉम्प्ट दिया, जो मेरी रनिंग कंडीशंस थी कि मेरा हाँ उसको मैंने इनपुट दिया, और वो जो मैंने 3 स्लाइड दिखाई थी लास्ट में, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। वो AI ने ऑटोमेटिकली मेरे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही उसने मुझे फीडबैक दिया है, इनपुट से उसने आउटपुट दिया है कि ये कौन सा AI है? सर अभी तो बहुत सारे हैं, आप डीप सीक को यूज करते हैं। ये मैंने क्लाउड AI CLAUD मतलब है सेम इनपुट आप चैट जीपीटी को देखो तो वो भी दे देगा। सर कोई भी दे सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम डिसीजन ले रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम सुनो आप। When you are writing in the title AI driven decision, it appears to be a very big thing, rather than you are asking a question to chatbot and getting the answer. Sir, at NTPC we don't have a policy of using AI. We don't have any. But sir, you have chosen to give the title like that. Sir, this is which is actually misleading us. Okay, sir. But what I interpret here is like this: my decision, what RCA I have done, I have cross-verified. I have used AI as a support tool. What I am thinking, the system which is interacting with so many complex database, and it is also seeing the same thing, so that I have arrived at solution with more confidence of using temperature control valve. That's what I mean with my. सर उसमें क्या होगा कि मेरा जब लोड कम होगा तो कॉपर का जो वाइंडिंग टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वजह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन नहीं होगा, तो जो पुट्टी इंसुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, तो वो ब्रेकिंग नहीं होगी उसमें। नहीं सर, वो केवल 500 की मशीन में 200 की मशीन नहीं लगा हुआ। नहीं वो क्या है सर, वाइंडिंग लोड के हिसाब से जो हमारा
वाइंडिंग का टेम्परेचर है उसके हिसाब से जो कूलिंग वाटर फ्लो है उसको कम ज़्यादा कर देगा। तो हमारा जो जैसे लोड कम होगा तो हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे जो 200 मेगावाट में 50 डिग्री दिखाया बाद में 47 हो गया, वो 47 नहीं रहेगा, वो 50 रहेगा, क्योंकि वो कूलिंग वाटर का फ्लो को कम कर देगा। आएगा पहली चीज। दूसरा सर, ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, मैंने इस बार भी ओएनएम कॉन्फ्रेंस में जो पेपर प्रोड्यूस किया है उसमें मैंने और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके सिस्टम में डेटा एक्सेल फाइल को पूरा लोड किया है और उससे हमने कुछ प्रिडिक्टिव सपोर्ट लिया है कि कब मेरा उस पे पेपर है क्यूप्रो प्लस क्लीनिंग पे, कि अगर मेरा वाइंडिंग का फ्लो कम होता जा रहा है और मेरा डीपी डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो टाइम जोन कब आएगा जब मेरा कि हम लिमिटिंग वैल्यूज में पहुंच जाएंगे और कब हमको पहले करेक्टिव समझ लेना। AI इज नॉट स्मार्ट, टू स्मार्ट इनफ टू टेल अस टू सपोर्ट अस एटलीस्ट। ठीक है, डिसीजन हम लेंगे बट हम अपने डिसीजन के लिए सपोर्ट वहां से निकाल सकते हैं। सर AI के सोल्यूशन को मैंने सपोर्ट के लिए यूज किया है। सर वो मैथमेटिकल मॉडल है। सर 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 आप अपने जनरेटर में बहुत सारे सेंसर डाटा कलेक्शन के लिए लगाते हैं और ये पूरा डाटा कहीं कलेक्ट होता है, इसकी एनालिसिस करके आपका AI सिस्टम आपको रेकमेंड करता है, तो आपने AI लगाया। ये तो मेरे को एक पैराग्राफ लिखना है तो भी मैं AI से पूछ रहा हूँ, इसको जरा बताना कैसे लिखूं। नो, दिस इज नॉट फेयर। सर एट एनटीपीसी AI का मुकुट पहनना इज नॉट फेयर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका काम अच्छा है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम एक ऑर्थोडॉक्स कंपनी जहाँ पे हम 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमको अगर आगे जाना है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AI पे हमें अब धीरे धीरे चेंज होना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन अभी हम लोग वो माइंडसेट, वो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, वो चेंज इन्वायरमेंट के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। जो पुराने 40-25 साल पुराने इंजीनियर्स हैं वो अभी भी ओरिजिनल डेटाबेस पे ही रिलाई कर रहे हैं। सर प्रोफेशनली अभी हम शायद नहीं यूज़ कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई मीन। हाँ सर, बिल्कुल सर। और दो एलेक्सा को आपस में भिड़ा दो, देखो क्या होता है। एग्रीड सर, थैंक यू सर। Thank you, Team Delta. So this way we have completed all the 15 presentations. Thank you all the teams. Now we shall break for evaluation and ranking for 30 minutes.
Good evening and welcome back to the last but interesting session. RD sir aa raha hai, so let us wait for 5 minutes. RD will be coming, then we'll be starting our valedictory session. Let's welcome RED and chairman of this convention. Good evening, sirs. Now we have come to the valedictory session of this convention. I will request Chairman RPCC, Sri Pradita Kumar Mishra sir, our esteemed judges, GM RLI Sipat, to come over the dais.
सर अमित सर तो गए थे Total 15 presentations were there, and there were elaborate deliberations by the team members. There were questions and answers by the judges, and after all these deliberations, final data has come that we will come to just in few minutes. Before that, as a token of memory, I will request APDTS BE Sri Ashok Kumar Misra sir to present our esteemed judges Sri A.K. Sharma sir with a book and memento. I will request Chairman RPCC to please hand over this memento and book to our judge A.K. Sharma sir. I will request Chairman sir to present a book to our judge Bedkar sir. Book and memento to Bedkar sir. I request Chairman sir to present a book to our judge A.K. Tiwari sir. Memento and book. I will request Chairman sir to present a book to GM RLI, CPAS. Now I will request our judge, Sri A.K. Tiwari sir, for a brief address to the sharing his experience regarding these presentations of the convention. Respected dignitaries on the stage. मैं सिर्फ 2 सेंटेंस बोलने के लिए आपके सामने स्वीकार किया। पहला कि आप लोग जो एक इंजीनियर की हैसियत से एनटीपीसी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और जब मैंने इवैल्यूएशन के रूप में दिए हुए टेबल में मार्क्स भरना शुरू किया तो हर आदमी दूसरे आदमी के लगभग बराबर या उससे थोड़ा बेटर ही दिखता था। जैसे पहले वाले में अपने को अंदाज मिलता है, दूसरे वाले में चीज़ें क्लियर होने लगती है। सब बिल्कुल टफ फाइट में थे। तो मैं आप लोगों के से बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और मुझे जिन लोगों ने जज की हैसियत से बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Now I will request Chairman sir. Sir,
Before declaration of result, I will request our chairman, sir, for brief address of the gathering. Good evening to all of you. How was the day? It was very hectic, energetic, or boring? क्या था? Very good. So now everybody must be relaxed because you must have been preparing for a few days or a week. After the presentation, your presentation is over, you must be feeling relaxed. But now again a bit of tense moment before the result is announced. But as I told in the morning, the winning is not the only thing. Whatever you learn from here, that is the takeaway for all the teams. As a formality, some 1, 2, 3, 4, 5, 6 has to be there. So, and judges, it must be very difficult for as they were expressing, they were very close. So, whatever decision comes, you have to take it that way only. That is my request. And after the distribution and prize is over and the photography, whatever is taken, then all of you, I hope all of you are staying at Raipur, so must be keen to go back. But if you have nothing to do at the hotel, if you go now, then you can spend a good 1 hour for playing in the sporting facility we have down. So you can spend 1 hour and whatever stress you have developed throughout the day, you can set it here before going to the hotel. The option is with you. And my best wishes to all the teams before the result is announced. And my heartfelt thanks to the judges for sitting throughout the day and listening to 15 presentation multiplied by 20 minutes is not an easy job. So really thanks to all of you. Thank you and best wishes to all of you. Thank you, sir. Now we have come to the declaration of results. Sir, in this, 2 teams will participate in national level convention, PC convention. We will declare result for top 3 out of these 15 teams. So starting with second runner-up. नहीं I will request जी sir. So I will request Chairman sir to declare second runner-up. Hello. किसी एक टीम का प्रेशर रिलीव हो जाएगा इसके बाद. समर्थ गढ़वारा. Team members were Ravi Rituraj, Sanket Basu, Biju Singh, Abhinav Agrawal. Their topic was industrial communication and intelligent tracking. Now, first runner-up, I will request RD sir. क्या
सब एस से ही स्टार्ट है क्या? वो भी एस से था, ये भी एस से है। एक ही टीम है क्या इसमें, और क्या और भी टीम थे? संकल्प खरगोन। Team members are Priyabrat Mandal, Manish Kumar Vaske, Vishwanath Devnath. Their topic was transportation of dry fly ash with BLC wagon. Now I will request chairman to declare the winner of this convention. किस टीम के लिए यूनानिमस है बता दो। देखो अपना खुद का तो ठीक है बोल सकते हैं आप, वो नहीं है। अपना टीम छोड़ के अगर किसी को फर्स्ट देना है तो कौन होगा आप लोग बताओ। अपना टीम छोड़ के, अपना सेशन छोड़ के अगर किसी को देना है तो किसको देना है? कोई दूसरे के नाम से थोड़ा मैग्नेनिमस हो जाओ। दूसरे किसी को रेट नहीं कर रहा है कोई। सर के कहने का मतलब है आप अगर जज होते तो किसको देते? नहीं, अपने स्टेशन को आपको नहीं करना है रेट। हो सकता है वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगर किसी को देना होता आपके नीचे तो किसको देते ये बताओ। चलो एक एक से पूछता हूँ, ये कौन सा टीम है? गाटर वाला खरगोन नहीं, आप हिसाब से कौन होना चाहिए फर्स्ट? कौन सा प्रोजेक्ट होना चाहिए? और कौन है? गाटर वाला बताओ कि नहीं कर रहा है काम। कौन होना चाहिए? ओमेगा कहाँ का है वो? और कोरबा बताओ। लारा होना चाहिए। चलो लारा बताओ। लारा बताओ किसका होना चाहिए? सीपत होना चाहिए। सीपत बताओ। घाटा एक हो गया तो जनरली दो टीम नहीं होता, तो सब डिवाइडेड है। सबने एक एक नाम बताया, कोई दो नाम किसी ने नहीं बताया। टेक्नोइड सिपत। Technoid Sipat. Team members are Vishal Wankhede, Mohit Kumar, L.K. Gupta, Aman Bansal. The topic was Advanced Centralized Electronic Lab, a hub of excellence. Now, for vote of thanks. Sir. Okay, sir. I will request DGM TSB Sri Amit sir for vote of thanks. On behalf of WR2HQ, it is my honor and privilege to propose the vote of thanks on the memorable occasion of 23rd RPCC of WR2 region.
First and foremost, I express my deepest gratitude to our Regional Executive Director and the Chairman of the RPCC, Shri Pradeepta Kumar Mishra sir, under whose guidance and leadership we have successfully hosted the 23rd RPCC of the region. I am immensely thankful to Shri Alok Kumar Tripathi sir, GMRLI Sipat, for taking out time from their busy schedule to grace this occasion. I would like to thank to the jury members of the event, Shri A.K. Sharma sir, ex-Executive Director, NTPC Limited, Shri Srinivas Bedekar sir, ex-GM, WR2HQ, Dr. Anil Kumar Tiwari sir, Professor, NIT Raipur, for sparing their valuable time to provide the unbiased judgment, insightful feedbacks, and interactive discussions that enriched the event. Thank you, all the participating team and their team leaders, for joining us in this event. My sincere thanks to Shri Ashok Kumar Mishra sir, HOD Technical Services, for guiding us on each step and managing the whole convention to ensure its seamless execution. I would also like to thank all my senior members and colleagues from Infra and IT department, and especially Rajkumar, for the dedicated efforts in organizing this event. I sincerely appreciate the HR team for their outstanding arrangements and unwavering support. Last but not the least, a customary thank you to the backbone of all NTPC functions. Yes, it is ICH. Thank you to all ICH employees for their tireless service. Thank you everyone once again. Hope you enjoyed the brainstorming session during the presentations. Thank you everyone. Sir, just a group photograph, sir, with these trophies. Yes, sir. एक मिनट winning teams, please, winning teams, just stay for another 5 minutes. There is certificates. रखवा दीजिए.